हमारे बाहर से इसमें गेस्ट आए, उनका विशेष तौर से सराफ साहब का, हमारे डायरेक्टर नोटो डॉक्टर सुनीत जी का, एम्स से हमारे ट्रॉमा सेंटर से बुलाए, हमारे बाहर से अन्य स्टेट से, तो महाराष्ट्र से भी आए हमारे जयश्री, हमारे चाइनीज आए, उन लोगों का मैं वेलकम करता हूँ। साथ ही हमारे उपस्थित यहाँ माननीय केसीए साहब, सराफ साहब, हमारे एमडी साहब, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी या हेल्थ के सीनियर ऑफिशियल्स उसके फ्यूनरल में जाएंगे। एंड इसके कारण जनवरी मास महीने में तमिलनाडु में 29 डोनेशन हुए। हम सबको इस रूम में जो है, अगर हमको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो हम सबको इस रूम में जो है हमें अपने अंगों का कम से कम एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम अंगदान करेंगे। मुझे एक कबीर का दोहा याद आता है, ही सेज कि माटी कहे कुम्हार को तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। So we'll all come from dust and we all will go back to dust. So we shouldn't be so possessive about our organs. तो हमें सबको अगर इस अभियान को आगे ले जाना है तो we should think about organ donation and we should pledge for organs. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अंगदान के बारे में मन की बात में 4 बार चर्चा की है।
और जो 99th मन की बात थी उसमें उन्होंने 17 मिनट अंगदान के बारे में कहा और ऑर्गन डोनर फैमिलीज के साथ भी बात की। तो अब ये अभियान जो है हिंदुस्तान में एक नया मोड़ ले लिया है। अंगदान के क्षेत्र में राजस्थान ने भी बहुत उत्तम कार्य किया है। आप पहले स्टेट हैं जिन्होंने 2018 में ड्राइविंग लाइसेंस पे अंगदान की प्रतिज्ञा को सबसे पहले आपने अडॉप्ट किया। और यहां तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 4 लाख लोग हैं राजस्थान में जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस पे अपने अंगदान की इच्छा को प्रकट किया है। उन 4 लाख में भावना जी और मैं भी हूं। आपने राजस्थान में आप पहले राज्य हैं जिसने एक अंगदाता के लिए स्मारक का उद्घाटन किया जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने है। देश में कहीं नहीं है। इसके पहले आप सुन रहे थे कुछ आंकड़े, कॉर्नियल डोनेशन में भी आप काफी आगे हैं देश में। करीब 600 से 800 कॉर्नियल डोनेशंस भी होते हैं। यहाँ पे 7 लाख लोग ब्लड डोनेशन भी करते हैं हर साल। तो मैं ये आंकड़े इसलिए गिना रहा हूं कि जो लोगों में जो भावना है अंगदान की, क्योंकि नेत्रदान, ब्लड डोनेशन सब एक तरह की दान ही है, तो लोगों में भावना है राजस्थान में कि हम अंगदान करें। यहां तक ब्रेन डेथ के बाद अंगदान का सवाल आता है, उसमें हमको कार्य कुछ और करना है। अभी ब्रेन डेथ के बाद ऑर्गन डोनेशन खाली जयपुर में हो रहे हैं। हमको ये कोशिश करनी है कि हम इसको और आगे ले जाएं और सबसे इजी वे यही होगा कि हमारे राजस्थान में 35 मेडिकल कॉलेज है, 24 गवर्नमेंट की है, एक एम्स है, एक ईएसआई की है और 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है। अगर हम इन सब कॉलेजेस में एटलीस्ट ऑर्गन रिट्रीवल चालू कर दें और उसके बाद ट्रांसप्लांट चालू कर दें और इन कॉलेजेस में अगर एक अंगदान भी होता है हर महीने, तो साल में करीब आपके इन्हीं मेडिकल कॉलेजेस से आपको 400 से 500 अंग मिल जाएंगे, ऑर्गन डोनर्स मिल जाएंगे। हमने आपके हेल्थ डिपार्टमेंट मैडम सुब्रा सिंह और धोलप्रिया जी और रश्मि के मदद से एक रोड मैप तैयार किया है कि हम इस अभियान को और आगे कैसे ले जा सकते हैं। अगर हो सके तो मैं 5 मिनट और दूंगा और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में देना चाहूंगा आप लोगों को। Can I just देखता हूँ शायद इसमें नहीं है। मैंने वो डिस्क दी थी ना, पेन ड्राइव या रोड मैप। एक मिनट बस, थैंक यू। राजस्थान मेरी भी पूर्वजों की भूमि है, तो राजस्थान से मेरे को भी बहुत ज्यादा लगाव है। इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में मैडम सुब्रा जी, धोलपुरिया जी और रश्मि जी का बहुत सहारा रहा। यह हमारा फाउंडेशन है, मोहन फाउंडेशन, जो हमने 1997 में चालू किया था। आज 24 साल हो गए हैं और हम काफी काम करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस, ट्रेनिंग, और हम गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं। मूड क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, हमने जो चालू किया उसके बाद सबसे पहले तमिलनाडु में हमने चालू किया और यहाँ भी हम हैं अभी। आंध्र प्रदेश में फिर चालू किया 2002 में, फिर राजस्थान में 2013 में, केरला में, मणिपुर में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, इन सब प्रांतों में या तो हमने अंगदान को चालू किया या अंगदान की मात्राओं को बढ़ाया है एज ए फाउंडेशन।
ये आपका अंगदान स्मारक है जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने है। यह कुछ बिल्डिंग्स हैं जो ऑर्गन डोनेशन डे पे हम उसको हरा कर देते हैं, क्योंकि अंगदान का रंग हरा है। ये राजस्थान की कुछ बिल्डिंग्स है जिसको हम करते हैं। यह भी देश में पहला ही है कि एक डोनर के नाम पे एक जो स्ट्रीट है, रोड को नाम दिया गया दीक्षांत प्राप्त। हम इंटेंसिव केयर डॉक्टरों की ट्रेनिंग करते हैं, सर्जन्स की ट्रेनिंग करते हैं, वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग करते हैं, 12 ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं जो देश के लोग ही नहीं पर विदेश के लोग भी लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट वेरी लो। कोऑर्डिनेटर्स की ट्रेनिंग करते हैं, 3,500 से ऊपर कोऑर्डिनेटर्स की ट्रेनिंग की है। 70% जो डोनेशन होते हैं इस देश में, उसमें हमारे कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व रहते हैं। वर्कशॉप्स करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। करीब हम 12,000 कॉल लेते हैं हर साल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पे, एंड उसके थ्रू भी डोनेशन करते हैं हम लोग। ये सब अवेयरनेस की एक्टिविटीज है। तो एक सर्वे किया हमने राजस्थान के लिए, उसको कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, कैसे स्ट्रेंथन करें। 25 गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस हैं, जिसमें एम्स भी है और ईएसआई भी है, ये कॉलेजेस के नाम हैं। और हमने एक सर्वे फॉर्म तैयार किया जिसमें हमने करीब 50 फील्ड उसमें हमने 50 फील्ड के अंदर हमने उसमें इंफॉर्मेशन मांगी कि आपके पास क्या फैसिलिटी है, कितने आईसीयू बेड्स हैं, कितने ट्रॉमा बेड्स हैं, कितने आपके यहाँ न्यूरो सर्जरी के लोग हैं, ये सब इकट्ठा किया और ये फाइंडिंग है हमको मिली। तो 4 मेडिकल कॉलेजेस में तो ट्रांसप्लांट कुछ हो रहे हैं, एसएमएस सबसे ज्यादा कर रही है, एम्स जोधपुर कर रही है, और 9 जो अनदर 5 मेडिकल कॉलेज है जहां ट्रांसप्लांट चालू करना चाह रहे हैं। तो हमने सजेस्ट किया कि इनको हम नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना दें कम से कम शुरू में। यहाँ हम ऑर्गन दे सकते हैं पर ट्रांसप्लांट नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट उसी हॉस्पिटल हो सकता है जहां पे लाइसेंस है। 2 तरह के लाइसेंस है, एक तो ट्रांसप्लांट के लिए और एक है जहां हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और अंग निकाल सकते हैं। जो अंग निकाल सकते हैं, ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर और एनटीयूआरसी। तो हमारा विचार ये है कि फेज 1 में इमीडिएटली ये जो 5 मेडिकल कॉलेज और है उसको हम एनटीयूआरसी तुरंत बना दें, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में सब चीज अवेलेबल है। अगर कम से कम ऑर्गन रिट्रीवल के लिए ऑपरेशन थिएटर है, आईसीयू है, लैब्स है, रेडियोलॉजी है, सब चीज अवेलेबल है। और फेज 2 में 6 महीने के बाद ये अनदर 5 मेडिकल कॉलेजेस है वो तैयार हो सकती है, क्योंकि यहाँ सब ट्रॉमा केसेस काफी आते हैं। आप जीएमसी पाली में देखें तो 800 ट्रॉमा केसेस आते हैं हर साल, और 60% ट्रॉमा केसेस में जो डेथ होती है उसमें हेड इंजरी होता है, तो उसमें ब्रेन डेथ की पोटेंशियल काफी रहते हैं। एंड फेज 3 में बाकी मेडिकल कॉलेजेस को हम एनटीयूआरसी पहले चालू बना दें, और एक बार रिट्रीवल चालू हो जाए तो उसके बाद ट्रांसप्लांट चालू हो जाएगा। तो रोड मैप जो है फेज 1 और फेज 2 का ऐसा है कि हमको 3 चीज करनी है। एक तो हमको एक टास्क फोर्स बनानी है जिससे कंसल्टेंट्स बोथ विद इन राजस्थान एंड आउटसाइड राजस्थान रहे, वो एक रोड मैप बनाए, उस रोड मैप को देखें कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। उसके बाद हमको एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाना पड़ेगा इन ईच हॉस्पिटल, जिसमें एक नोडल ऑफिसर होगा अंगदान के लिए और एक पुलिस का नोडल ऑफिसर होगा पोस्टमार्टम के लिए। इस ग्रुप में, इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में, आईसीयू के हेड होंगे, न्यूरो के लोग होंगे, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, सर्जन्स होंगे, डायरेक्टर होगा हॉस्पिटल्स के। एंड तीसरी चीज, हर 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें वो रिव्यू करें, ऑडिट करें कि कितने डेथ हुए हैं, उसमें कितने स्कोप थे अंगदान के, वो एक जरूरी है। तो एक 3 चीज हमको करना जरूरी है अगर हमको किडनी के लिए सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए राजस्थान में। क्योंकि हमारा कैलकुलेशन है कि किडनी की रिक्वायरमेंट राजस्थान में 12,000 से 14,000 है हर साल की, और अभी 3 से 400 किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं।
किडनी की जो फेलियर है वो हर 10 लोगों में एक व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम होने वाली है। हमारे ये ग्लोबल फिगर है और राजस्थान में तो और भी ज्यादा है क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज्यादा है जिसके कारण किडनी पे ज्यादा जोर पड़ता है। अगर हम आगे देखें, अगर जब हमारा मान लीजिए जब जीडीपी इंप्रूव होगा, जब हमारे पास हेल्थ में ज्यादा हम पैसा लगाएंगे, उस समय मान लीजिए 5-10 साल के बाद, तो उस समय अगर हमारे पास इस डिमांड का सोल्यूशन नहीं होगा तो हम इस डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे। तो हमको अभी से चालू करना है अभियान अगर हम इस डिमांड को हम मीट करना चाहें आगे चल के। हमारे नंबर ऑफ ट्रॉमा केसेस जो आते हैं, हमने जो कैलकुलेट किए उसमें हमको करीब 40,000 ट्रॉमा केसेस आते हैं हर साल हमारे फेज 1 हॉस्पिटल्स में। और अगर हम एस्टिमेट करते हैं कि 20% हेड इंजरी है इन ट्रॉमा केसेस में एज कॉज ऑफ डेथ, तो हमारे करीब 8,000 डेथ्स होती है हर साल। इसका मतलब कि अगर 20% भी इसमें ट्रॉमा केसेस में हेड इंजरी होती है और ब्रेन डेथ होता है, तो पोटेंशियली हमने कैलकुलेट किया है कि करीब 7,000 हमारे पास पोटेंशियल डोनर्स हैं। एंड इससे करीब आप इसी डोनर से आपका पूरी सेल्फ सफिशिएंसी किडनी की यू कैन मीट। तो फेज 1 का ये रोड मैप है, मैं आपको ये एक रिपोर्ट बना के हम जरूर देंगे, एंड ये फेज 2 का रोड मैप है जहाँ पे हम कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आईसीयू डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करें, स्टाफ की ट्रेनिंग करें, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर रखें। तो ये एक क्योंकि हम आज पूरे दिन इसका हम डिस्कस करेंगे, तो मैं आफ्टरनून में जब हमारी मीटिंग होगी तो हम इसको और थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे पैनल डिस्कशन में। एक मैं छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हम मोहन फाउंडेशन में हम 60 लोग काम करते हैं, 9 जगह हमारी ऑफिसेस है। हमारी कंट्री डायरेक्टर हैं ललिता रघुराम, एंड हमारे जितने भी प्रोजेक्ट लीडर हैं सब अंगदान से जुड़े हुए हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनकी एक पर्सनल स्टोरी है। तो हमारी जो ललिता जी हैं, उन्होंने भी 2004 में अपने 18 साल बच्चे का अंगदान किया था जो ब्रेन डेड हो गया था। वो इस अभियान से जुड़ी हुई थी उस समय। एंड व्हेन इट केम, वो 10 साल आई डोनेशन में काम कर रही थी और उसके बाद शी जॉइंड our Mohan Foundation and worked for organ donation. And not 2004, sorry, I think 2014, Radha, 2004, right? And our 18-year-old son passed away and she donated his organs. 5 organs were donated. She donated 2 kidneys, liver, heart, eyes. And one of our nephrologists from US was so impressed with her story, he actually made a movie out of it. उस मूवी का नाम था ए जिंदगी, कुछ लोगों ने आपने देखी होगी शायद। अगर ये वीडियो प्ले करती है, 1 मिनट की वीडियो है ये, कैन यू प्ले दिस वीडियो? दिस टॉक्स अबाउट द रियल हीरोज। जस्ट 1 second. I got it in the folder. आवाज है क्या इसमें? साउंड है? This is called The Real Heroes, and this is about who are declared our brain story. dead to donate organs to save other lives. You want There's to also a speak? remarkable story of courage. Or is it okay? You lost your son Can you give me some sound? 5 years back, and you've used that virtually to give yourself new strength in a sense. Your son is very serious. And those families, in spite of the grief and loss of their loved ones, have bothered to say yes to organ donation. They have converted their grief, their loss, to something good for the others. So it's an award to those donors, it's an award to those families.
They are the real heroes. Thank you, Lalita. Yeah, Lalita. मैं हमारे एसएस मैम से आग्रह करूंगा ललिता जी को बुक का प्रदान कर प्लांटेशन देके उनका स्वागत करें। सर कंटिन्यू। I'm sure his room may be like Lalita, we have a lot of champions. Shubhaji is also one champion. She's also done some great work, I know. Personal, I don't want to indulge in any personal story, but I know she has a personal story too. And you know, when you have something like this, an organ failure, liver, heart, kidney, there's an absolute desperation. And that desperation, you want to help your loved ones. And this program is not so much about the transplant. This program is more about the donors. If you have a donor, you save many lives. उसके बाद तो ट्रांसप्लांट तो सब होते ही रहेगा. So मैं मीडिया को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप इस कहानी के बारे में कहें, अंगदान की कहानी के बारे में, don't forget the donors. They really drive the program forward. And that is very important. क्योंकि living donation में you can donate one kidney because you can, we always say care for one, spare one. Whereas जो disease donation, जो brain death के बाद जो donation होता है, वो अलग है. उसमें you can recycle your whole body. And today in the world, we do close to about 100,000 donors. India last year, 2023, Anil ji बताएंगे, has done well. We are going to four figures, 4 digits, and we do close to 1,068 donations last year. So with that, I think we'll have a great program today, and we'll discuss how we can take Rajasthan to new heights, because you guys have done so well in organ donation so far. So all the best. Thank you. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके मार्गदर्शन में, आपके देखरेख में जो ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब हमारी एसीएस मैम के इम्पोर्टेंट प्रोग्रामों में इसको जोड़ा गया और ये निश्चित रूप से राजस्थान आने वाले टाइम में जो यहाँ टीम बैठी है, पूरे राजस्थान को लीडिंग करने वाली टीम है माननीय एसीएस मैडम के नेतृत्व में, और राजस्थान इन टीम के विश्वास पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले टाइम में राजस्थान पूरे इंडिया में लीडिंग करेगा। ये मैं टीम के माध्यम से आपको सराफ साहब आप विश्वास दिलाना चाहूंगा। मैं आग्रह करूंगा, हमारे डायरेक्टर पीएस साहब पधारे हैं, उनका प्लांटेशन देख के स्वागत करें। डॉक्टर अजय चौधरी। हमारे आरयूएचएस के वीसी साहब सुधीर भंडारी जी, जिनका नाम चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में बड़े आदरणीय सम्मान के साथ लिया जाता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आके हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। सुधीर भंडारी जी। Honorable ACS Ma'am, Mrs. Subra Singh Ji, esteemed Director NOTO, Government of India, Dr. Anil Kumar Ji, Dr. Jitendra Ji Soni, Dr. Nakate Saab, respected Dr. Shroff, I can see Rajiv Arora Saab, Bhavna Ji, all in audience, my colleagues. It's been a great pleasure to be here for such a noble cause. It is indeed an honor and privilege to witness yet another sensitization and training program on organ donation and transplantation of the state of Rajasthan that I know will carry forward and uphold the basic essence of organ donation and transplantation program of the nation and the state as well. I sincerely hope and know that the program will instill
much desired awareness and the educate participants as to necessity of the organ donation and transplantation program and is a far-reaching implications for welfare and interest of humankind as has been documented in past for such programs being conducted on the continuing basis. The shortage of organ is virtually universal problem, but Asia lags behind much of the rest of the world. India lags far behind other countries even in Asia. It is not that there are enough organs to transplant. Nearly every person who dies naturally or in an accident is a potential donor. Even then, innumerable patients cannot find a donor. There is a wide gap between patients who need transplant and organs that are available in India. An estimated around 1.5 lakh persons suffer from renal failure every year. However, the number of renal transplant done is around 6,000 only in our country. An estimated 2 lakh patients die of liver failure, and we are doing much lesser. Almost 50,000 plus patients require cardiac transplant. Organ transplantation is the most preferred treatment of many of the end stage organ disease as it offers a better quality of life and has a better long-term survival benefit. However, the primary hindrance to organ transplantation program is worldwide shortage of donor organs. Organ donation is a life-giving for those who are at the end of the line for hope. It carries the power to enhance the lives of people and change them forever. As the need for organ donor is growing by the day, it has become necessary to increase awareness about organ donation. Organ donation is a social act and it's considered to be an honor. Organ donation can happen from a brain dead owner or a living donor. Every year, around 6 lakh people die in India due to shortage of the unavailability of the organs. The organ donation rate in Western countries almost to the tune of 36 per billion against the 0.3 million per in India. Organ transplantation is one of the greatest achievements that modern science has been able to accomplish. Many lives could be saved and significant death could be avoided if organ donation is done at the right time. Death cannot be avoided and no one can run away from the death. Organ donation is a noble act that could give a ray of hope to another person's life who is suffering through many years because of failure of particular organs. On an average, country witnessed 1,264 road accidents and 462 deaths every day. In our country, more than 462 deaths every day. That is 53 crashes and 19 deaths every hour, according to India's latest road accident reports. Tamil Nadu recorded the highest number of road accidents on national highway in 2022. Tamil Nadu had 64,000 accidents, that is 13.9% of all country's accident, recorded the highest number of road accidents in 22, followed by MP, which had 54,000 accidents to the tune of 11.8%. Overview, every year the lives of approximately 1.19 million people are cut short as a result of road traffic crash. Between 20 and 50 million more people suffer fatal injuries with many incurring disability. Recorded 1.68 lakh road accident death and every 3 minutes there is a death. An obvious goal of the transplant community is to increase the number of organ available for transplantation to shorten waiting time and decrease the waiting list mortality. One strategy for increasing the organs. Reducing the overall healthcare cost compared to long-term medical treatment for organ failure are the big advantages of organ transplant program. State organ donation is a noble act, a deed that could be done to save lives of people even after donor is no more. There are few challenges and issues. Probably all of us are going to join hands to meet out few issues and challenges. We have to reduce high burden, demand versus supply gap. We have to improve the infrastructure, especially in the government sector hospitals where the maximum trauma patients come. We need to improve awareness of concept of brain stem death among stakeholders, and we are committed to improve rate of brain
stem death certification by hospitals, improving awareness and attitude towards the organ donation, poor disease organ donation rate we can correct. We have to develop and improve organized system for organ procurement from deceased donor, and we are committed to maintain high standard in the transplantation, retrieval, and tissue banking, which is very important. Ma'am, I would say the need of hour is sensitization of public at large, that is after death, and you need to be complimented for such a wonderful sensitization and training program in your auspicious present is being conducted. Incorporating knowledge and importance of organ transplant in every syllabi of every stream of education from school to higher level will have most knowledgeable and sensitive next generation for the next generation. Sensitization of medical professionals, medical students, paramedical students, primary doctors about the life-saving importance of it. Each family, I'm sure you know about it, each family in our country has one or more doctors as a family doctor associated with their day-to-day affairs. Hence, they may be the best motivator. And the lastly, development of many tertiary hospitals for transplant program and training more and more professionals to join it. I can only say, ma'am, that after this successful program, we would be in position to say organ donation is the best way to continue life forever. And someone would ask us, is there life after that? We can surely say, yes, there's a life after death. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शन में मेडिकल ने एक नए आयाम स्थापित किए आपके कार्यकाल में। मैं हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब से आग्रह करूंगा वो भी अपने विचार व्यक्त करें। मैंने कमिश्नर साहब ने सभी मेडिकल कॉलेजों में नोडल ऑफिसर मैडम के निर्देश से नियुक्त किए। सर। A very good morning to all of you. Honorable ACS ma'am, who is spearheading this campaign, Angadan Mahadan, in the state of Rajasthan. And with her kind guidance, I think we have quite moved a lot from where we were earlier. At the same time, all the dignitaries on the dais, Dr. Sunil Shroff-ji, Dr. Jitendra Soni-ji, MD, NHM, Director Public Health, Dr. Ravi Mathur-ji, Dr. Sudhir Bhandari-ji, Vice Chancellor RUHS, representative of the NOTO, Dr. Anil Kumar, and all the dignitaries who have traveled from different parts of the country to Jaipur. I congratulate and thanking you for being a part of this campaign. Actually, when Honorable ACS ma'am took the reins of this department around 8 to 9 months back, in fact, this was not at all on our agenda as far as organ donation is concerned. Of course, the team, SOTO, and the Mohan Foundation was doing on the part, but a real impetus was given by ma'am. And we could think that there are so many opportunities and there are so many needy people in every family, almost directly or indirectly, who are getting affected by the need of the organ. And although there are so many potential donors who also want to donate, but there is a lack of mechanism where we can bring both of the parties together and facilitate the arrangements and the treatment. So I think with since last 6 months, a lot of things have happened, especially oath taking ceremony and oath taking campaign had been conducted across the state. And I would like to congratulate the entire team for putting such a great efforts that Rajasthan stood first amongst all the states. Now, all of us need to take this program further, and that's why we are here. As far as Dr. Shroff has
shown in his presentation that how the medical colleges are well equipped, at least for organ retrieval in a first phase, and later on, few medical colleges can start the organ transplantation in actual way. Only 4 medical colleges are doing it fully. But I will assure you, as a Commissioner Medical Education, that all of our team and all of our principals would definitely work toward this goal and will try to identify the gaps and definitely would work on those gaps so that we can address those issues and we can start the organ transplantation first stage, organ retrieval in those medical colleges, and later stage, once our human resources are there, our equipments are there, and the facilities are up to the mark, definitely we will try. Actually, the new medical colleges are in the budding stage. They are just getting developed. So right now we will be focusing on old 6 medical colleges where the setup is quite good and the postgraduate and super specialty doctors are available. Even the infrastructure wise facilities are quite good. So in that way, we will be moving ahead. At the same time, the role of SOTO and the NOTO is quite important, and we would like to get a proper guidance and the wholehearted support from NOTO to the state team. When we were analyzing the journey, we were thinking that some sort of modifications are also need to be made in the organizational structure, and the teams and the committees need to be reorganized, and more interested people can be put into the team, and the team can be enlarged with the participation of the eminent expertise from the outside the government also. And ma'am is actually working on that direction. At the same time, when I was discussing with Dr. Shroff, there are 2 aspects. In fact, if you come across as far as organ donation is concerned, most of the organs which the recipient is required are sort of kidney and liver. And if you see the number of organ donations which are happening or the organ transplants which are happening, highest number is, I think, kidney. So the reason of getting kidney affected and the need of replacement is, I think, hypertension, diabetic. These 2 things are quite important as far as kidney is concerned. As a Commissioner Food Safety and Drug Control, which I am holding the charge, I think there are 2 aspects for the healthy life. One is precautionary and other one is curative measures. As far as curative measures, we can of course take this program of organ transplantation ahead. But at the same time, as a medical fraternity, we also need to think about our healthy lifestyle, our habits, eating habits, and for that purpose, Government of India and Government of Rajasthan has already launched a campaign of Eat Right initiative as well as millets. This year has been called as the International Millets Year. And at the same time, State of Rajasthan has just launched today a campaign named as Shuddha Ahar Milawat Par Var. Shuddha Ahar Milawat Par Var, ये campaign start करने के 2 phases है. I am taking this opportunity to showcase that campaign and to familiarize all of you. मुख्य रूप से इसमें एजुकेटिव इंफॉर्मेशन भी देना है, एजुकेशन भी देना है, आईसी एक्टिविटीज भी करनी है, चाहे वो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हो एज ए कॉमन मैन हो. तो वो भी एक कैंपेन का पार्ट है. और दूसरा कैंपेन का पार्ट है जो मिलावटखोरी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, जो मिलावट युक्त पदार्थ है उनका नष्टीकरण करना, कोर्ट में केसेस दाखिल करना और पनिशमेंट देना, और सोशल मीडिया हो चाहे नॉर्मल रेगुलर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो उसके माध्यम से मिलावटखोरों को बेनकाब करना, और इतना मास मूवमेंट बनाना कि हर आदमी एक तरह से खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए एक रेगुलेटर के रूप में साबित हो. और जब भी कोई दुकान से कोई चीज खरीदना चाहे तो वो खुद दुकानदार को पूछे कि इसमें भाई मिलावट तो नहीं है. एक ये अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि
एक प्रिकॉशनरी एस्पेक्ट्स पे काफ़ी चीज़ें एक्चुअली वर्कआउट हो जाएगी। अगर आप डॉक्टर भंडारी जी बैठे यहाँ पे, वो एग्री करेंगे कि पिछले 10 साल में कैंसर के पेशेंट्स 7 to 10 टाइम्स बढ़ गए हैं। तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस जो है उसमें वन ऑफ द एक है लाइफस्टाइल भी है, फूड एडल्ट्री भी है और स्ट्रेस भी है। तो एक पार्ट तो हमें एज अ मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गैप हम ऑर्गन डोनेशन में बहुत समय लगेगा उसको फुलफिल करने के लिए, तो हमें एक तरफ तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के रूप में ओवरऑल आम आदमी को अवेयर करना है, खुद के खाने के बारे में भी, सेहत के बारे में भी और एडल्ट्रेशन के बारे में भी, और साथ में उसको ये भी अवेयर करना है कि यदि फिर भी खुदा ना खास्ता करे ऐसी कोई समय आ गया, आज किसी आज डॉक्टर मैडम ललिता जी ने, इवन मैम ने भी जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आई तो ये किया, तो जो उस जर्नी से गुजरे उनको पता है उस चीज का महत्व क्या है। तो हम सभी लोगों को ये अवेयर करें कि भाई ऐसी नौबत नहीं है और फिर इधर उधर भागा दौड़ी करनी पड़े, वेटिंग लिस्ट में फिर देखना पड़े, किसी के पास रिक्वेस्ट करनी पड़े कि भाई, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इस तरीके से दूसरे एस्पेक्ट में भी अगर मास मूवमेंट हो जाए, अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आ जाएंगे। और फैसिलिटेशन जो अपने को करना है, जो मैंने पहले ही बताया, मेरा एक सजेशन भी था हमारी सोटो और नोटो की टीम को कि अगर हम जो वेटिंग लिस्ट का मैसेज, इनफैक्ट मैंने सोटो की टीम के साथ बताया भी था कि वेटिंग लिस्ट का मैसेज अगर ऑल 10 और 20 जो भी वेटिंग लिस्ट में हम 10 को शायद मैसेज करते हैं, तो वो मैसेज हम रेसिपिएंट हॉस्पिटल को करते हैं, या जो हॉस्पिटल्स जहाँ पे ऑर्गन रिट्राइवल हॉस्पिटल है वहाँ पे हम करते हैं, और वहाँ से वो लोग आगे मैसेज करते हैं कि हाँ ये ऑर्गन अवेलेबल हो गया है। तो इसके लिए पोटेंशियल जो रेसिपिएंट है वो कम्युनिकेट कर दे। तो इसमें कम्युनिकेशन गैप काफ़ी रहता है। तो आजकल आईटी का ज़माना है, इतना टूल्स अवेलेबल है हमारे पास, तो क्यों ना हम नोटो से और सोटो से, एटलीस्ट सोटो के लेवल से एक मैसेज, जो भी 10 फैमिलीज रेसिपिएंट है उन सब के मोबाइल नंबर है, उसमें एक मैसेज जाए। और ऑफ कोर्स जो फर्स्ट वेटिंग में फर्स्ट नंबर पे है वो डिनाई करता है या उसकी मेडिकल कंडीशन फेवर नहीं करती ऑर्गन रेसिपिएंट को रिसीव करने के लिए, तो आपको सेकंड थर्ड पे जाएगा, लेकिन एटलीस्ट सारे 10 के 10 लोगों को पता चलेगा कि यस देयर आर 3 organs are available, 10 people are in queue, and all the 10 people are getting message, and then they can try on their own. So that transparency must be there, but also I think it should be seen to be there. तो इससे थोड़ा एक विश्वास आम जनता में भी आ जाएगा, और हमारे लिए आईटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इसकी रीच और लोगों तक बढ़ा सकते हैं। मैं इतना ही कह के मेरी बात समाप्त करूंगा, और इस कैंपेन के लिए मैं हमको फिर से धन्यवाद दूंगा और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और आप सब जगह से पधारे और इसका पार्टिसिपेट, आज इसके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हो रहे, मुझे लगता है, पूरा विश्वास है आज की इस पूरी वन डे वर्कशॉप में अच्छा डिस्कशन हो जाएगा, अच्छे आउटकम्स और अच्छे सुझाव आएंगे जिस पे हम निश्चित रूप से अमल करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने माननीय एसटीएस मैम के निर्देशों की अनुपालना में सभी मेडिकल कॉलेजों में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं। साथ ही यूनिट को भी फंक्शन लाने में सभी मेडिकल कॉलेजों में आपने प्रयत्न किया है, स्टार्ट के आदेश किए हैं, क्रियान्वित हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं आज हमारे नोटो के डायरेक्टर साहब जो पूरे भारतवर्ष में प्रोग्राम को चलाते हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं दिल्ली वर्कशॉप में गया था, वहाँ राजस्थान का नाम आप ले रहे थे, 2-3 दफा आपने नाम लिया कि राजस्थान इंडिया में लीडिंग कर रहा है प्लेज के अंदर। मैं सर, आप आज हमारे बीच पधारे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ आपसे कि ये जो लीडिंग वाली पोजीशन, ये हमारे मार्गदर्शन में, हमारे नेतृत्व में इस टाइप से एक तरीके से सब लोगों को जोड़ दिया, जैसे बिखरे हुए मोतियों को जोड़ के माला बनाई जाती है, और वो श्रेय टोटल का टोटल श्रेय हमारी एसीएस मैम को जाता है। मैं सभी से आग्रह करूंगा इस चीज के लिए आप तालियां बजा के आप स्वागत करें हमारे नोटो के डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने राजस्थान का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वर्कशॉप में 2-3 दफा लिया। मैं उस वर्कशॉप में उपस्थित था कि राजस्थान लीडिंग कर रहा है पूरे इंडिया के अंदर ऑनलाइन प्लेस के अंदर। आज वर्कशॉप माननीय मैम के मार्गदर्शन में स्टार्ट हो रही है। निश्चित रूप से दूसरे भी आपके
टूल्स हैं, दूसरे भी आपके पॉइंट्स हैं, आप आने वाले टाइम में ये कहेंगे कि राजस्थान इसमें भी लीडिंग कर रहा है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये हमारे एसीएस मैम के माध्यम से पूरी टीम जो यहाँ बैठी है पूरे राजस्थान की, वो निश्चित रूप से राजस्थान को लीडिंग पोजीशन में लेके आएगी। मैं नोटों के डायरेक्टर साहब से आग्रह करूंगा वो आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। सर धन्यवाद धौलपुरिया जी। नमस्कार। Respected respected Secretary Health, Additional Chief Secretary, Ma'am Shubhra Singh ji, respected Commissioner Medical Education, Shri Nakate ji, respected Vice Chancellor of the Rajasthan University of Health Sciences, Dr. Bhandari, who was earlier heading the SOTO at SMS Jaipur, Dr. Mathur, Dr. Jitendra Soni ji, Mission Director NHM. Then we have Director RCH also present, Dr. Sunil Shroff, who has, helped, supported organ donation program in the state of Rajasthan right from the beginning. And we have other members of the Mohan Foundation, Jaipur Citizen Forum also present over here. Bhavna ji and Lalita ji, who are available on this occasion. So I'll be मैं सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मैम शुभ्रा सिंह जी को कि जिन्होंने की इस वर्कशॉप के बारे में सोचा और इसको स्टेट लेवल पे एक ये सेंसिटाइजेशन कम ट्रेनिंग जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सारी स्टेट में। और ऑलरेडी जैसे कि सभी को पता है कि जो सोशल मोबिलाइजेशन मूवमेंट राजस्थान के अंदर चल रहा है, शायद ऐसा पूरे देश में किसी भी स्टेट में नहीं है। इतने बड़े स्तर पर जो पूरे राजस्थान की स्टेट के जो लोग मोबिलाइज हुए एक नोबल कॉज के लिए और जो कि इस कॉज से जुड़े हैं और जो कि अंगदान की जो हमारी ऑनलाइन प्लेजिंग सिस्टम जो चल रहा है अभी, जिसमें कि आधार के द्वारा प्लेज कराई जाती है, आधार ऑथेंटिकेटेड प्लेज है। और उससे पहले जो ओथ से भी प्लेज हो रही थी, तो उसमें तो जो मुझे पता लगा था कि लगभग 25% से ज्यादा लोग, क्योंकि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति प्लेज नहीं कर सकता और 18 साल के से ज्यादा ही उम्र का व्यक्ति जो है प्लेज कर सकता है, तो उसमें भी लगभग 25% से ज्यादा पूरे राजस्थान के लोगों ने प्रतिभागी उसमें हुए थे। और इतने बड़ी संख्या मेरे ख्याल से किसी भी देश में इतने प्रोपोर्शन में कोई भी नहीं जुड़ा है। और पिछले 5 महीने में जो कैंपेन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बर्थडे से जो चल रहा है 17 सितंबर से, और उसमें अभी भी राजस्थान ही लीड कर रहा है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। इस कैंपेन को ये सबसे बड़ा सोशल मोबिलाइजेशन मूवमेंट एक तरह से देखने को पूरे देश में मिल रहा है कि इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, जो भी राजस्थान में इस और प्रोग्राम को चला रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन के इस प्रोग्राम को जो लोग चला रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो स्वयंसेवी संस्था से हों, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन के लोग हों, और वो सब इसमें जुड़ें और इस लोगों की इस भावना को आगे बढ़ाते हुए ऑर्गन डोनेशन को आगे बढ़ाएं। तो आप लोग जो आए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत मतलब धन्यवाद कि जो इसमें बहुत सारे मुझे बताया गया कि मेडिकल कॉलेजों से लोग आए हैं, एक्सपर्ट लोग आए हैं, ट्रांसप्लांट प्रोफेशनल्स आए हैं। तो आप सब लोग एक जो सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं टुवर्ड्स दिस कॉज, तो वो एक काफी मैं उसका अभिनंदन करता हूं और प्रशंसनीय है कि आप सभी इस नेक काम से जुड़ रहे हैं। तो मैं अपना जो एड्रेस दूंगा वो एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से दूंगा। तो एक मेरा प्रेजेंटेशन है, प्लीज उसे चला दीजिए। शायद आप चला पाएंगे वहां से या यहाँ से चलेगा? अच्छा, यहीं से चले, नहीं उधर उन्होंने लगाया था। उनके पास था वैसे वो। अच्छा, एक सेकेंड।
So donate the organ and save the life. तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि हम कहाँ पर हैं, कितनी जरूरत है। मूव नहीं कर, हाँ माउस, अच्छा माउस, ओके। सो हमारे देश में कितनी जरूरत है और कितने ट्रांसप्लांट हम कर पा रहे हैं, ये 2023 का आंकड़ा है। लगभग हर साल 2 लाख ऐसे नए मरीज जुड़ जाते हैं हमारी वेटिंग लिस्ट में जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। तो 2 लाख हर साल नए। लगभग 14 से 16% लोगों को आजकल किडनी की किसी स्टेज की बीमारी आ गई है, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक। कमिश्नर साहब ने बोला कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन एक कॉमन कॉज है। तो हमें अगर उनको समय रहते हम उनको कंट्रोल कर लें तो हम लोग इस बीमारी से बच पाएंगे। तो 2 लाख लोग जो हर साल जुड़ रहे हैं नए लोग, और हमने कितने ट्रांसप्लांट किए पूरे देश में मिला करके? सिर्फ मात्र 12,343, जिसमें भी 10,730 जो है लिविंग डोनर से ट्रांसप्लांट हुए हैं। लिवर की हमारे यहाँ जरूरत जो है लगभग 40 से 50,000 है, और अभी लिवर ट्रांसप्लांट जो पिछले साल हम लोग किए हैं वो 4160 किए हैं। तो 4000 क्रॉस कर गए हैं हम, जो कि अच्छी बात है, पहले इतना नहीं था नंबर। हार्ट फेलियर के जो मरीज हर साल नए जुड़ रहे हैं जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है 50,000 है। पिछले साल 215 ट्रांसप्लांट हार्ट के हम कर पाए हैं। लंग 189 कर पाए हैं। पेनक्रियास 20 है। स्मॉल बॉल जो इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांट होता है वो 14 कर पाए हैं। तो टोटल 16,941 पूरे देश में जो आंकड़ा नोटों के पास राज्यों से आया है तो वो हम लोग कर पाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में, जैसे कि पहले भी बताया, कि कई बार बोला है, और अभी 99th एपिसोड में उन्होंने बोला कि एक अंगदाता 8 जिंदगियां बचा सकता है। 8 से 9 जिंदगियां उन्होंने बोला, और उन्होंने कई दफे इस विषय के बारे में बहुत लोगों को जागरूक किया है, और हम उनके पूरे मतलब हम लोग तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कैंपेन को टॉप लेवल से इसको इम्पिटस दिया है। या ये 10 वो देश हैं जिनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में मिला करके, जो टॉप है। इंडिया टोटल ट्रांसप्लांट्स में तो नंबर 3 पर है, लेकिन जो ग्रीन बार है, जो ग्रीन वाला बार है, वो ट्रांसप्लांट्स वो हैं जो कि हमें मृत्यु उपरांत जो लोग अंगदान करते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, अंगों से जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे 10 के 10 में ये प्रोपोर्शन जो ग्रीन बार का है, जो ब्लू बार है वो टोटल ट्रांसप्लांट है, रेड जो है जो लिविंग डोनर से आ रहे हैं, जो जिंदा आदमी दे रहे हैं, और जो ग्रीन बार है वो जो मृत्यु के उपरांत दे रहे हैं। तो इंडिया का जो ग्रीन बार का प्रोपोर्शन है इन पूरे 10 के 10 देशों में सबसे लो है। तो हमारे यहाँ लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट तो हो रहे हैं, हम नंबर 3 पर हैं, लेकिन जो मृत्यु उपरांत अंगदान होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। ये 2022 का आंकड़ा है जो पूरे इन देशों से कंपेयर करके, तो यूएस से और चाइना के बाद हम नंबर 3 पर हैं, लेकिन हम लोग उतना कर नहीं पा रहे जितना अंगदान नहीं कर पा रहे, वो एक सबसे बड़ा है। टोटल ट्रांसप्लांट जो हम पिछले साल मैंने बताया 2013 के मुकाबले हम 3 गुने से ज्यादा बढ़ गए हैं। 16,941 का आंकड़ा लास्ट ईयर का है, लेकिन अभी और करने की जरूरत है। कितने अंगदाताओं ने दान किए हैं? 340 करते थे 2013 में, अभी 1000 का आंकड़ा पार हो गया है लास्ट ईयर। तो 1062 लोगों ने अंगदान किए पूरे देश में मिला करके, और एक ऑन एन एवरेज एक अंगदाता 3 से 4 ऑर्गन देता है। तो हमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट इनसे हुए 1062 लोगों से 2870 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम लोग कर पाए इन अंगदाताओं से जो जिन्होंने अंगदान किए। देश में क्या स्थिति है? अगर ये हम कुछ रेड एरियाज देखते हैं, जो रेड एरियाज हैं वो एरियाज हैं जहां पे अभी तक एक बार भी अंगदान नहीं हुआ मृत्यु उपरांत। तो अभी भी देश में कुछ, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और आसाम को छोड़ करके बाकी स्टेट्स हैं, और झारखंड है। ये राज्य वो राज्य हैं
जहां पे कि एक बार भी मृत्यु उपरांत अंगदान नहीं हो पाया, और ग्रीन एरियाज वो हैं जहां की अंगदान हो भी रहा है और बढ़ भी रहा है। तो ये ज्यादातर साउथ में और वेस्टर्न रीजन में है। इसके अलावा कुछ जो एरिया आप देखेंगे लाइट ग्रीन है, जो लाइट ग्रीन है वो है जहाँ पे अंगदान की शुरुआत जस्ट अभी हुई है। लेकिन जो ज्यादा चिंता है वो क्रीम एरियाज की है। तो क्रीम एरिया में राजस्थान भी आता है। तो जहाँ पे कि अंगदान की शुरुआत तो हुई लेकिन बढ़ नहीं रहा है। तो ये एक समस्या हमारे सामने है कि अंगदान जो मृत्यु उपरांत अंगदान है वो हो तो रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है। तो ये राजस्थान उस कैटेगरी में अभी आ रहा है। तो अगर आप देखें कि तेलंगाना स्टेट है, उसमें पिछले साल 200 लोगों ने अंगदान किए हैं, और उसकी अगर ऑर्गन डोनेशन हम रेट कैलकुलेट करें तो वो 5.41 आती है 2023 की, जो कि 10 लाख लोगों में कितने व्यक्ति अंगदान कर रहे हैं, तो 5.41 तेलंगाना में लोगों ने अंगदान 10 लाख लोगों में किया। तो इस तरह से हमें इसको बढ़ाने की जरूरत है। राजस्थान का अगर आंकड़ा देखें तो ये राजस्थान का पिछले साल का आंकड़ा है कि कितने टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन वाइज कितने ट्रांसप्लांट हुए। किडनी में लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट 737 हुए, किडनी में जो डेथ की मृत्यु उपरांत जो अंग मिले 10 हुए, लिवर जो है 45 हुए, 4 लिवर जो है वो डिसीज डोनर डेथ के बाद जिन्होंने दान किया उनसे हुए, 3 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए, 1 लंग ट्रांसप्लांट हुआ। तो ये मतलब टोटल अगर हम देखें, टोटल जो डोनर्स थे 787 डोनर्स हुए पूरे राजस्थान में, लेकिन उसमें से 782 जीवित अंगदान डोनर थे। सिर्फ 5 ही मृत्यु उपरांत डोनर ने दान किया। तो ये एक थोड़ी चिंता की एक, जिसपे हमें सबको विचार करना चाहिए कि हमारे लोग दान करना चाहते हैं लेकिन फिर भी दान क्यों नहीं हो पा रहा हॉस्पिटल्स के अंदर। तो 782 जो है लिविंग डोनर्स थे, सिर्फ 5 ही मृत्यु उपरांत अंगदाता हुए। अगर उसको हम टोटल ट्रांसप्लांट देखें कितने हुए, 800 टोटल ट्रांसप्लांट हुए राजस्थान में पिछले साल, उसमें से मात्र 2% जो है वो डेथ के बाद जो डोनेट हुए ऑर्गन्स, 18 ऑर्गन डोनेट हुए, उनसे ट्रांसप्लांट 2% ट्रांसप्लांट मात्र डिसीज डोनर से आ रहे हैं। जबकि ये आंकड़ा अगर आप राष्ट्र के स्तर पे देखें तो लगभग 14-15% तक अंगदान जो आज जो प्रत्यारोपण है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, वो मृत्यु उपरांत जो अंगदान कर रहे हैं उनसे हो रहे हैं। तो हमें इस पे काम करने की जरूरत है कि सिर्फ मात्र 98% हमारे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैं वो लिविंग डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैं, सिर्फ मात्र 2% ही मृत्यु उपरांत जो लोग अंगदान कर रहे हैं उनसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। ये प्लेज का डाटा है, ये कल का डाटा है, थोड़ा बढ़ भी गया होगा। राजस्थान मैंने बताया कि पहले ही सभी राज्यों में सबसे अग्रणीय है, बिगेस्ट सोशल मोबिलाइजेशन चल रहा है, और मेरे ख्याल से इतना बड़ा एक ये सोशल मूवमेंट जिसको बोला जा सकता है, ये उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि कितने लोग इस में जुड़ने के लिए तैयार हैं। राजस्थान के लोगों में जज्बा है कि अंगदान वो करना चाहते हैं। हमारे सिस्टम की कमी है कि हम उन्हें फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे अंगदान कराने की, क्योंकि हो नहीं रहे उतने। तो वो एक इसको हमें जो ये एक जज्बा है उसको हमें आगे बढ़ाना है, और अंगदान को कि जो एक लोग जो अंगदान करना चाह रहे हैं उनका अंगदान की फैसिलिटी हर जगह मुहैया करानी है। जैसे कि अभी कमिश्नर साहब ने भी बोला, मेन चैलेंजेस क्या हैं, ये येलो में मैंने हाईलाइट किए हैं। मेन चैलेंजेस हमारे अस्पतालों के लेवल पर हैं। तो पहला चैलेंज ये है कि हमारे अस्पतालों में इंटेंसिव केयर यूनिट में ब्रेन स्टेम डेथ के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, एडमिट हो जाते हैं, लेकिन कोई बॉदर नहीं करता कि वो चेक कर ले क्या ये ब्रेन स्टेम डेथ तो नहीं है। वो पड़े पड़े उसकी डेथ हो जाती है, हार्ट रुक जाता है, और कोई उसको ना सर्टिफाई कराता है। तो पहला चैलेंज है कि ब्रेन स्टेम डेथ को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको सर्टिफाई भी कराना है लॉ के हिसाब से, जो 4 डॉक्टर्स को मोबिलाइज करके। तो पहला चैलेंज है, क्योंकि ट्रॉमा विक्टिम्स बहुत हैं पूरे देश में मिला के। पिछले साल 1.68 लाख एक्सीडेंटल डेथ्स हुए हैं, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ
रोड ट्रांसपोर्ट का आंकड़ा है। एक पॉइंट, तो इतने सारे जो एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही है पूरे देश में मिला के, तो बहुत सारे इनका ब्रेन क्रश हो जाता है। ये हेल्दी लोग होते हैं, इनके बाकी सारे अंग जो हैं काम करते होते हैं। अगर इनको हम टाइमली इनके अंग दान करवा पाए जब ये हॉस्पिटल में आते हैं, तो हमें ब्रेन स्टेम डेथ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ब्रेन स्टेम डेथ की सर्टिफिकेशन को बढ़वाना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप जो है अस्पताल लेवल पे होगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं आईसीयू में वो इस तरह से सेंसिटाइज्ड हों। क्योंकि देखिए अंगदान जो है वो ब्रेन स्टेम डेथ की सिचुएशन में होता है, जब आपका ब्रेन जो है डेड हो गया है, पेशेंट ऑलरेडी आईसीयू में है और उसका हार्ट रुकेगा कुछ देर बाद, तो उस स्टेज में पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो एक जो विंडो पीरियड होता है ब्रेन डेड और हार्ट रुकने के बीच में, जो कई बार 2-3 दिन तक भी होता है, अगर हम टाइमली आइडेंटिफाई कर पाए तो वो जो विंडो पीरियड है ब्रेन डेड और हार्ट के रुकने के बीच में, उस दौरान अगर परिवार को सेंसिटाइज किया जाए तो हम लोग जो है अंगदान करवा पाएंगे। तो हमारा सिस्टम अस्पताल का इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि इस विंडो पीरियड का, जो कि 1 दिन 2 दिन तक भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, जितना यंग डोनर होता है उसमें ज्यादा विंडो पीरियड होता है, तो हम लोग अगर मोबाइल उस समय एफर्ट करेंगे तो हम अंगदान करवा पाएंगे। तो ब्रेन डेथ को हमें आइडेंटिफाई करना है, उनको सर्टिफाई करवाना है और काउंसलिंग करनी है, फैमिली कंसेंट, ये सब फिर बाद में स्टेप्स आते हैं। हमारे यहाँ डेटा की रिपोर्टिंग के इश्यूज हैं, सारा डेटा नेशनल रजिस्ट्री में आना चाहिए, ये लॉ का मैंडेट है। जो भी डोनेशन हो रहा है, जो भी वेटिंग लिस्ट में पेशेंट है, सबका डेटा नेशनल रजिस्ट्री में आना चाहिए। सभी अस्पतालों को यूजर आईडी पासवर्ड नोटो की तरफ से दिए गए हैं। डिसीज डोनर जो है, जो डेथ के बाद डोनर डोनेट करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी आईसीयू सबसे बढ़िया तब माना जाता है अगर वो मरे हुए आदमी को भी अच्छे से मेंटेन कर सके। जिंदा आदमी को तो आईसीयू मैनेज कर सकता है अच्छे से, लेकिन एक जो ब्रेन डेड व्यक्ति है जिसको आइडेंटिफाई कर लिया, अगर उसको आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आपकी आईसीयू की क्वालिटी को वो दर्शाता है। तो हमें अपने आईसीयू मैनेजमेंट को भी इंप्रूव करना है कि हम डेड मरीज को भी मेंटेन कर रहे हैं कि जब तक उसके ऑर्गन रिट्रीव नहीं करते। हमें सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। हमें सारे जो रेसिपिएंट्स जिनको भी जरूरत है सबको ऑफर देना है कि आपका भी, आप ट्रांसप्लांट का ऑप्शन आपके लिए है, पिक एंड चूज नहीं करना है, जिसको भी जरूरत है उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए। एक सस्टेनेबल प्रोग्राम, कई बार क्या होता है, मैंने एक हार्ट ट्रांसप्लांट कर लिया, मुझे लगा कि मेरा तो अस्पताल का नाम हो गया, एक हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैंने अचीव कर लिया, लेकिन हमें एक पे नहीं रुकना है, हमें एक सस्टेनेबल प्रोग्राम को लेके चलना है, सस्टेन करना है प्रोग्राम को। तो ये उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो तो है ही कि ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज होते हैं, वो सबको हमें लिविंग डोनर को प्रोटेक्ट करना। तो ये हमारे देश में जो ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन है लॉ से रेगुलेटेड है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, तो क्या रेगुलेट करते हैं हम, कौन निकाल सकता है, कहाँ स्टोर हो सकता है, सबके पास लाइसेंस चाहिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। अगर लाइसेंस के बिना किसी भी अस्पताल में ऑर्गन डोनेशन या ट्रांसप्लांट, वो इलीगल है और पनिशमेंट्स आर वेरी सीवियर। 1 करोड़ रुपए तक का फाइन है, 10 साल तक की जेल है। तो इसको हमारे जो लॉ में क्या है कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति ही, 18 साल या उससे ऊपर ही वाला ही जिंदा आदमी दान कर सकता है। डेथ के बाद कोई एज लिमिट नहीं है, छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी दान कर सकता है अगर उसके ऑर्गन्स काम आ सकते हैं। ब्रेन डेथ हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज्ड है डेथ के रूप में। लाइसेंसिंग अथॉरिटी हर स्टेट में स्टेट बनाती है और एक अप्रूवल कमेटी होती है, कोई भी अनरिलेटेड जो ट्रांसप्लांट होता है उसको अप्रूव करने के लिए एक ऑथराइजेशन कमेटी के थ्रू जाता है, कि क्योंकि लेन देन किसी भी तरह का अलाउड नहीं है। तो हमारा जो फ्रेमवर्क है वो इस तरह से है कि जो भी, जिसको भी अंग दान की जरूरत है, अंग की जरूरत है, वो नोटो ने जो एक यूजर आईडी पासवर्ड दिए गए हैं अस्पतालों को, वो अस्पताल उसको रजिस्टर कराएगा, ना सोटो रजिस्टर करेगा डायरेक्टली, ना नोटो करेगा, ना रोटो करेगा। रजिस्टर कौन करवाएगा, हॉस्पिटल कराएगा। तो वो अस्पताल जो एडवाइस कर रहा है ट्रांसप्लांट, वो उसको रजिस्टर कराएगा, वो उसकी वेटिंग लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आपकी वेटिंग लिस्ट कैसे होगी, ऑर्गन ब्लड ग्रुप वाइज होगी,
उस तरह से होगी तो आपको एक यूनिक आईडी मिल जाता है, नोटो आईडी, जो कि सारे देश में वैलिड होता है। और अगर आपको अस्पताल बाद में चेंज करना है तो आप एक ईमेल के द्वारा नोटो उसको चेंज कर देगा अस्पताल को आपके रिकॉर्ड में। तो लेकिन आपका एक आईडी एक ही रहेगा पूरे देश में, तो और वो फिर आपके स्टेट लिस्ट में भी आएगा, पूरे रीजनल लिस्ट में आएगा। और जब डोनर अवेलेबल होता है तो इंफॉर्मेशन सोटो के पास जानी चाहिए। सोटो डिसाइड करेगा वेटिंग लिस्ट के हिसाब से कि अस्पताल में किसको जाएगा, स्टेट में किसको जाएगा, अगर अस्पताल में नहीं यूज हो रहा है। तो इस तरह से ये सिस्टम बना हुआ है, फ्रेमवर्क बना हुआ है। बहुत सारी मिथ्याएं हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। मेरा धर्म मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं ऑर्गन डोनेट करूं। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है कि जो कि मानवता के कार्य में रुकावट बनता हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे कोई भी ईसाई धर्म हो। मैं अगले जन्म में मुझे ऑर्गन शायद ना मिले वो जो मैं दान कर दूंगा। इस तरह की मिथ्याएं से बाहर निकलना होगा। बाकी लिविंग डोनेशन में भी मिथ्याएं हैं, भ्रांतियां हैं कि मैं अगर अंग दान कर दूंगा तो मैं हैंडीकैप हो जाऊंगा, मेरे काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा और मैं या शादी नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह की मिथ्याएं को हमें दूर करना है। तो उसको हमें कौन कौन से अंग दान किए जा सकते हैं? ये 6 ऑर्गन्स हैं जो कि वाइटल ऑर्गन है, एक के बिना भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो लिवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है। तो ये सारे अंग दान ऑर्गन्स जो है एक ब्रेन डेड व्यक्ति से कराए जा सकते हैं मृत्यु के उपरांत। ये किडनी आप देख रहे हैं कि पेयर्ड ऑर्गन है और लंग्स भी पेयर्ड हैं, तो दो दो हैं, तो दो दो अलग अलग व्यक्तियों को जा सकते हैं। तो 6 और 2 8 हो जाते हैं। और लीवर को भी हम डिवाइड करते हैं तो 9 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे जीवनदायी अंग है। तो हम बोलते हैं कि 8 से 9 व्यक्तियों की आप जान बचा सकते हैं एक अंगदाता। उसके अलावा आप 75 तरह के टिश्यूज दे सकते हैं। उसमें कॉमन टिश्यूज जो हैं, कॉर्निया है, स्किन है, टेंडन है, हार्ट के वेल्व्स हैं, बोन्स हैं, कार्टिलेज है। अभी हैंड ट्रांसप्लांट भी हमारे देश में बहुत हो रहे हैं। ये रिसेंटली दिल्ली के एक अस्पताल में हैंड ट्रांसप्लांट हुआ है। इनके दोनों हाथ कटे हुए थे, इनको अंगदाता ने हाथ दे दिए। आप देखेंगे कि ये लगभग 1 महीने के बाद का फोटो है कि कितने हेल्दी हाथ नजर आ रहे हैं, जैसे कि अभी कोई उसमें कोई हाथ काले नहीं पड़े हुए, कुछ नहीं हुए। और ये इस तरह से हाथ भी लोगों ने दान किए हैं और बहुत सारे हैंड ट्रांसप्लांट भी अभी आज की तारीख में हमारे देश में हो रहे हैं। राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, भारत सरकार द्वारा एक संचालित प्रोग्राम है जिसमें कि हम रोटो, सोटो और के लिए ग्रांट्स देते हैं, उनके ऑफिसेस चलाने के लिए, रिट्रीवल सेंटर बनाने के लिए ग्रांट देते हैं, ट्रांसप्लांट सेंटर्स के लिए ग्रांट देते हैं। तो ये ग्रांट्स अवेलेबल हैं। प्रपोजल्स हमें भेजें और ये ग्रांट्स तुरंत आपको जो भी अवेलेबल है गैप फिल करने के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट के लिए होती है, मैन पावर के लिए नहीं होती। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी ग्रांट दी जाती है, तो वो भी ग्रांट दी जा सकती है। ट्रांसप्लांट होने के बाद जो दवाइयां दी जाती हैं उसके लिए भी 10,000 रुपए महीने तक की ग्रांट दी जाती है। फ्यूनरल पे एक्सपेंसेस के लिए भी 10,000 रुपए प्रति डोनर दी जाती है। तो ये मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डोनेशन डोनर के लिए, तो ये ग्रांट्स अवेलेबल हैं। कृपया ये इनको यूटिलाइज करें और इनको इनके प्रपोजल भिजवा लें। जो भी नए आप अस्पताल बनाना चाह रहे हैं रिट्रीवल के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए, तो उनके लिए जो ग्रांट्स अवेलेबल। इसके अलावा राष्ट्रीय आरोग्य निधि में 15 लाख रुपए तक की ग्रांट जो है बीपीएल पेशेंट्स के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए के जिनको जो नहीं अफोर्ड कर सकते ट्रीटमेंट, उसमें दी जा सकती है। पर मुझे बताया गया कि राजस्थान में ऑलरेडी अलग से स्कीम चल रही है जिसमें कि शायद 18 से 20 लाख तक का भी उसमें प्रावधान किया गया है। तो ये ट्रांसप्लांट के लिए भी राष्ट्रीय आरोग्य निधि। उसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि आयुष्मान भारत की एक फ्लैगशिप, उसमें भी हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, जो कि 5 लाख तक का बीमा एक फैमिली के लिए होता है, उसमें भी हेल्थ पैकेज जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी दिया जा रहा है। पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, जैसे कि आपको मालूम है जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा उससे पहले भी डायलिसिस की जरूरत है, बाद में भी डायलिसिस की जरूरत होती है तो कई बार। तो उसमें आपको पब्लिक प्राइवेट मोड में हमारे प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि लगभग 22 लाख लोगों को अभी तक डायलिसिस दी जा चुकी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक
प्रोग्राम जाता है और 2.5 करोड़ डायलिसिस सेशन हो चुके हैं। हमारा एक ये और है कि आपको ट्रॉमा सेंटर्स के साथ में लिंक करना है अपने प्रोग्राम को। तो आपका प्री हॉस्पिटल केयर बहुत अच्छा होना चाहिए कि जब वो रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, ब्रेन क्रश हो गया है, अगर उसको हम हेल्दी, पर्टिकुलरली यंग बच्चे होते हैं, क्रश हो जाता है ब्रेन, बाकी सारे ऑर्गन्स ठीक है, गोल्डन आवर रूल होता है 1 घंटे के अंदर अगर आप उसको पहुंचा देते हो अस्पताल के अंदर, नियरेस्ट हॉस्पिटल में, तो अगर वो जान नहीं बच सकती तो कम से कम उसकी जो अंग है वो बहुत सारे जिंदगियों में, बहुत सारे लोगों में उनसे जिंदगी मतलब वो एक बॉडी में ना सरवाइव करके कम से कम 7-8 बॉडी में वो बंदा सरवाइव करता है। तो एक तरह से उसमें अंग दान करवा पाना, उनको टाइमली पहुंचा पाना आईसीयू में और उसको पर्टिकुलर सपोर्ट दे पाना वो बहुत जरूरी है। तो ये भी डोनर जो है, डिटेक्शन हमारा पॉसिबल डोनर जो हो सकता है वो राइट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसमें ये ब्रेन बिल्कुल क्रश हो गया है और पहिया उतर गया है उसके ब्रेन से, तो पर्सन इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। तो उसमें अगर आप उनको टाइमली, फिर भी हमें क्यों जरूरत है या रीसेंट चेंजेस जो है ये भारत सरकार ने की है पॉलिसी में कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी जाके रजिस्टर कर सकता है अंगदाता के अंग प्राप्त करने के लिए। उसमें स्टेट डोमिसाइल की कंडीशन हटा दी गई है। पहले कुछ स्टेट मांगते थे जैसे कि गुजरात, तेलंगाना वगैरह की स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए तभी आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो वो हटा दिया गया है। किसी भी एज लिमिट का, पहले 65 साल के व्यक्ति से ऊपर का नहीं करते थे रजिस्ट्रेशन, अभी कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का अंगदाता के अंग लेने के लिए रजिस्टर करा सकता है। पेशेंट की बात कर रहे हैं, और कोई फीस नहीं ली जा सकती इस तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए। ये भारत सरकार की तरफ से डायरेक्शन दे दिए गए हैं। हमें अंगदान जो होते हैं उनको बहुत जल्दी, अंगदान ये नहीं है कि अंगों को हम स्टोर नहीं करते हैं, उनको इमीडिएटली हमें ट्रांसप्लांट करना होता है और एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर अंदर हमें ट्रांसप्लांट करना है। हार्ट को हमें सिर्फ मात्र 4 से 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना होता है जब भी डोनेशन होता है। तो इसके लिए एक सिस्टम काम करता है, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लंग्स को 4 से 8 घंटे। तो इस तरह से हम लोग ये, तो एक यूनिफॉर्म ऑर्गन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हम लोगों ने तैयार की गई है, जिसमें कि हर एयरपोर्ट पे एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की मदद से, और सोटो जो है उस नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करे और वो नोडल ऑफिसर उसको हर तरह से फैसिलिटेट करेगा। अभी आजकल एयरपोर्ट पे 1-2 मिनट के अंदर ही उसको बाहर निकाल दिया जाता है जब अगर ऑर्गन आ रहा है, या अंदर वहां तक पहुंचा दे, और कोई स्क्रीनिंग ऑर्गन बॉक्स की नहीं की जाती है। मेट्रो रूल्स भी बदल दिए गए, मेट्रो में भी अब ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए 42 दिन की छुट्टी भी, स्पेशल कैजुअल लीव, ये डीओपीटी ने ऑर्डर निकाल दिया है, जिसमें कि जो भी जीवित अंगदाता अगर चाहे अपने परिवार को या किसी को भी अप्रूव्ड तरीके से अगर वो ऑर्गन डोनेट करता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव देते हैं। हम हर साल अंगदान दिवस भी मनाते हैं और अभी ये 3 अगस्त को इसका तय किया गया है कि 3 अगस्त को मनाया जाएगा। पिछले साल भी मनाया गया और बहुत सारी अवेयरनेस एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं कि हम पूरा देश सेल्फ सफिशिएंट हो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। तो जैसे कि अभी पीछे कमिश्नर साहब ने बोला कि हमें डिमांड भी कम करनी है, ऑर्गन फेलियर को भी कम करना है, हमें हेल्थ प्रमोशन, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गन फेलियर पे भी काम करना है। जैसे कि लिवर फेलियर क्यों होता है, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी है, उससे लिवर फेल हो जाता है। आप वैक्सीनेट अगर टाइमली वैक्सीनेट करा देते हैं बच्चे को, तो उसको आप हेपेटाइटिस बी से बचा सकते हैं। तो इस तरह से अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, लाइफस्टाइल को आप मॉडिफाई करके अपने अल्कोहल अगर नहीं पीते हैं तो आप उसको भी बचा सकते हैं। डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करके आप किडनी फेलियर से बच सकते हैं। तो इनको भी फिर हमें अंगदान को बढ़ाने की जरूरत है। मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर, भारत सरकार ने ध्येय रखा है कि हर स्टेट में कम से कम एक मल्टी ऑर्गन सरकारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट अस्पताल के अंदर मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर होना चाहिए। और हर ट्रॉमा सेंटर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी एक ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर, बिकॉज वहां हर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जिससे कि आप ऑर्गन डोनेशन करवा सकते हैं।
हमें आगे के लिए डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ, जो कि हार्ट रुकने के बाद भी अंग दान हो सकते हैं, जो कि 1-2 सेंटर कर पा रहा है हमारे देश में भी, पीजीआई चंडीगढ़ कर पा रहा है, जिसमें यूजुअली किडनी दान होती है, लेकिन वहां पे ऑलरेडी सिस्टम्स प्लेस होने चाहिए, बहुत एफिशिएंट टीम चाहिए, तब हो सकता है। लेकिन अभी प्रैक्टिकली ब्रेन स्टेम के बाद ही जब पेशेंट आईसीयू में होता है तभी अंगदान की पॉसिबिलिटी है। अंगदान घर पे डेथ में नहीं कराया जा सकता, सिर्फ वहां पे टिश्यू दान होता है। 6 घंटे के अंदर आप टिश्यूज दान करा सकते हैं मृत्यु उपरांत, लेकिन अंग दान के लिए पेशेंट आईसीयू के अंदर होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम पे होना चाहिए, वेंटिलेटर पे होना चाहिए ऑलरेडी, तभी अंगदान की पॉसिबिलिटी है। कई बार लोग फोन करते हैं, जी मेरे घर पे डेथ हो गई, मुझे किडनी दान करनी है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। सिर्फ आप टिश्यूज दान करा सकते हैं 6 घंटे के अंदर। कॉर्निया दान हो सकता है, आईज डोनेट हो सकती हैं, तो वो चीजें, स्किन डोनेट हो सकती है, और स्किन को बैंकिंग, इनको टिश्यूज को हम बैंक भी कर सकते हैं, मतलब स्किन को 5 साल तक हम बैंक कर सकते हैं। कॉर्निया को लगभग 10 दिन तक हम रख सकते हैं फ्लूइड के अंदर, जो कि टाइमली फिर, लेकिन ऑर्गन्स जैसे ही डोनेट होते हैं इमरजेंसी हो जाती है, वी हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। तो वो एक स्वैप डोनेशन की भी बात कर रहे हैं कि अदला बदली, जो अनमैच्ड डोनर्स हैं, स्टैंडर्ड्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा, और ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। अब हम बात करते हैं क्या, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि मृत्यु जो है अवश्यम भावी है, मृत्यु को कोई भी उसको रोक नहीं सकता, मृत्यु तो होनी ही होनी है, तो डेथ इज समथिंग विच इज इनएविटेबल। पर क्या मृत्यु के उपरांत जीवन है संभव? हम कहते हैं बिल्कुल है। और अगर आप अंगदान के बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल है। तो वाई बर्न और बरी व्हेन वी हैव ऑप्शन टू डोनेट? क्यों हम जलाएं और क्यों हम दबाएं अंगों को, अगर हमारे पास डोनेट करने का अगर ऑप्शन है तो हमें अपने अंगों को स्वर्ग में नहीं ले जाना है, हमें उनको सिर्फ आत्मा चाहिए। अंग यहीं के हैं, यहीं से बने हैं, और वो यहीं पे छोड़ के हम जाएं तो, और दूसरों की जान बचाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स, ये मेन मोटो है हमारा। अंग दान जीवन दान, तो ये स्लोगन राजस्थान से ही आया था, एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान। और अभी हम लोग एक और स्लोगन हमने इसमें ऐड किया है कि पुण्य मिले सब दान से, पुण्य और जीवन दोनों मिले अंगदान से। तो अंगदान के बारे में जरूर सोचें। तो टू गिव ए पुश टू द ऑर्गन डोनेशन, ये आधार लिंक्ड प्लेज जो कि यहाँ पे डिस्प्ले भी किया गया है, क्यूआर कोड, और ये इस तरह से एक सर्टिफिकेट, और अभी तक 17 सितंबर से लगभग 5 महीने को होने को आए हैं, 1,40,000 1,41,000 से ज्यादा लोग इसकी प्लेज ले चुके हैं पूरे देश में, और राजस्थान उसमें अग्रणी है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो धन्यवाद बहुत बहुत। सो आपने शायद वो प्लेज का अगर वीडियो नहीं देखा तो 1 मिनट का वीडियो है, वो मैं दिखा सकता हूँ आपको कि कैसे हम लोग प्लेज करते हैं। अगर दिखाना है तो दिखा देते हैं। फाइनल मात्र 5 सिंपल स्टेप्स हैं। वेबसाइट पे जाना है noto.abdm.gov.in। यहाँ पे जब वेबसाइट खुलेगी तो आप रजिस्टर फॉर प्लेज करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। आप अपने पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालेंगे, और जैसे ही आप प्लेज करते हैं वो मैसेज आपके कॉन्टेक्ट वाले के पास भी जाता है। ये सेकंड ओटीपी अभी हटा दिया गया है, ये नहीं है, जरूरत है। और आपका सर्टिफिकेट जैसे कोविड का सर्टिफिकेट आता था वैसे डाउनलोड हो जाता है, जो कि नेशनल ट्राई कलर, जो हमारा प्यारा झंडा है, उसके 3 कलर में ये सर्टिफिकेट आपकी फोटो के साथ में, जो आधार से फोटो ली जाती है, वहां से आ जाता है। अगर मैम इजाजत दे तो एक ऑर्गन ट्रांसपोर्ट का वीडियो मैम दिखा दें, 2-3 मिनट का है, थोड़ा सा हेल्प। हाँ, ओके, सो वी कैन जस्ट स्किप दैट। ओके।
शेयर कर देंगे, मैंने दे दिया है तो जी। सो धन्यवाद बहुत बहुत, और मैं फिर से बधाई देता हूँ राजस्थान सरकार को कि उन्होंने इस स्टेट लेवल वर्कशॉप को, सेंसिटाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद सर। आप हमारे मैम के मार्गदर्शन में आयोजित सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप पे मैम के माध्यम से निमंत्रण भिजवाने पे तुरंत आपने निमंत्रण स्वीकार किया और कल हमारे साथ आ गए जयपुर में, और आपने पूरा समय देने का हमें प्रोमिस किया, शाम तक आप टेक्निक सेशन में रहेंगे। मेरी लाइफ की मैं आपको मेरी लाइफ की बात शेयर करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, पब्लिक हेल्थ के आदमी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया है। हमेशा वर्कशॉप होती है, प्रेशर ये आता है कि मेरा नाम काटो, मेरा नाम काटो, मेरा नाम काटो। ये पहली वर्कशॉप मेरी लाइफ में देखी है। हमारे हाई लेवल पे भी अप्रोच आ रही है और हमारे पास भी आ रही है, मेरा नाम जोड़ो, मेरा नाम जोड़ो, मेरा नाम जोड़ो। ये सफलता की तरफ अग्रसित होने वाली चीज मैंने देखी है मेरे लाइफ के अंदर। जब अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की, राजस्थान लीडिंग कर रहा है, तो एक चीज और अपने राजस्थान के हिस्से में जाती है जिनको भी शेयर करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने राजस्थान का ऑर्गन डोनेशन के संबंध में नाम रोशन किया है, उनका नाम लेंगे, उनको मोमेंटो भी मैम से मार्गदर्शन लेंगे। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा अमित कुमार जी, हितेश शर्मा जी स्टेज पे आए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पार्ट ट्रांसप्लांट गेम कंपटीशन हुआ था और उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। उनको मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से, एसीएस मैम के माध्यम से उनको मोमेंटो भेंट करेंगे। आप आइए। ऑर्गन डोनेशन के संबंध में मैं बीसीएमओ भी रहा, 5.5 साल सीएमएचओ भी रह लिया, आरसीएचओ भी रह लिया। मेरे को खुद को पता नहीं था ऑर्गन डोनेशन का क्या सिस्टम होता है, किस हिसाब से ऑर्गन डोनेशन होता है। मेडिकल डायरेक्टरेट में रहे, माननीय मैम की मार्गदर्शन से जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जुलाई पिछले साल से, और माननीय मैम के मार्गदर्शन में इसका इतना ज्यादा सेंसिटाइजेशन हो गया। आज हमारे किसी भी सीएमएचओ से बात करें, हमारे डिप्टी सीएमएचओ से बात करें, वो नोटों की शपथ लेना भी बता देंगे और किस टाइप से होता है वो भी बता देंगे। नहीं, पहले हमें डॉक्टरों को मैम पता नहीं था कि कैसे ऑर्गन डोनेशन के संबंध में आगे बढ़ना होता है। ये मैम आप राजस्थान के अंदर एक इतिहास जो ऑर्गन डोनेशन के बारे में लिखा जाएगा, वो मैम आपके मार्गदर्शन के कारण लिखा जाएगा। मैं मैम से आग्रह करूंगा हमें आए और मार्गदर्शन प्रदान करें। आज के इस ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वर्कशॉप में पधारे सम्मानित मंच पर जो विराजे हैं, मेरे एस्टीम्ड कोलीग्स और बाहर से पधारे अधिकारीगण, डॉक्टर जितेंद्र सोनी एमडी एनएचएम, शिव नकाटे कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर अनिल कुमार डायरेक्टर नोटो, डॉक्टर सुधीर भंडारी वीसी आरयूएचएस, डॉक्टर श्रॉफ जो कि डायरेक्टर मोहन फाउंडेशन चेन्नई से पधारे हैं, डॉक्टर रवि प्रकाश डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ, डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी डायरेक्टर आरसीएच, सभागार में बैठे सभी अधिकारीगण, डॉक्टर्स, ललिता जी, भावना जी, मीडिया के सभी जो प्रतिनिधिगण यहाँ पे हैं, एनजीओ से आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, और मुझे बताया कि जिलों से भी सीएमएचओज और मेडिकल कॉलेजेस की टीम्स जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है एनएचएम के पोर्टल से और यूट्यूब पे भी हो रही है। आप सभी को वेलकम करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। आप जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो ये विषय है, ये इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और आज के इतना सुंदर एक कार्यक्रम बन पाया आप सबकी भागीदारी से। आई एम डीपली ग्रेटफुल
for the trouble all of you have taken to come and contribute to this program. मैं भूल ना जाऊं, सबसे ज्यादा हमारे जो उत्साही टीम है, डॉक्टर धोलपुरिया जो जॉइंट डायरेक्टर हैं टोबैको कंट्रोल के, लेकिन इतने मन से इसमें जुड़े हैं कि मुझे लगता है कि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए एक पर्याय ही बन गए हैं, एंड ही इज बिकम द एम्बेसडर फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इन राजस्थान. डॉक्टर रश्मि एंड भावना जी, आपने इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया और इतने शॉर्ट टाइम में इसको ऑर्गेनाइज किया. मैं आपके लिए भी ग्रेटफुल हूँ. जो लोग बाहर से जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि राजस्थान के लिए वास्तव में एक ये संतोष का विषय है कि हेल्थ में जहां हम बीमारू राज्यों की श्रेणी में आते थे, वहां सतत प्रयास से और पॉलिटिकल गाइडेंस के साथ हम लोग एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं. हम ये भी सोचते हैं शायद कि क्या हम मॉडल हेल्थ स्टेट के रूप में जाने जा सकते हैं. हेल्थ में 7.4% ऑफ द बजट अगर हेल्थ को मिल रहा है तो निश्चित तौर पे हमारे लिए ये एक बहुत गर्व और संतोष का विषय. और इसी से आप देखें कि राजस्थान में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, not only the buildings, the health facilities, but even the manpower, both doctors and nursing, is much ahead of the national average. In fact, जिन indicators पे हम कभी किसी जमाने में struggle किया करते थे, maternal mortality ratio, child mortality ratio, immunization, institutional deliveries, क्योंकि हमारा राज्य इतना बड़ा फैला हुआ है और भौगोलिक उसमें इतनी विषमताएं हैं, तो जिन इंडिकेटर्स से हम स्ट्रगल करते थे, तो वी आर लीडिंग इन मेनी ऑफ देम एंड ऑलमोस्ट कमिंग टू टर्म्स एट द नेशनल एवरेज. तो ऐसे उसमें जहां अभी जो नया डिस्पेंसेशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य के क्षेत्र के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है. और आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमने करीब 2,500 हॉस्पिटल्स का निरीक्षण पिछले 3 सप्ताह में हुआ है. ये चीज आप भारत सरकार में भी बता सकते हैं कि ना केवल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर्स, एडीएम्स, एसडीएम्स, तहसीलदार्स, सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट, मेरी टीम्स, तो सघन निरीक्षण हो रहा है. और हम हॉस्पिटल्स को पेशेंट सेंट्रिक बनाना चाहते हैं कि ठीक है, बिल्डिंग अच्छी है आपकी, लेकिन वहाँ पेशेंट के लिए साफ चद्दरें हैं या नहीं, टॉयलेट साफ हैं या नहीं, ऐसे करके पूरा हमारी एक डिटेल चेकलिस्ट है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हेल्थ इज नाउ गेटिंग द अटेंशन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो मुझे लगता है कि ऐसे में हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम एक नई जो माइलस्टोन है उस तरफ बढ़े. और यहाँ मैं विद ऑल ह्यूमिलिटी ये भी बताना चाहूंगी कि आज की तारीख में मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एक ही अधिकारी के पास है, तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन वाले इश्यूज हैं वो भी हमारे लिए आसान हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कि मेरी पूरी टीम जो यहाँ हमारे साथ इस समय जुड़ी है, मेडिकल एंड हेल्थ की और मेडिकल कॉलेजेस की, वो इस बात को समझे कि आज जो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, फंड्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पॉलिटिकल एक गाइडेंस है, सपोर्ट है और नई अपॉर्चुनिटीज हैं. हमने जो काम पिछले 6 महीने में किया, आपने भी बताया कि हम नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा हैं. वी आर लीडिंग इन दी प्लेजेस फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट. एक प्राइवेट पेन को कैसे हम एक ब्लेसिंग के रूप में ले जा सकते हैं, ये एक प्रोग्राम उसको परिलक्षित करता है. और मेरे ख्याल से ललिता जी इस बात को समझती हैं, एंड अ लॉट ऑफ अस हु आर कनेक्टेड विद दिस, इवन धौलपुरिया जी, आई वुड से टू एन एक्सटेंट. मरीज के लिए तो डॉक्टर ही भगवान है, और मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप एक व्यक्ति जो कि मृत्यु के बिल्कुल समीप है और स्ट्रगल कर रहा है, और इतनी उसकी लाइफ जो है बोझिल हो जाती है, डेस्परेशन इतना हो जाता है, तो मेडिकल प्रोफिशिएंसी तो ये कहती है कि हाँ, हम आपको नया जीवन दे सकते हैं. तो अब चैलेंज कहाँ है? तो एक तो हुआ कि सोशल मोबिलाइजेशन. हमने पिछले 6 महीने में जो किया, वो हमने ऑर्गन डोनेशन के प्रति एक सेंसिटाइजेशन किया, तो जनता की तरफ से एक एक्सेप्टेंस आया. ये एक ऐसा विषय था जिसके बारे में ना तो जानकारी थी और ना ही कोई एक ऐसी प्रतिबद्धता थी. लेकिन हमने देखा राजस्थान में, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम तो भामाशाहों का प्रदेश हैं,
और यहाँ दानदाता भामाशाह जो है, और यहाँ की तो एक संस्कृति है, विरासत ही है कि दान देने की। तो ऐसे में जब ऑर्गन डोनेशन का और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक हमने मुहिम की तरह इसको छेड़ा, तो इतना अच्छा उसका हमको वो मिला कि देखिए आप खुद ही कह रहे हैं कि 25% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन इससे जुड़ गई। तो ये सारा साधुवाद इस प्रदेश की जनता को है कि जो को इस ऐसे प्रोग्राम के जैसे ही उनको भनक लगी तो वो आगे आए और उन्होंने अपनी प्लेजेस दी। तो ये उनके लिए, सबके लिए साधुवाद है। Now for medical and health as a department and medical education as a department, अब हमारे पास चैलेंज है कि इसको हम ट्रांसप्लांट्स में ट्रांसफॉर्म करें। जैसे कि कोई पौधा लगाते हैं तो मिट्टी आपने खोद के पहले आपने सॉइल को तैयार किया, वो तैयारी आपकी हो गई कि ग्राउंड पे जो है एक भावना बन गई, एक जानकारी बन गई, प्रतिबद्धता बन गई कि हाँ हम ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार। अब हमारे इंस्टीट्यूशंस कितने तैयार हैं, हमारी डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी कितनी तैयार है उसको एक्चुअल्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो आपने देखा दोनों वक्ताओं ने, डॉक्टर सुनील श्रॉफ ने और डॉक्टर अनिल कुमार ने बहुत डिटेल में हमको बताया कि अगर प्रदेश में 14,000 ट्रांसप्लांट्स की प्रति वर्ष आवश्यकता है तो अभी हम 5 ही कर पा रहे हैं। हम लोग वी टेक प्राइड इन आवर हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, हमारे पास बेस्ट ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी है। तो मुझे लगता है कि इस वर्कशॉप के माध्यम से हम ना केवल मोटिवेशन कर रहे हैं बल्कि आगे का एक रोड मैप बनाएंगे
मैं डायरेक्टर पीएच डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर साहब से आग्रह करूंगा वो आए और सर। सम्मानित मंच, आदरणीय एसीएस मैम श्रीमती शुभ्रा सिंह जी, नोटो डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार जी, मैनेजिंग ट्रस्टी मोहन फाउंडेशन डॉक्टर सुनील श्रॉफ जी, एमडी एनएचएम सर, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन वीसी आरयूएचएस सर एंड डायरेक्टर आरसीएच, अंगदान एवं प्रत्यारोपण आमुखीकरण कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारीगण, डेलीगेट्स और मीडिया के साथीगण, आप सबको जीवन बचाना मानवता का उत्कर्ष है, हम सब लोग जानते हैं। इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई और नहीं हो सकता। अंगदान से जीवनदान की इस पुनित मुहिम को आगे बढ़ाने की दिशा में आयोजित इस वर्कशॉप में आप सबके भाग लेने के लिए, बाहर से आने वाले अतिथियों को यहाँ पर कष्ट उठा के इसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय श्रीमती शुभ्रा सिंह जी, आपका धन्यवाद करते हुए हम सब गौरवान्वित हैं। आपके प्रयासों से राजस्थान ने अंगदान के क्षेत्र में देश भर में एक नई पहचान कायम की है। कार्यशाला में उपस्थित एमडी एनएचएम सर, वीसी आरयूएचएस सर, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, नोटो के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार जी, मोहन फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर सुनील श्रॉफ जी, आप सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यशाला में उपस्थित सभी चिकित्सा विशेषज्ञ, प्रतिभागी, मीडिया के बंधु एवं सभी गणमान्य जन, आप सबका धन्यवाद करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है। मैं ये कामना करता हूं कि जिस उद्देश्य से ये वर्कशॉप आयोजित की गई है उस उद्देश्य में हम सफल हों, और जहां राजस्थान ने प्लेज लेने में देश में नाम अग्रणी राज्य बना है, उसी तरह हम इस अभियान को, इस कार्यक्रम को, इस वर्कशॉप के माध्यम से गति प्रदान कर सकें, जो इसको आयोजित करने की हमारी मंशा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह करूंगा, टी ब्रेक का कार्यक्रम हमने रखा है। आप टी ब्रेक के पश्चात टेक्निकल सेशन चलेंगे और लंच के पश्चात में वापस कार्यक्रम से जुड़ेंगे टेक्निकल सेशन में। तो आप लोग जो टाइम फिक्स है उसमें आप टी ब्रेक वाला प्रोग्राम नीचे जो रखा है अपने डाइनिंग हॉल में करके टाइमली आए।
ये ना अभी टेक्निकल सेशन स्टार्ट होंगे, कई इश्यूज रहेंगे, हमारे बीच में एक्सपर्टीज भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं। आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, मन से करें। साथ ही माननीय एसीएस मैम लंच के बाद कंटिन्यू वर्कशॉप को करेंगे और माननीय मंत्री महोदय सोयामाधोपुर गए हुए हैं, उनका भी आने का मैसेज है। वो भी वहां से कोई गवर्नमेंट कार्य से जाना हो गया उनको, तो वो वहां से रवाना होकर लंच के बाद वो भी सीधे वर्कशॉप में पधारेंगे। आप लोग जो भी इश्यूज हो उसको सॉर्ट आउट करें, जिस टाइप के भी आपके क्वेश्चन हो वो भी पूछें। थैंक यू सर। गुड नमस्कार, गुड आफ्टरनून. So I'll be talking about what we should do to augment deceased organ donation in India. कि भारत में मृत्यु उपरांत अंगदान को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. कुछ तो मैंने मॉर्निंग के सेशन में बताया था, लेकिन कुछ मैं डेटा में रिपीट नहीं करूंगा. डेटा वाली स्लाइड्स में स्किप कर दूंगा इन द टाइम के अभाव की वजह से. ये मैं दिखा चुका हूं ऑलरेडी, ये भी आपको बता चुका हूं. ऑर्गन डोनेशन रेट हमारे देश में, ये स्लाइड नहीं दिखाई थी, ये थोड़ा सा ध्यान से समझें इसको, कि हमारी जो पॉपुलेशन है 1400 मिलियन है और हमारे यहाँ पे जो ऑर्गन डोनर नंबर है
पिछले साल का 1062 है जो अभी तक हमने वेरीफाई किया है। तो 1062 1400 मिलियन में अगर उसको ऑर्गन डोनर रेट को आप काउंट करोगे तो 0.75 आती है 2023 की ऑर्गन डोनर रेट, नंबर ऑफ डोनर्स पर मिलियन पॉपुलेशन। उससे पिछले साल ये 0.67 थी 1400 मिलियन के हिसाब से। तो ऑर्गन डोनर पर मिलियन हमारे देश में, अगर आप दूसरे कंट्रीज का देखें, स्पेन का जो 2022 का आंकड़ा है 47 है, उसके बाद यूएसए है, तो हम लोग लगभग 54th पोजीशन पे थे 94 कंट्रीज में जिन्होंने डेटा ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी को भेजा था। कितने सेंटर्स गवर्नमेंट में है, कितने प्राइवेट में है? ये जो नोटों के साथ लिंक्ड सेंटर्स हैं 838, इसमें लगभग अगर आप देखें किडनी में सिर्फ 71 सेंटर्स जो हैं गवर्नमेंट में है और 500 सेंटर्स प्राइवेट में है, तो 571 में। तो सिमिलरली लिवर में आप देखें सिर्फ 20 सेंटर्स जो हैं रजिस्टर्ड हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जो गवर्नमेंट में है, तो जो नोटों के साथ लिंक्ड है। कुछ हो सकता है कि नोटों के साथ अभी तक लिंक ना हुए हो, तो हार्ट में भी सिर्फ 22 हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले गिनती के एक आध कोई सेंटर हैं गवर्नमेंट में अभी आज की डेट में। लंग में 14 सेंटर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लंग ट्रांसप्लांट में भी गवर्नमेंट सेंटर बहुत ही कम कोई कर पा रहा है। तो हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी ऑफ द सेंटर्स अगर आप देखें तो लगभग 10 से 12% ही सरकारी अस्पतालों में है, ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में। इसी तरह से ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर्स में भी इसी तरह का आंकड़ा है, थोड़े से नंबर गवर्नमेंट में ज्यादा है लेकिन डोनेशन उतने नहीं हो पा रहे जिस पर्पज से हमने ये आंकड़ा मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। आई विल स्किप दी स्लाइड्स। ये भी मैं राजस्थान का आंकड़ा मैं दिखा चुका हूँ। राजस्थान में जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ 2% ही डोनेशन जो ट्रांसप्लांट जो हो पा रहे हैं वो सिर्फ डिसीज डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स जो डोनेट करते मृत्यु उपरांत उनसे हो पा रहे हैं। 98% लिविंग डोनर से हुए हैं पिछले साल जो है। तो 800 ट्रांसप्लांट जो हुए हैं 782 लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट हुए हैं और सिर्फ 18 ट्रांसप्लांट जो हैं डिसीज डोनेशन से हुए हैं। ये भी मैं दिखा चुका हूँ, ये इश्यूज चैलेंजेस में बता चुका हूँ। अभी हम आते हैं ब्रेन स्टेम डेथ। तो जहां तक आप सभी को मालूम है कि ब्रेन स्टेम एक एरिया है हमारे ब्रेन के अंदर, डॉक्टर दीपक गुप्ता उसमें थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, इसको जोड़ करके जो एरिया बनता है ब्रेन में वो ब्रेन स्टेम होता है। इस ब्रेन स्टेम के अंदर वाइटल हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। तो अगर वो ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाता है तो वो आदमी अपने आप ब्रीथ नहीं कर सकता, सांस नहीं ले सकता। तो ब्रेन स्टेम डेथ जो सिचुएशन है, that is the ideal situation when the organ donation can happen, because these patients are put on the ventilator and provided the support system, and when they are diagnosed as brain stem death, तो पहला जो स्टेप रहेगा कि आपके यहाँ पे ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए एक कमिटी होनी चाहिए जो कि लॉ में मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी टू हैव ए ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन कमिटी, जिसमें 4 डॉक्टर्स होते हैं। वन ऑफ देम इज ए इन चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल, वन ऑफ देम इज ए ट्रीटिंग डॉक्टर, एंड देयर आर 2 स्पेशलिस्ट। One of the specialists is neurospecialist, that is neurosurgeon or neurologist. If neurosurgeon or neurologist is not available, then anesthetist or an intensivist in his place can certify brain stem death. So जो ये दो, another category is the independent specialist who has been trained to do brain stem death certification, and all these specialists, both the doctors should not be part of the transplant team. Rather, any of these members of the brain stem death committee should not be part of the transplant team to avoid any conflict of interest. So these 2 categories of doctors, they should be certified, they should be approved from the appropriate authority. So these 2 doctors, they have to be approved by the licensing authority. So इनके लिए क्या करना होगा कि आपको कैसे लाइसेंस से अप्रूव कराना होगा? जो भी यहाँ पे आपके यहाँ पे ये एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, just take consent so that later on when they are part of the committee, they do not refuse brain stem death certification, and they have to be like available at the night time also.
and give a copy of their highest degree to the licensing authority, and licensing authority will issue a letter that they agree and they certify these experts as the part of the brainstem death committee. So that is the first step that you require to have a. In some of the state, it has been already notified to declare brainstem death mandatorily. Like Delhi also has issued, Maharashtra has also issued, Kerala, Tamil Nadu also. Tamil Nadu they have issued for government centers that it will be mandatory for government centers in Tamil Nadu to certify brainstem death. So then another thing is that it is mandatory to request for organ donation. Whenever there is a potential donor available in your ICU, it requesting for organ donation, raising the inquiry whether this person had pledged for organ donation anytime, that is mandatory. So, and who is responsible for this mandatory request? It is the doctor who is doing duty in the intensive care unit. He can take the help of the transplant coordinator, but the onus is on the doctor working in the intensive care unit to request for organ donation. As per law, the onus is on the doctor. So such kind of orders like Delhi government had issued that declaration of the brainstem death. Whenever there is a likely brainstem death person available, then the person on duty, the clinician on duty in the ICU, they will proceed for identification and initiate the procedure for certification of the brainstem death. So this kind of orders have been issued in Kerala also. It is also in Kerala order, they have mentioned that any non-transplant organ retrieval center, like where they can take assistance and support from any of the hospital, which is registered with the licensing authority for maintaining the brainstem death donor. Even if you don't have a brainstem death committee in your hospital, because the licensing authority maintains all the list of the approved brainstem death committees, brainstem death committee within a state can move from one hospital to another for certification of the brainstem death. It is a panel which is maintained by the licensing authority that is also permissible. That brainstem death committee from one, if requested by a non-transplant organ retrieval center, which is licensed, but usually it is a requirement that license will only be given if they have a brainstem death certifying committee. That is a requirement for a NTORC to be given license. And they can also take support from the nearby transplant center for maintaining the deceased donor within their institution. So, okay. So this is the order of Tamil Nadu similarly. So this is the board we advocate that you have to display such boards outside the ICU as well as in the strategic location in the hospital where you where it is mentioned that the doctor on duty is required by law to request for organ donation. So such kind of mandatory request board should be put up. And we also advocate that you should monitor these brainstem death certification. That is called audit of brainstem death. How many deaths have happened on ventilators? How many deaths in the ICU were declared to be brainstem death? How many out of the total brainstem death donation, how many families were approached? How many donations actually happened? How many were correctly monitored? This also I have talked the framework under which we work. Grants I have already told. Regarding the governing bodies, the Noto, Roto, Soto system, basically it is primarily the responsibility of the Soto to maintain all these waiting lists at the state level from the hospitals. So what we are moving forward from the Government of India side, we need to have one government multi-organ transplant at least in every state. And as the volume increases, it should be. And also we want to set up organ retrieval center in trauma centers as well as in medical colleges, dedicated transplant unit. One medical college may be having, six surgical units. Out of that, one unit can be dedicated for transplant, and only the faculty trained transplant should be recruited in that unit. So that is also the transplant units. If we have such dedicated transplant in the related department like urology and nephrology, and similarly
we should also need to focus on skilling, training, and capacity building. So basically, these guidelines are there in the law, that what is required to be registered as the, just 2-3 minutes more. Basically, what are the various actions which are required from the registered centers? If you are not registered, first of all, you need to seek license from the registering authority, that is the appropriate authority of the state, whether you want to register as a retrieval center or as a transplant center. You need to have a nodal officer, which is mandatory. So without nodal officer for organ donation, and it has to be a doctor, then you should have transplant coordinator identified for each intensive care unit where such donors would be available. You should have a brainstem death certification board approved by the licensing authority. These members of the brainstem death board, they should be trained. They may not be trained, they need to be trained. Required request display boards should be there, and you must include your neuro experts in all these trainings as well as in sensitization work. Then nodal officer is basically, what is the role? That they have to supervise the transplant coordinator, they have to organize all these CMEs, they have to compile the data, and they have to facilitate every problem which comes up. So then all potential recipients, they need to be registered. You should organize at least 1 day CME for all your staff. Awareness activities for public should be there in your institution, and ensure that systems and logistics for maintenance of the deceased donor, retrieval and transportation and storage are in place. Share the data with NOTO through ROTO and SOTO. This is the donor action program that we always say that every institution should have, for specific to its own institution. Who will identify the donor? Who will be certifying the brainstem death? Who will be informing the family members? Who will be doing the donor inquiry? Counseling will be done by whom? Consent will be taken by whom? Then donor screening, because donor has to be healthy before his organs are considered for donation. How the medical legal clearance will be obtained. How the deceased donor will be maintained. Arrangements for the OT whenever donor is available. Enter all the details in the online format. Inform the SOTO. SOTO will take care of its own part, that is the allocation, coordination, transport is also to be coordinated by SOTO. Then organ retrieval, preservation, packing, documentation, organ box, etc. they should be available. And then tissue retrieval. Don't forget tissues. If the organ donation is refused, ask for tissues. Tissues can be donated up to 6 hours. Body disposal, what norm will be followed. Medical legal cases, how the post-mortem will be done. For each of these steps, you need to have your own SOP specific to your own institution. That should be done. Run campaign, register the pledges. So that's all. I just wanted to highlight that what all needs to be done to establish a deceased organ donation program in your institution at the hospital level, and what all is required to be done. So I hope if you have any questions, I'm there to answer. Or okay, thank you. बुलाइए नेक्स्ट बुला दीजिए इसको कैसे करेंगे हाँ निकाल दो हो गया अभी डॉक्टर अनिल कुमार जी डायरेक्टर नोटो MOH FW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद डॉक्टर दीपक गुप्ता एम्स न्यू दिल्ली ये बताएंगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ की हाउ अर्ली इज अर्ली ब्रेन डेथ आइडेंटिफिकेशन, इसके बारे में बताएंगे। सर के लिए जोरदार तालियां। सर प्लीज।
इसमें चेयरपर्सन रहेंगे डॉक्टर देवेंद्र जी पुरोहित, न्यूरो सर्जन प्रोफेसर SMS मेडिकल कॉलेज, और डॉक्टर RC गुप्ता मेडिकल सुपरिटेंडेंट महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर। थैंक यू सर। प्लीज। Good afternoon, everyone. And first of all, I welcome you all after the tea session for the first technical sessions. And in this technical sessions, I first invite to Dr. Deepak Gupta. He is a senior neurosurgeon and director of the AIMS Delhi, and he will speak on the early identification, the key, how early is early brain death identification. Over to Dr. Deepak Gupta. Thank you, sir. It's a proud honor and privilege for me to be here. I think when you go out of India, if you ask about Rajasthan, किसी Westerner या European से पूछेगा, what do you know about Rajasthan? They say only one thing: land of kings, राजाओं का शहर. And I think if you look at the statistics of kind of organ donations, now अभी मुझे लगता है जितने भी हमारे kings हैं, they're in the southern part of India. Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, and some in the western part, Gujarat and Ahmedabad. Rest all is completely dry, and which includes the place where I come from, Delhi NCR. Very few numbers. Rajasthan again, very few numbers. Can I have a raise of hands? How many are the neurologists, intensivists, or for that matter, the rare breed neurosurgeons here? Okay, so we have some stakeholders. I'm thankful to Dr. Shroff for giving me this talk, actually, because I had to prepare this talk, you know. Normally, Dr. Shroff gives me topics which are, इधर आ नहीं रहा आपका सामने. It will not come on display there. So early, I would say a timely identification, not early, because early से लगता है कि शायद हम कुछ किसी चीज को push करने की कोशिश कर रहे हैं, you know. ये slide आगे नहीं जा रहा बेटा. All right. I think सबसे बड़ा problem organ donation का जो हमारी country में जो मुझे समझ आया, I'm in neurosurgery for last 25 years now, but what I have understood is we ourselves are not very sure about something called as a brainstem death, brain death, or a cardiac death. I mean, we believe that the death of a person is when there's a straight line of the ECG. You know, there was a time when people used to show a mirror to you. If there's some mist on the mirror, that means the person is alive. If the mist is not there, that means the person is dead. Then came those alas and stethoscope. People started doing it. Then came the ECG monitor. People look at the monitor flat line. And unfortunately, even today, most of us, including neurosurgeons, neurologists, they still look for the straight line to declare somebody as dead. But we have to understand that, you know, when we are resuscitating such a patient, I have seen so many patients in my ICU, brain dead persons, having an arrest, people doing a cardiac massage for 30 minutes. What for? Nonsense. If you as a doctor, somebody who is MBBS, MD or MS, and for that matter, MCH, if you cannot certify somebody as brain dead, you have no business to be having a degree of Government of India or the medical IMA so-called. It's so simple. Why? Because the diagnosis of brain death is a clinical diagnosis. You don't require anything to declare somebody as brain dead. All you need a CT scanner in your hospital and an arterial blood gas ABG machine in your hospital and some neurons inside you and some willingness to facilitate the process. That's it. उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए. It's so simple. It's a clinical diagnosis. And you know, normally what so happens, sometimes we believe that the person will develop rigor mortis, he will turn blue and all that. This does not happen in the brain death, you know, because the circulation is still maintained. Unfortunately, at this podium, I can say with my personal experience, I have visited some major leading academic hospitals in my country, wherein I have seen patients with the rigor mortis, traumatic brain injury patients developing rigor mortis in the ICU, undiagnosed. हम लोग अभी डॉक्टर श्रॉफ ने लेक्चर लिया अर्ली आइडेंटिफिकेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट लेट. Patients developed rigor mortis in the ICU. Nobody even bothers to see. So this is the state of affairs as of today.
My professor, Professor A.K. Banerjee, was the person who kind of pushed in the program. And in fact, the first cardiac transplant which happened in 1994, Professor A.K. Banerjee and Dr. Mahapatra, they were the biggest kind of supporter for this. And Dr. Banerjee always told me one thing, this is how you should tell them. A brain dead person is nothing but a cadaver with a beating heart. If we understand this, the simple English, I think we will never ever falter in our diagnosis of this condition. The entire process shifts, from the management of the brain to the management of the liver, heart and the kidney once a person dies. जैसे आपकी किसी की मृत्यु होती है तो ब्रेन डेथ अगर होती है तो आपका मैनेजमेंट इंट्राक्रेनियल से एक्स्ट्राक्रेनियल पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे आपकी जिद्दोजहद शुरू होती है कि आपको हाउ अर्ली यू हैव टू इंटरवीन टू डायग्नोज एंड टू स्टार्ट. एक्चुअली जो आईसीयू का मैनेजमेंट किसी लिविंग पर्सन का चलता है, सेम मैनेजमेंट इज कंटिन्यूड when the person reaches a stage of brain death and subsequently for the vitality of the organs. And ये issue इसलिए इतना important है. If you look at the waiting list, I don't have to tell it, you must have seen it umpteen number of times. There's a huge shortage of organs in our country. End stage diseases are increasing in our country. So I think this is needless to say, early identification is very, very important. अगर देखा जाए तो if neurologists, neurosurgeons, surgeons come together and join hands, I think we can easily provide out of 1.5 लाख जो हमारी डेथ होती है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से, उसमें कम से कम अगर 50,000 लोगों में भी हम ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन करते हैं, so I think it's a big number we can contribute to our country. I mean, we are self-fulfilling nations in terms of the organs. If you look, stroke patients, there are hardly any stroke deaths certified and declared in our country. If you look at the statistics, number of stroke patients are very, very less. So I think neurologists also need to come forward to this cause. We all know about it, the ischemia time, heart ka kitna hai, kidney, liver, I don't need to say it, but I think this time is also affected by the time you spend in the preparation of that person or the so-called the potential donor before, because so many organs, they get wasted if you do not manage in the correct way. Let's say, for example, if you do not manage the sodium so well, then probably the liver will not be fit enough for transplantation. If you give a lot of vasopressors to the person when that person is brain dead, the kidney may not be suitable. If you do not manage the heart well, the heart may not be suitable. The same way holds true for the lungs also. So I think this time window of 4 to 24 hours is affected indirectly by how early you manage your patients. So ICU is the place wherein you can manage. If you look at it very carefully, out of 100 ICU deaths, 10 donors are there as a quality check of a hospital. Now, this is something extremely important for all neurosurgeons, intensivists to understand. Initially, when a patient comes in the casualty, जब भी आपके पास कोई casualty में patient आएगा, सबसे पहले उसको hypertension होता है. The moment the patient reaches the ICU, trust me, I've seen patients having a BP of 50, 60. They are all hypertensive. And that is the time most of us give up. Do nothing. But that is the time wherein our roles comes into the play. जहाँ हमें एक्ट करना है वहां पे हम लोग एक्ट नहीं, हम बोलते हैं कि 40-50 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, let him go. But if you use some neurons of you and have some patience, you can really prolong these patients for 3, 4, 5 days. All these patients used to die in my hospital. But now with some protocols, starting some methylprednisolone, taking care of the fluids, we're able to pull on these patients for 3 to 5 days very easily. Nothing happens to any of these patients. So why we need early identification? Very simple. You must have heard many people, and मेरे बाद में आप कई लोगों को सुनोगे कि one person can save 8 lives. आप मुझे बताइए कहाँ आपने देखा है कि 8 नई जिंदगी मिलती है किसी एक पेशेंट से? If you look at the data from All India Institute of Medical Sciences, Government of India, it's 3. We are able to save only 3 lives from one person. And why so? Mostly we are able to save liver and 2 kidneys. That's it. We have to go further. Heart, lungs, it should be our target. There's 50,000 hearts are required in our country as of today, but hardly any heart transplants take place. So I think we have to upgrade ourselves. We have to increase the procurement index of our hospital, and this can only happen when we act in time. There's something called as silent brain death. I don't know how many of you have heard this word. Silent brain death is something like a person of traumatic brain injury comes to you, and you are not able to identify in time, and all of a sudden then this person has a circulatory arrest, and uske aap likhte ho death certificate mein aap likhte ho way of death is cardiac death. Nonsense.
Actually, it's a brain death which you have completely missed altogether. Ultimately, हम सबको जाना है by something called as a stoppage of the blood flow to the brain. You know, if I have a cardiac arrest, my blood circulation to the brain will stop. If I have a brain death, even in that condition, my circulation to the brain stops. In both the conditions, that is because of the lack of blood flow. So many, it's a quality check of the ICU. How many admissions are there in your ICU and how many deaths you are declaring, and then how many deaths you are actually certifying. So they say if it is more than 50% of the total ICU admissions आपके अगर होते हैं, उसमें आपने अगर 50% से ज़्यादा आपने brain death identify करे हैं, what we are talking about is identification. I'm not even talking about certification. Then that's a good ICU. Unfortunately, I asked Dr. Anil Kumar previously, you know, how many brain death certifications you get from your different countries? Zero, 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 all over the country. क्या आपको लगता है कि वहाँ डेथ नहीं होती है? Everywhere. We all are human beings. We all have severe head injuries and we all die one day. So this thing is something which needs to be very, very. So I always say follow a rule of 6H rule. You know, somebody ask you कि आपको कब स्टार्ट करना है. कोई पेशेंट आपकी आईसीयू में अगर एडमिट होता है सीवियर हेड ट्रॉमा से और M1 पेशेंट अगर आता है तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर मिनिमम 6 hours बिफोर यू डू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन. फॉर डॉक्टर श्रॉफ, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस इज जस्ट माय थॉट प्रोसेस. So you have to wait for 6 hours before you start the clinical examination. Similarly, when you do the test, the 2 tests for the apnea, 6 hours again. And when you want to do an ancillary test in somebody, आपने clinical examination करा, कुछ test आप नहीं कर पाए, then again you have to wait for 6 hours before you do this thing. Many of the head injury patients, they die after decompressionectomy. Again, you have to wait for 6 hours before you do the ancillary test for the absence of the cerebral blood flow. That's simple, basic way to remember and to teach to the people. So at AIMS Trauma Center, what we have started is something called as a GIVE. GIVE is what? Any person coming to the ICU with GCS3, that means comatose and even V1, M1 or intubated, ventilated, and I signs MSED means pupils fixed dilated. Any patient that comes, my resident on call has to send a WhatsApp message to me in a common WhatsApp group where all the residents who are posted in the ward, ICU and the ED, they are there. And it is mandatory for them to send a message. And Manish will agree, if a neurosurgical resident does not send a message, then what happens to him? So what I'm trying to say is that, you have to enforce some compliance by your team also. So this is what we did, a big change. And we took this example from PGI Chandigarh. They used to do it. We learned from them. And then we started and the things changed. We had less than 5 donations per year. Now it's 15 donations happening for the last 2 consecutive years at AIMS. And we had 3 donations in January itself. So things have changed only by this simple change. So this is for early identification or by early screening. Then you have to exclude reversible causes very early. You know, so many times patients are on midazolam, fentanyl, very commonly. Sometimes you give thiopental. You must know the half-life of these drugs. You have to wait for 5 half-lives before you can begin. अगर कोई patient acute alcoholic intoxication के लिए आता है तो you have to wait for minimum 12 to 24 hours. किसी patient का midazolam अगर आपने stop किया, then you have to wait for minimum of 6 hours. किसी को steroid अगर barbiturate चल रही है, you have to wait for 24 hours before you can do the test. So you should know your subject also very well before you kind of talk about how early and how late. You should be aware about this peripheral nerve stimulator is there in most of the ICUs. किसी भी पेशेंट में अगर आपको relaxants को rule out करना है कि आपने किसी को relaxants दिए and the patient is under the influence of relaxant or not, then you have to do this train of 4 stimuli testing. Then the CT scan, everybody knows how to read a CT scan. It's a completely black brain. This is the first thing to be done, and this should be done as early as possible for early identification. Okay, so early CT is very, very important in all patients before you do it. Then you have to do early identification and timely correction of hemodynamic instability. बहुत सारे patient जो आपके आते हैं hemodynamic instability के आते हैं, and trust me, it's very, very easy to correct. Don't be scared of hypertension. If a patient comes to you with very high blood pressure, just give them short-acting SNP and then rapidly stop it. Don't give long-acting agents like so many times I've seen people giving 20 milligram of amlodipine to a patient with a blood pressure of 120, and then they never come back. They crash. All you have to do is just give a baby dose of SNP, sodium nitroprusside, esmolol, short-acting. And then the person will naturally automatically go in that second phase of hypertension
for which you have to start them on vasopressors and other drugs. I'll talk about it in my next talk. Then spontaneous respirations. Most of the times, मेरी residency में यही होता था कि सुबह राउंड ले रहे होते, एक एनेस्थेटिस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट कलीग आके बोलता था, अरे उसका ना वेंटिलेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने 12 का रेट सेट करा हुआ है और मॉनिटर पे आपका 14 का रेट आ रहा है. उसके बाद you go to the next bed, next bed, next bed, and then you come next day. Some other patient is there on that bed because you have missed that patient. If you know there's something called as a ventilator auto-cycling, you have to play around with the trigger of the ventilator, change the ventilator mode. And nowadays, the modern ventilators which are available, you can actually see the trace pattern. You can see on this middle figure, the orange, the amber color thing which is coming up. It tells you this patient is having a spontaneous respiration. On the other side, you see the patient is not having a spontaneous respiration. So many times you should know your subject also very, very well before you say somebody उसको spontaneous respiration है या नहीं है. और कभी अगर doubt है तो you can transiently disconnect the patient from the ventilator for 30 seconds and see what is happening. You do it for the apnea test also for 6-minute disconnection. So अगर हम लोग किसी patient का spontaneous respiration है या नहीं है, ये भी नहीं पता लगा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? This is called early identification. Temperature management. I think the best temperature management is prevention of hypothermia. एक बार किसी पेशेंट को हाइपोथर्मिया अगर हो जाता है, उसके बाद उसको करेक्ट करना इट बिकम्स ए मोर चैलेंजिंग टास्क. मेरे टाइमर हो गया, आई थिंक 12 मिनट हो गया मेरा. All right. So temperature management is almost 100% of the patients who are brain dead, they are hypothermic. Trust me. Almost 100% of the patients. So you should know how to correct them. So there is a difference between primary hypothermia after brain death and secondary hypothermia. So many times we are treating these patients with hypothermia. In those patients, you have to wait for 24 hours. Otherwise, आप उनको जल्दी जैसे ही आपका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस यानी कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट क्रॉस करता है, आप उनको अपने टेस्टिंग के लिए ले सकते हैं. Then I think early identification and timely intervention is needed for handling of the families also. That is the most important thing जो हम लोग usually miss out कर जाते हैं. तो हमारी जो टीम होती है, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, नर्सिस, MSSO जो होते हैं, वो कैजुअलिटी के अंदर ही पेशेंट की फैमिली से बात करना शुरू कर देते हैं. That is also extremely, I'm sure Lalita ji will talk about it, because so many times it so happens कि पेशेंट की फैमिली में इतना ग्रीफ एपिसोड हुआ है एंड उनको बेड नहीं मिलता, उनको सीटी स्कैन के लिए धक्के खाने पड़ते हैं. So they become anti to anything and everything about the hospital. So I think early handling of the family is extremely important for this particular task. So many times your resident, your nurses, they will send you these pictures of the patient की patient का pupils mid size है but उसका react नहीं कर रहा. They have got queries and you have to respond to them immediately. So your phone should be on all the time, and the person who's taking the lead in the program, he should be competent enough to tell कि हाँ जी ये people mid dilated है, कोई फर्क नहीं पड़ता. It is not reacting to the light. That is more important. That is the absent brainstem reflex. Okay. Sometimes you have this Lazarus fears, I call it. You know, patient का कोई थोड़ा सा टांग चल गया, कुछ हो गया. अगर आपको पता है कि Lazarus response क्या होता है, तो आप उस चीजों को मिस नहीं करेंगे. So what is the role of senior administrator or faculties in the early identification? I think the most important role of all the senior people sitting here on my back, on my front, is to facilitate and not to obstruct the brainstem death certification and organ donation program, and to emerge as team leaders. I was amply supported by Dr. Anil Kumar, Dr. Sunil Shroff, and I began at a very humble note, and now because of their push and their guidance, I'm here to stand at this podium to share my views on this. I think we should facilitate, we should be convinced. It's a very noble cause. It has got nothing to do on the integrity or the competence of a neurosurgeon if mode certifications take place in your ICU. Patients come as non-salvageables with the devastating injuries, we have to understand. And I think if not we, who will do it? We are the best people to come forward to certify brain deaths in a timely fashion. I'm very much convinced about it. And this is what we are aiming for, to increase the numbers. And we have a support from the government, from the PM. What else we can ask for? At Trauma Center, these are the statistics. If you look at very carefully, we had 8 donations in 2016, 5, 3, 3, something like what is happening in the whole of Rajasthan. I mean, I saw this yesterday only. I mean, the data of AIMS Trauma Center is roughly exactly the trend which the whole of Rajasthan state had, you know, 8, 8, 9.
You had 8 donations in 2016. We had 8 donations in 2016. But if you look at the 2022 and onwards, we picked up. And we would like to maintain the same trend. And I'm there to support you fully, whatever little we have learned by burning our hands in this program. And we started the audit also of the program. So this is all is needed, as I said, a CT scanner. I'm sure all the hospitals have it, AIMS, Jodhpur, SMS, and all the hospitals which are there, and imaging machines, and some committed doctors who can identify this potential or the possible brain death in a timely fashion. You don't need an EEG machine or anything to certify somebody as brain death. So I always say, let's grow together as a society. And what is society? Screening for the possible or the potential donors and doing the screening test to the eligible donors, optimizing the patients for the brain death certifications and donor organs, certifying brain death. You should know your forms and inform the irreversibility to the families. Most important thing, it has to be done by us. The person under whom the patient is admitted, it's my duty, Dr. Manish's duty, Dr. D.K. Purohit's duty, or anybody who's in charge, let it be a neurologist, to inform about the irreversibility. Once you know that the person you've done a test, one test, two tests, you should be bold enough to stand in front of the family and say, I have certified this patient, this person is brain dead, and it's an irreversible condition. They will ask you, can we take this patient for some transplant to All Indian Institute of Medical Sciences abroad? Tell them no. There have been no cases of anybody coming back to the normalcy or life or anything once you have certified somebody as brain death. Extremely, extremely important on our part. I think with this, I'll close my talk. Thank you so much. And if there are any questions, most welcome. Thank you, Dr. Deepak Gupta. You have explained the complex topic in a very simplified way, and your talk will certainly facilitate an increasing number of the brain death certification as well as the donor optimization. Our next topic is brain death testing. It's a very important topic to all the ICU doctors and administrators. I'm lucky to be associated with one of the hospital, Mahatma Gandhi Hospital, who has done 2,000 liver kidney transplants and about 100 liver transplants. And being medical student, I'm always associated with the brain death certification. So I'm here still to learn from Dr. Manish Agrawal, who is professor of neurosurgery from SMS Medical College. Over to Dr. Manish Agrawal, please. So good afternoon. Thank you, chairpersons, Dr. R.C. Gupta, Dr. Purohit, Bhavna ji, Dr. Sulin Shroff, Dr. Deepak Gupta, Bhandari sir. So my topic here today is brainstem death testing. It is basically totally a technical topic, but I have tried to keep the social aspect with it also. So uniform determination of death, 1981. An individual who has sustained either irreversible or permanent cessation of circulatory and respiratory functions, irreversible cessation of all functions of the entire brain, including brainstem. So basically complete, permanent and irreversible. That is the important thing to certify the brain death. So as per the American Academy of Neurology 1995 guidelines, published the practice parameters to describe medical standards for determination of brain death. Essential finding necessary to confirm irreversible or permanent cessation of all functions of the entire brain, including brainstem. Now, the latest guideline published by the American Association of Neurology, the American Association of Pediatrics, and Child Neurology and the Critical Care Medicine, they identify the minimum standards of brain death and DNC. Latest guidelines for certification of the brain death and DNC guidelines are required for public trust in brain death, prerequisite for the brain death determination, examination and examiners, apnea testing, ancillary testing, and communication about brain death and its declaration. These are all part of the guidelines, and all these things must be done.
So the diagnostic criteria, as I've already told, there are 4 specialists who are included. There's something wrong. हाँ सर, चल रहा है मेरा. नहीं, यहाँ से तो ठीक है. अच्छा. आप चेक कर लो. आपके वहां से कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है? Are also there. So inclusion criteria include the patient must be totally unresponsible and ventilator dependent. मतलब patient totally permanently ventilator dependent होना चाहिए. There should be no spontaneous respiration. There should be a known irreversible cause of brain death of known etiology. Evidence of brain injury, clinical and radiological. Brain death should be known. It should be, the cause should be known. That is very important. There are certain exclusion criteria in which you cannot declare a patient brain death when the patient is of having intoxication or poisoning, and there is a recent administration or continued presence of neuromuscular blockers or anesthetic drugs. Their patient is in locked-in syndrome. So there are other criteria of exclusion, which are hypothermia, metabolic or endocrine factors, hypoglycemia, ketoacidosis, hepatic failure, uremia, hyponatremia, hypercalcemia, panhypopituitarism, myxedema, adrenal cortical failure. When the patient is suffering from any of these, you cannot certify brain death. So there are certain clinical signs for certification of brain death. GCS of 3, coma, unresponsiveness, no motor response in all extremities or facial muscles to painful nail bed pressure on supraorbital ridge pressure. Now, absence of brainstem reflexes is another criteria. Brainstem, so the first important thing is to see the pupils, no response to light, mid position, dilated, non-reacting. As Dr. Deepak said,
It is not necessary that they should always be dilated, even semi-dilated, but non-reacting to light is more important. Facial sensation and facial motor response are important to see. We have to see the corneal reflexes to touch with a cotton swab, jaw reflex, grimacing to deep pressure on nail bed, supraorbital ridge or temporomandibular joint. So another important criteria is to see the pharyngeal gag and tracheal cuff reflex. So no response after stimulation of the posterior pharynx with tongue blade, no cuff response to tracheal suctioning. Ocular movement, we have to see the oculocephalic reflex testing only when no fracture or instability of the cervical spine is apparent. And no oculovestibular reflex. These are important tests that we have to be conducted to certify brain death. Yeah, I can see. What a relief. So to see the oculocephalic reflex, we see the doll's eye movement. The head is rotated to the right, eyes move to the left. That is the normal response. When the abnormal reflex, there is a head rotated to right, but eyes do not follow. So that is the abnormal response. Which means if there is no eye movement, then the doll's eye reflex is positive. Then there is the oculovestibular reflex, in which we do the caloric testing. So we do it with the cold water and warm water, and we see the response of the eyes. With the cold water, there is nystagmus towards the side of the testing, and with the hot water, the response of the nystagmus is towards the opposite side. Then apnea test is one of the most important tests considered for certifying brainstem death. It is the main component of the testing, and we have to prevent hypoxemia. We have to ensure adequate PaCO2. Observe that spontaneous respiratory effort is absent before conducting the apnea test. So prerequisites for the apnea test: patient should be in normothermia, normotension, that is 100 mm of Hg or a mean arterial pressure of 75, euvolemia, eucapnia, PaCO2 between 35 and 45. There should be no prior evidence of CO2 retention. So how to do the apnea test is adjust the vasopressor to a systolic blood pressure of 100, pre-oxygenate with 100% oxygen for at least 10 minutes to a PaO2 of 200 millimeter of mercury. Reduce the ventilation frequency to 10 and to eucapnia. Reduce PEEP to 5 centimeter of water. If oxygen saturation remains 95%, obtain the baseline ABG. Disconnect the patient from the ventilator. Deliver 100% CO2 through a insufflation catheter inserted at level of the carina. 6 liters per minute by TPs attached to the ET tube. This can be a different way of giving the oxygen. Look closely for the respiratory effort for 8 to 10 minutes. If no respiratory dive observed, after 8 minutes, draw blood gas analysis and reconnect the ventilator. Now, the apnea test is positive if the respiratory movement is absent, arterial PaCO2 is more than 60, or 20 mm of increase in PaCO2 over a baseline. Apnea test is indeterminate if respiratory movement is absent, but PaCO2 does not rise to 60 millimeter of mercury. Apnea test is negative if the respiratory movement is present. So there are certain criteria to abort the test. Presence of respiratory movements. Systolic blood pressure becomes less than 90, which means the patient is going into cardiorespiratory failure. Significant oxygen desaturation, which is less than 80% for greater than 30 seconds. And there is appearance of new cardiac arrhythmias during the test. So there are factors that can interfere with the clinical diagnosis of brainstem death. If there is a severe facial or cervical spinal trauma, it is very difficult to identify brainstem death. Pre-existing pupillary abnormalities, toxic levels of sedatives, drugs, aminoglycosides, anticholinergics, antiepileptics, and neuromuscular blocking agents. There can be severe pulmonary disease resulting in chronic retention of CO2. Then it interferes with apnea testing. So ancillary testing, however, is not required because brain death is a clinical diagnosis. Still, it may be recommended when the cause of coma is not known. The apnea test is inconclusive or aborted. There are confounding clinical conditions which limit the clinical examination. There are skull or cervical injuries, cardiovascular instability, and to reassure family member and medical staff. The choice of test can be
there are a wide range of tests that are available, which can be like CT angiograms, MR angiograms, EEG, transcranial Doppler, and cerebral angiography. Also, radionuclide test is also available. So cerebral angiography is available in most of the medical colleges that can be used. It will show that absence of intracranial flow at the level of the carotid bifurcation in circle of Willis. EEG can be done bedside, requires an experienced interpreter. Use of ECS as a clinical confirmatory test only in patients without intoxication, hypothermia, or shock, and not in patients where brainstem activity might be preserved. Then there is the CRAG, which uses a gamma camera. It may not detect minimal blood flow to the brain, especially brainstem, and it necessitates transport of the radiology nuclear medicine department and requires an experienced interpreter. So where complicating conditions are present, it may be used. However, it is usually not required. Then if a study needs to be repeated because of a previous non-diagnostic study or a previous examination incompatible with brain death, a period of 12 hours should lapse to allow the isotope to clear from the circulation. This is the hollow skull phenomena seen on radionucleotide studies. Then MR and MR angiography are available. CT angiography is also available. Transcranial Doppler, atropine. So now another thing is brain death in child. Most commonly occur as a result of trauma and anoxic encephalopathy. Anatomic neurodevelopment continues by 2 years of age or beyond the first decade of life. Presence of open fontanelles and open sutures makes the skull an expandable chamber. ICP may not exceed and cerebral blood flow continues. So there are same criteria are available for children also. We have to see the coma and apnea, absence of brainstem function, mid position or fully dilated pupils, spontaneous eye movement, gag reflex, sucking reflex, rooting reflex, absence of respiratory movements. Patient must not be hypothermic or hypotensive, placid tone and absence of spontaneous or induced movements, excluding spinal cord movements. Examination results should remain consistent with brain death throughout the observation and testing period. Exclusion of preterm infant younger than 37 weeks. Observational period 24 hours for neonates, 12 hours for infant and children. Following cardiopulmonary resuscitation, the diagnosis of brain death should be deferred more than 24 hours if there are concerns or inconsistencies in the examination. So, next important part of brainstem death declaration is communication to the family. Make a reasonable attempt to inform families about the intent to, as a doctor, we should be able to communicate with the family, and that is primarily the responsibility of the treating doctor to make a reasonable attempt to inform the family about the intent of doing the brainstem death testing. We should provide emotional support and guidance. I think the treating doctor and the optimization team and the transplant coordinators should be well trained in providing emotional support and guidance to the family. Ensure communication is clear, concise, and supportive. Use simple terminology that families can understand. Permit families to be present during the neurological examination and apnea test. Inform families about the potential for spinal reflexes and the fact that these movements do not preclude brainstem death certification and determination. There is no obligation to obtain a consent before brainstem death testing evaluation unless otherwise stipulated by institutional policy or state law or regulations. Time of death, document the time of death as the time of arterial blood gas results from the final apnea test. Demonstrate that arterial pH are consistent with brain death for patients who meet the clinical criteria for brain death. Document the time of death as the time of an attending physician documents in the medical record that the ancillary tests are consistent with brain death. Steps after death. How we should disclose to the family that the patient is brain dead. Provide families with reasonable but limited amount of time with the deceased patient before discontinuation of organ support, the length of which is based on the judgment of the attending clinician of record in accordance with the institution's policy. If there is a disagreement with the family, there should be a hospital board which can talk to the family, include a process to resolve the disagreements with families who do not agree with the medical team's plan to initiate brain death. Include consideration of providing a reasonable period to accommodate the families after death. Inform families about the proper intent to perform the brain death evaluation. Conclusions.
the law requires determinations of death to be made in accordance with the accepted medical standards. There should be nationally recognized guidelines for brain death, although there is a law, but the guidelines for medical professionals are, I think, not there. They should be established. It is thus the responsibility of clinicians involved in brain death determination to coordinate with hospital administrators, legal teams, and ethics as appropriate to update their hospital policies on brain death determination. Thank you. Thank you. Thank you, Manish, for your excellent and elaborated talk. Definitely, brain stem death declaration is a crucial step in the program of the organ donation and transplantation. And we, the people, is not bothering to explain the things to the their relatives. So it is important to explain the brain death to the relatives. मैं प्लीज एक सेकंड सर, मैं डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, वाइस चांसलर आरएचएस से निवेदन करूंगा, प्लीज सर आप भी स्टेज पर आए सर. थैंक यू. I'm just trying to see the files. By 5 CH. You put it. After these 2 lectures, हम सोचे कि एक छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं आपको 4 मिनट का about actual brain death testing. यहाँ पर आईसीयू और न्यूरो वाले कितने हैं? अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस से मैं जानता हूँ कि काफी मेडिकल कॉलेजेस से आप लोग आए हैं राजस्थान के, तो आईसीयू और न्यूरो वाले कितने हैं यहाँ पे रूम में? Great. Thank you. This is just a very short film. Not this one. Go back. Okay. This one? Yeah. 4 minutes? Yeah. So this is available also on the net. हमने ये film काफी साल पहले बनाई थी with Dr. Ramakrishnan from Chennai. And this will just show you exactly what Dr. Manish has spoken to you. Demonstrate each one of these. To check the absence of pupillary response to light, a bright pen torchlight should be shown into each eye in a darkened room. The pupils may not necessarily be fixed and dilated in brainstem dead patients. However, there should be no pupillary response to light. It's normal to expect grimacing of the face to painful stimulation. However, this is absent in brainstem death situation. A firm supraorbital pressure should be used to check this cranial reflex. We will now check for the doll's eye phenomenon. To do this test, the doctor holds the patient's head between his hands and moves the head from side to side through 180 degrees. He should hold the head to one side for 3 to 4 seconds and look at the simultaneous eye movement to that side. A similar movement is done to the opposite side and the eye movement is observed. If the cerebral hemispheres are damaged but the brainstem is still alive, there will be an obvious deviation of the eyes to the opposite side for a second or 2, followed by a release phenomenon when the eyes will get realigned to the side of the head. We are now going to check for the corneal reflex. What needs to be done is taking a moist cotton-tipped swab and applying a firm pressure to the cornea, of course, without damaging it. The patient is observed for involuntary blinking of the eyelids. Let's now perform the vestibulo-ocular reflex, also commonly referred to as the cold caloric test. This test involves instilling 20 ml of ice cold water into the external auditory canal and looking at the eyeball movements of either eye for about a minute. No eyeball movement indicates an absence of the reflex. To check the gag reflex, a cotton-tipped swab or a spatula or a Yonkar could be used to stimulate the posterior pharynx to look for the response.
We will now check for the cough reflex, and this is going to require a temporary disconnection from the ventilator. The cough reflex is tested by using the bronchial suctioning. Either a closed suction or the open suction method may be used when a patient is having an endotracheal tube. For this test, the patient is disconnected from the ventilator for 10 minutes. However, to avoid hypoxia to vital organs, 100% oxygen is given for 5 minutes before disconnection from the ventilator. Even during the test period, 100% oxygen is given through a tracheal catheter. In the patient who is brain dead, the carbon dioxide tension increases at a rate of 2 millimeters of mercury per minute during the apnea testing. If the initial carbon dioxide tension before the testing is about 40 millimeters of mercury, then the arterial carbon dioxide tension after about 10 minutes is likely to be 60 millimeters of mercury. This test is often considered as the ultimate test to establish brainstem death. The spontaneous respiratory response fails to occur even in the presence of stimulatory drive from increased carbon dioxide. Declaring brainstem death is, if anything, a very, very sensitive issue that I think every single doctor needs to be cautious, because families still have a significant denial on accepting the concept of brainstem death. And that puts the extra burden on us as clinicians to be doubly sure that all the right. So this is just a short simulation film समझने के लिए कि brain death testing कैसे करते हैं. And अगर आपको you are in, let's say, in peripheral hospital जहाँ आप पहली बार कर रहे हैं, तो we also have an app which you can download from App Store. Just say brain death testing and it'll take you step by step कि कैसे हम testing करते हैं brain death की. ये आपके लिए है, just to additionally help you in taking this program forward. एक दूसरी चीज is that how to remember this whole brain death testing, क्योंकि you have to do 2 tests, 4 doctor and so on. तो हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी है इसके लिए, just to make you remember कि brain death testing हम करते कैसे हैं, उसमें क्या क्या फॉर्म्स इन्वॉल्व है, क्या प्रोसीजर है, जो डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा और डॉक्टर मनीष ने भी कहा. तो जया विल डेमोन्स्ट्रेट टू यू. इसके लिए we'll need some volunteers. You had a great, I think, pre-lunch. We have had a good, snacks. So now I want you to come on, here. हमको 10 volunteer चाहिए कम से कम 10. 10 we'll need. 10 or 12. Yeah, just to show. 2 मिनट लगेगी सर. नहीं अभी 2 मिनट में खत्म कर देंगे. Can I get some volunteers from the floor? Sanjana, you can start. Come. डॉक्टर इस एक्टिविटी हम बोलते हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता एक्टिविटी, क्योंकि ये डॉक्टर दीपक गुप्ता ने डिजाइन की. डॉक्टर गुप्ता आप यहाँ आ जाइए. No, please come. So one brain dead donor, Sanjana, if you hold that card. हाँ वहाँ खड़ा कर दिए, नीचे खड़ा कर दिए. One brain dead donor, एक तरफ से इधर से खड़े हो जाइए या एक तरफ से, तो फिर दिखेगा. And you do 2 tests. These are 2 tests you do for brain death. First test and second test. First set, second set. And this has to be done by 4 doctors. You have to stand in order so you remember. Careful. These 4 doctors are going to be a neurologist, neurosurgeon, authorized specialist, treating doctor, and person in charge of the hospital, superintendent, or medical director. We need some more volunteers. Keep going. They should tell. The sequence okay? Please. They have to tell whether the sequence is okay. Where are the Maharajas or the kings of Pakistan? So we have 1 brain dead, 2 tests, 4 doctors to certify. And these 2 tests, first set and second test, is done 6 hours apart.
Interval between the two tests is 6 hours. One more volunteer, please. Come on. Keep moving. We have to go for lunch also. हाँ आइए प्लीज आइए सर आइए आइए सर स्टेज भी छोटा पड़ रहा है सर आ रहा है देखिए सर भी आ गए उस तरफ खड़े सर and the most important is you need to take a consent from the family तो उसका है एक form number 8 and this is the form number 8 and consent and then there is a form number 10 which is for brain death certification form. Manish was fantastic. So this is your Manish ji. Just for you to remember, one brain death, Dr. Deepak Gupta, please. Brain death, series of tests, 2 series of tests done by 4 persons. 4 tests have to be done. 6 hours apart. 6 hours apart. 6 hours apart. Then somebody is holding the number 8. Yeah. Form number 8. Form number 10. Form number 8 for the consent. Form number 10 is for the brain death. And then certification of the brain death by Dr. Manish. So आपको यही याद रखना है कि 1, 2, 4, 6, 8, 10 sequence. brain death certification में यही एक sequence है. याद रखिएगा तो you will be able to take it forward. Second, extremely important. Very easy to remember. Experts or brain death first. You are the source. You are the source. Hero. What is 6? 6 hours apart. 6 hours. R&D in charge of 6. Yes, time interval का. Remember this activity 1, 2, 4, 6, 8, 10 of rental certification. क्योंकि ऐसा होता था ना कि हम जब भी कहीं ऐसा पहली बार होता था तो हमको कॉल आती थी हम क्या करें कैसे करें कौन सा फॉर्म यूज करें कितने घंटे के बाद तो हमने जब तक डॉक्टर दीपू का एक्सप्लेनेशन देखा ये हमने इसकी एक्टिविटी बना दी इससे आपको ये याद है. थैंक यू सो मच. क्योंकि वर्कशॉप का जो मतलब यही है कि आप कुछ सीख के वापस जाएं और उसको आप इम्प्लीमेंट करें तो इसीलिए हम ये एक्टिविटी रखते हैं. एक और एक्टिविटी आएगी दोपहर में. थैंक यू सो मच फॉर वॉलंटियरिंग. थैंक यू. अंगदान में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है. एक ब्रेन डेथ और दूसरी काउंसलिंग. तो आपने अभी जो यू हर्ड अबाउट ब्रेन डेथ आइडेंटिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन उस ब्रेन डेथ को हम मेंटेन कैसे करेंगे क्या कॉन्फाउंडर्स है उसके लिए डॉक्टर दीपक गुप्ता विल कम बैक अगेन एंड आफ्टर दैट वी विल हैव व्हाट इज काउंसलिंग कैसे हम काउंसिल करते हैं वो ललता आएंगी. प्लीज डॉक्टर 15 मिनट. Anyways, thank you once again. And मुझे लगता है कि lectures should not be boring; they should be interactive. And I'll try to keep it as interactive as possible. There will be slides running here and there. I will share the presentation. वो आप बाद में ले सकते हैं. But ये आपका कंप्यूटर हैंग कर गया अभी. आ गया. इसको बंद करते हैं. इसको भी बाद में दे देंगे आपको. We'll give it later. I have some videos of the actual patients. I'll share it with you. आप उसको बाद में यूज कर सकते हैं जो हमने कुछ बनाए थे. नहीं कोई दिक्कत नहीं है. All is well. So I'll be sharing very
kind of some of my experiences जब हम लोग brain death certifications करते हैं तो naturally you come across few things. So brain death mimics कैसी conditions होती है जिसमें आपको लगता है कि patient may be brain dead, patient may not be brain dead. Commonest thing we see in our practice is patients getting some midazolam, fentanyl, and sometimes barbiturate coma. Very, very common. And second is the hypothermia. There's so much of fight between the stakeholders, believe me, in the major hospitals, between the neurosurgeons, neurologists, anesthetists, what should be the temperature जब आपको पेशेंट को ब्रेन डेथ टेस्टिंग शुरू करना है. आई थिंक वी शुड कीप इट वेरी सिंपल. मेडिकल साइंस ये बताती है कि एनीबॉडी हु इज हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ 32 to 34 he is having a altered sensorium. Brainstem reflexes are absent below 28. So 35 is the cutoff taken by most of the places, which is approximately 95 degree Fahrenheit. So कोई भी आदमी अगर 95 degree Fahrenheit का body temperature है, he is very unlikely to be unconscious because of hypothermia. We must remember this. So these are the very few basic things you should know. जो मैंने पहले भी बताया था कितना घंटे आपको वेट करना है ड्रग लाइफ का. पेशेंट की जो जो मेडिसिन उसको मिली होती है कैजुअलिटी के अंदर मोस्टली, अगर कोई बोलस मिला है, इंट्यूबेशन के लिए उसको स्कोलिन वगैरह दिया गया है, रिलैक्सेंट दिया है, तो यू शुड इंक्वायर एंड कैलकुलेट द हाफ लाइफ एंड वेट फॉर 5 हाफ लाइफ्स टू पास. नाउ दिस पेशेंट, ये वीडियोस नहीं चलेगा क्या? Anyways, so Lazarus sign is something not uncommon, and as I think Dr. Manish also talked about it, you know, it creates a lot of panic. In fact, one of my professor of anesthesia, one of my colleague, I mean, she questioned, once there was a child we were certifying, and all of a sudden there was some the ये सारे वीडियोस हैं बट इसमें नहीं आ रहे. मैं इसको अलग से दिखा दूंगा बाद में. I'll show it separately. I have the video separately. Anyway, so when the line was being put, the child, there was some movement or wriggling of the toes. Okay. And then all of a sudden I was told, DG, what are you doing? I mean, the patient is alive. Can you imagine a professor questioning another professor? But this is very common. I mean, even I was ignorant about it, let me tell you. But then you have to know your subject. Once again, I'm coming back to the same thing. So these are the spinal reflexes. The longer a person is on a kind of a hypoxia or ventilatory support, the more are the chances of these reflexes. Sometimes it so happens कि आपने दोनों brainstem reflexes patient के कर दिए, apnea test positive आ गया, और patient को आप shift कर रहे हो. Sometimes when the surgeon is giving a knife, the person may actually transiently wake up. These are all spinal reflexes. तो अगर आपने किसी patient का apnea test किया और उसको spontaneous respiration नहीं है, the end thing is the person is brain dead. That should be very, very clear to us. And Lazarus sign का kind of Bible में इसका description भी है, क्यों उसको बताया गया है. In the interest of time, I'll skip it. But what I'm saying is कि ये वाले अगर किसी पेशेंट का थोड़ा सा भी टोज का, हिप का, नी का अगर मूवमेंट होता है या थोड़ा सा फ्लेक्शन करने की कोशिश करता है टू सम पेनफुल स्टिमुलाई, these are not sustained. आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार करोगे तो थर्ड टाइम वो डिसअपियर कर जाएंगे. That is the hallmark of Lazarus sign responses. And उसमें आपके complete movement नहीं होता. These are the polysynaptic, polysegmental responses. So you should know how to identify Lazarus response in your ICU. And a word of caution जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी patient के अंदर आपको लगता है कि Lazarus sign है, आप जब brain death testing उसकी कर देते हैं और उसको OT में shift कर रहे हैं, please give some relaxants to the patient before shifting. Because you do not want to have a sorry figure in front of the patient attendant. You know, in fact, you yourself do not know how to identify a Lazarus sign. How will you expect a patient's family to believe that that's a Lazarus sign which is there in the brain dead? So I always tell, gives a small baby dose of relaxant before you shift. You know, you have to do some amount of kind of a playing around with the things. Sometimes you have to do something called as a cheating, I would say. A very simple example I would say कि जब आप कोई apnea test कर रहे होते हैं, किसी patient का blood pressure 90-100 पे होता है, we all understand कि जब apnea करते हो patient को acidosis होता है, PCO2 rise करेगा. When there is an acidosis, the BP will fall. But in the mid of the test, आप नहीं चाहते कि patient का BP crash करे. उसमें भी आप थोड़ी सी cheating करते हो. And what is the cheating? You give a baby dose of, you purge some NORAD. आप थोड़ा सा NORAD उसमें पर्च करते हो before you do the apnea test and you bring the BP to 140, 150. ठीक है, थोड़ा blood pressure drop करेगा. It may not fall to, should not fall to below 100. Those are the small things wherein you have to use your
actually most of the times we know that this person is brain dead. Let me tell you, even before we do the test, the very fact that the person is having a irreversible mechanism of injury on the CT scan, we all neurosurgeons see the CT day in and day out. Almost 20-30 CT we see every day. Thousands of CT we have seen. But because we have to respect the law and certify somebody in the correct manner, respectfully, we have to do the test. So for doing the test, we have to do some kind of a ways out. Sometimes क्या होता है कि किसी पेशेंट को फेशियल इंजरी होती है, आई इंजरी होता है. Again, the basic rule is that out of the 13 tests which are described, अगर आप एक टेस्ट भी नहीं कर सकते किसी पेशेंट का, let us say you cannot evaluate a pupil or you cannot do some facial grimace. If one of the tests you cannot do, then you have to do an ancillary test. In fact, आपके जो फॉर्म नंबर 10 में जितने भी टेस्ट आपके लिखे हुए राइट एंड लेफ्ट, there are two tests on the right side, left side. एक भी टेस्ट अगर आप किसी पेशेंट में नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, so in those cases you have to do an ancillary test. So कभी कभी टेस्ट पॉसिबल नहीं होता. छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास, 1.5 साल के, 2 साल के, and there must be some anesthetist or intensivist sitting here. I'm sure you will understand कि when there are so many high doses of vasopressor going on, तो कभी कभी आर्टेरियल लाइन नहीं मिलता छोटे बच्चे. Very difficult. Even the femoral artery line is difficult. So again, those cases you cannot do an apnea test. Kabhi patients become unstable. It's excuse me. It's very uncommon for a patient to become unstable. जितने भी पेशेंट एपनिया टेस्ट के दौरान अनस्टेबल होते हैं, इट हैपेंस विद इन फर्स्ट 30 सेकंड. उसके बाद कुछ नहीं होता. दिस इज माय एक्सपीरियंस इन द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ माय प्रैक्टिस. सो वंस यू ऑप्टिमाइज योर पेशेंट करेक्टली बिफोर डूइंग द एपनिया टेस्ट, दिस थिंग यूजुअली डू नॉट हैपन. बट यस, कई बार ऐसा होता है कि आपने कम PCO2 पे बिगिन किया. लेट्स से अगर आपने 35 PCO2 पे अपने एपनिया टेस्ट शुरू किया, 10 मिनट के बाद भी आपका जो है PCO2 राइज नहीं करेगा, आपने वेंटिलेटर पे रिकनेक्ट कर दिया, your test is inconclusive. And this may happen in many cases. किसी पेशेंट को cervical spine injury है, you will not be able to do the Dolce movement in that patient, and so many things will happen. पेशेंट जो congestive cardiac heart failure के होते हैं, जो आपके cyanotic heart disease के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर आप एपनिया टेस्ट नहीं कर सकते. So in those cases आपके पास ऑप्शंस होती है कि आप उनके अंदर एंसिलरी टेस्ट कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको किसी भी स्टेज पे आप अटकते हो, you have to document it. You have to document in the file and proceed with the ancillary test. And ancillary test में मेरा मानना ये है, आज के दिन सबसे simplest ancillary test जो आपके पास अवेलेबल है वो है CT angiogram. आप किताबें पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें आएगी, ट्रांसक्रेनियल डॉपलर आएगा, स्पेक्ट आएगा, DSA आएगा, EEG आएगा, but trust me, the simplest and the easiest test is CT angiogram. उसका दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जब CT angiogram किसी पेशेंट का करते हो, आपको सेरेब्रल ब्लड फ्लो के बारे में बताएगा कि पेशेंट ब्रेन डेड है कि नहीं है, बेस्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ बायलैटरल डिस्टल MCA, ACA, इंटरनल सेरेब्रल एंड द ग्रेट सेरेब्रल वेन. उसके अलावा सेम सिटिंग में हम लोग क्या बोलते हैं कि आप उसका CT चेस्ट भी कर दो सेम सिटिंग में, और CT एब्डोमेन भी कर दो. सो जब रिट्रीवल टीम आती है तो उनके लिए बड़ा इजी होता है फॉर असेसमेंट ऑफ द लंग्स एंड लीवर. इट्स वेरी इजी बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिट्रीवल टीम दे वुड लाइक टू हैव ए CT ऑफ द चेस्ट. आपने पहला CT किसी का कराया, लंग में कंट्यूजन्स है, 3 दिन के बाद में आप पेशेंट को सर्टिफाई कर रहे हो, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. सेकंड हिट हैपेंस टू द लंग्स, लंग्स गेट इंजर्ड बाय द वेंटिलेटर आप जो दे रहे होते हो. सो उसके बाद में यू नॉट श्योर कि लंग्स आपके ट्रांसप्लांट होने नहीं होने, तो इस टाइम पे जब आप कर रहे होते हो, यू कैन ऑल्सो इवेल्युएट द पेशेंट फॉर लंग्स एंड लीवर ऑल्सो. So I personally believe this 7-point CT angiogram, कुछ लोग 4-point भी लेते हैं. This is the easiest and we have been regularly doing it in trauma center with very good results, especially in the children. 100% accuracy in these patients. So if you ask me कि कोई guideline है, I think कई चीजों में कोई guideline की जरूरत नहीं होती because there are no guidelines in our law, I would say as of now, but nothing is stopping you. You are doing a very clean job of CT angiogram to confirm somebody, so there is no restriction on that. And of course, it's published in the international literature. 22 countries are already doing it. So जैसे एक पेशेंट आया था हमारे पास में, he was operated in AIIMS only with cyanotic congenital heart disease, and suddenly he became from M6 to M1. बड़ा सा उसको हेमेटोमा था, and naturally उस पेशेंट का क्योंकि PO2 was very very low, so we could not do an apnea test, so we did the CT angiogram and certified this patient. So certification में Dr. Manish ने already बता दिया. I'll skip it in the interest of time. Most important thing is test. These are the 10 tests. दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ. जब आप डोल साई मूवमेंट करते हो, आपने एक वीडियो में देखा कि उसका मूवमेंट एक राइट और लेफ्ट में करे थे. समटाइम इट कैन बी वेरी एम्बैरेसिंग. इट सो हैपेंस कि आपकी ट्यूब बाहर निकल आती है, एंडोटिकल ट्यूब.
You know, you're moving the neck to the right or to the left and the endotracheal tube comes out. And believe me, कोई trauma का patient जिसको facial-maxillary injuries है, उसकी अगर tube निकल आती है, it's a nightmare to reintubate. Though that patient is brain dead, आपके पर आएगा कि भैया आपने इस patient को मार दिया, इसको intubate नहीं कर पाए इसको. So all you have to do is just hold the tube with left hand and then move the head on the right, on the left. You have to protect the endotracheal tube very, very carefully. आप जब apnea test कर रहे हैं, आप tracheal जो catheter डाल रहे हैं, कितना आपको अंदर डालना है? ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा, you have to measure the length, कितना, you should know about the way, कितना आपको ऑक्सीजन कैथेटर को अंदर. छोटे बच्चों के अंदर you should never do a disconnection, tracheal insufflation. You should do it with the Maples circuit or the Mapleson D जो बनाते हैं हम लोग, जो Venti से जो, I don't know how many anesthetists are here. I learned so much of my brain test testing and donor management from my anesthetist. There is some entity called as a pulse pressure variation, PPV. It comes on the monitor. I didn't know about it. हमारे इतने सारे पेशेंट डिटोरेट करते थे, उनको हम लोग मिथाइल मतलब वेसोप्रेसर बढ़ाए जा रहे हैं, पहले नोरेड, फिर एपिनेफ्रिन, फिर डोपामिन, बीपी इज क्रैशिंग, एपनिया टेस्ट नहीं कर पा रहे. एक सिंपल आप मॉनिटर पे देखिए, उसके अंदर उसका पीपीवी आएगा 34 आएगा उसका. ऑल यू हैव टू डू इज टू गिव सम फ्लूइड्स टू द पेशेंट. It's such a sensitive marker. So you learn from your colleagues, work together. And there's one more thing I want to tell to everybody. For neurosurgeons, normal saline is the fluid of choice in traumatic brain injury. You know, कोई भी head injury का patient आता है, we always say there is no fluid better than normal saline. But believe me, for the person when he's brain dead, it is one fluid which is contraindicated in my say. It is the worst fluid you can ever give to somebody. अगर आप उसको एक कैलकुलेशंस करेंगे, किसी को 4 या 5 लीटर का अगर हाइपोवोलीमिया है and you replace it with the normal saline 0.9%, you are putting that patient into so-called hyperchloremic metabolic acidosis. And that metabolic acidosis will cause hypertension. You will give more fluid and more hypotension. All you have to understand is to change your fluids. हमारी nurses ICU के अंदर जो drugs बनाती है, most of the medications, antibiotics, वो normal saline में बनाती है. And all these patients are hypernatremic. So you have to just instruct your nurses, please do not make any drug in the normal saline. So these instructions have to come from your end. You should know what fluid is to be given to your patient. Half saline or maybe balanced salt solution, 5% extra at times. So those things you should know very well yourself. बच्चों में brain test testing थोड़ा सा challenging होता है, but it's not difficult. Nothing is impossible in your practice because the impossible also says I am possible. ये एक बच्चा था हमारे आईसीयू में, एनीवे स्लाइड वापस नहीं जाएगी, आई एम सो सॉरी. सो एपनिया टेस्ट मुझे लगता है कि इट्स अ टेस्ट व्हिच इज मोस्ट ऑफ ऑन, सब लोग एपनिया कर रहे हैं, बट बिलीव मी मोस्ट ऑफ अस in fact in this audience also are scared of doing an apnea test. You know, the patient may die, something will happen, मैं certify नहीं करूंगा. I think this is something we should stop doing it. And we started and we developed this model in our trauma center 2 years back. I call it a SIR OPT, organ procurement team model of our trauma center. And this model is very simple. S stands for screening of the potential donors by the GIVE tool. And GIVE is what I told you in the beginning: GCS less than 5 or 3, intubated, ventilated, ICS absent. And I stands for increasing brain death certifications of the possible donors by a toolkit, not the toolkit which you know about, but a toolkit for the brain death certification 1, 2, 4, 6, 8, 10, which Dr. Shroff very aptly demonstrated. And R stands for resuscitation. So this SIR model, if you put it in your practice, it really changes the outcome in your hospital. At least it has worked for us. Maybe it will work for the whole of Rajasthan also. Time for me to go, 2 minutes. So this is what we have talked about. 1 patient, 2-time test, 4 doctors, 6 hours apart in adults, and बच्चों में 12 घंटे apart. 8 organs you can get. At least we can aim for 8 organs on form number 8, consent, and 10 tests to be done, and 12 hours apart. This is a very simple way to remember testing. Then हमने अपने trauma center में भी started something called as a biofire nucleic acid test. These are the point of care nucleic acid test. Commonly क्या होता है कि 4 या 5वें दिन में जब पेशेंट को आप सर्टिफाई करते हो तो नेचुरली उनको TLC काउंट हाई आएगा, कल्चर कुछ पॉजिटिव प्लस माइनस रहेगा, एंड वो आपकी जो ट्रांसप्लांट टीम आएगी वो बोलेगी कि पेशेंट तो सेप्टिसीमिया में है, तो रिजेक्ट हो जाएगा. अगर आप कल्चर भिजवाओगे तो कल्चर की रिपोर्ट 48 घंटे के बाद में आती है. And so I think most of the, I don't know about here, I'm sure SMS should be having it.
These are the point of care nucleic acid tests available with most of the microbiologists, and you can get the bacterial growth in 2 hours. You can get the signals within 2 hours of taking the sample. And so this is what we do, because procal can be high in trauma patients. I've seen procal value of 95, not 0.95, without any infection. Because polytrauma patients, procal is not a sensitive indicator. Okay, high TLC is not a sensitive indicator. It's the trend of the procal which is more important. And so we do this point of care test in all our patients, and we inform it to our team. We have standardized and started doing CT angiograms. And the other most important thing which I would request with folded hands, all of you, you must put a stop to this something called as second postmortem. पेशेंट की फैमिली ने आपका कंसेंट करा, पेशेंट ओटी में गया, ऑर्गन रिट्रीव है, सर्जन ने उसकी एब्डोमेन को बंद किया, and then the patient goes to the mortuary. The mortuary person again opens up the body, again inspects, opens up the head with something sawn, whatever, looks at the kind of a necrotic brain pouring in your hand, close it. And then so many times the mortuary is not there in that hospital. The patient is sent to another hospital for the postmortem. Really, there is no need for it. I call it a second postmortem, which should be stopped immediately from our country. I learned it because when I was in Israel, because mortuary is not, postmortem is not permitted as per the Jewish culture. And it was a part of my PhD thesis also when I had some problem. So I think when the retrieval is happening, abdomen and chest is open, the forensic medicine person can be physically present. In fact, in our center, they are physically present in each and every retrieval. Good, excellent. So once it is done, then the only thing left is the head. For that, there is no need to send the patient to the mortuary. You just do a post-mortem CT. It's called vertopsy. COVID time में जब हम लोग postmortem नहीं करते थे, सारे patient के CT होते थे. And now what we do is we just send the patient from the OT directly to the CT. The whole body CT is done, and that's it. No second postmortem. I think the surgeon closes the abdomen and the chest in a much better and a more dignified way than somebody who's a technical person in the mortuary, with due respect to him. And it saves a lot of time and a kind of hassle to the family. So this is what we are doing. You can see this cadaver being there, and the CT scan is done for the cadaver. All the entire body is scanned, and it's all legal. I mean, we have been doing it for last 2 years. So we don't do any second postmortem. We do something called as a autopsy at our center, and we published it in Neurology India also. We have started audits, which should be done. And these are the results of this SIR model, SIR model, which we have done. We are seeing some good outcomes. Hopefully, we will continue the momentum. And this is what. And then we must learn how to handle these so-called difficult neurosurgeons. I am one of them, because so many times the in charge will say, I do not want this certification to be done. It's a question on my kind of credibility. What nonsense. This is something which needs to be addressed by the kind of so-called the in charges. If you are the in charge of a hospital or a setup, you will be able to tell. I have difficulty in dealing with my juniors. I changed my administrative rules of admissions in my hospital. So now that is why at least our certification rates have really jumped up. So there is no resistance factor for the certification process. So that something needs to be done. This child was in there. I was traveling abroad, and this child was there in the ICU for 6 days. And the competent neurosurgeon at my hospital said the child is having a compound head injury, unfit for brain death certification, meningoencephalitis, hypothermia. What nonsense. So many things. Finally, I had to intervene, and then we finally converted this child, Irshant, and he was the youngest donor at that child, I think 18 months old child. So there's so much of not only lack of understanding, but nahi hone dena types. Those things have to be taken care of by the senior lots somehow. Brain tumor patients can donate. Okay, any patient with a grade 1, grade 2 brain tumor, they can very safely donate organs. This thing. Patients of hypoxic ischemic injury, brain or compound injury or stroke, they can always donate. And I think the success mantra, if I am to say, I think we must train our residents right at the bedside by doing or demonstrating the test right in front of them. All the trauma nurse coordinators, they need to be trained. Start conducting your simulation regular workshops in your hospital or in your city. And to talk about, I'm a neurosurgeon, so I'll defend neurosurgical community only. But of course, due respect to intensivists and neurologists, if you look at this number 1, 2, 3, 4 by the government of India, I am there at 3 places. Trust me.
At time, it so happens that I can sign at any of the three places. Why? Treating doctor. In my hospital, all head injury admissions are done under neurosurgeons, all trauma admissions, TBI cases. Then second person is a neurologist or a neurosurgeon. I'm again a neurosurgeon by profession. Third person is person empaneled by your hospital. You know, your hospital kind of authorizes certain number of doctors. Again, I'm there in that panel. And fourth is a medical superintendent. So much is the important role a neurosurgeon can play, or a neurologist, for example, stroke patients, they can play. And of course, intensivist, because they are the key people to talk about the donor maintenance and how to maintain the organs. Because once you certify, that is not the end. That is actually the beginning of keeping the organs healthy in the donor. And it is where the teamwork comes into play, where I learned so much from my intensivist and the anesthetists, from my senior residents, you know, those who are 15 or 20 years junior to me. I learned from them all those things, and I started putting it in my practice. So I, as a neurosurgeon, I think I'm very much convinced that if not we, who else will do it? And we all should come forward for this noble cause to promote this. And he is our resident. He's practicing in Rajasthan only, somewhere. I think in Jodhpur or somewhere. I don't know if you know him. Dr. Krishnavir Singh. I've taken his permission before his picture. He was one of our bright resident. He had a liver failure, hematemesis, upper GI bleed. He was in coma for 2 weeks, and he underwent a liver transplant. So even a neurosurgeon can need a liver transplant. So let's come forward and promote this cause. And we need some very well trained counselors for sure. And these are take home for this talk. Very quickly, I'll go to this donor maintenance, just 2-3 minutes if time permits, sir. Donor management is very, very important because again, as I told you, we have to increase the yield of the organs. हमारे पास पहले ही donors बहुत कम है. उसके साथ साथ अगर हम लोग उनके number of organs को healthy रख पाएंगे, तो we'll be able to save more lives. In fact, it's a thermometer or the quality of index of a hospital. आपके जिस hospital के अंदर better management होता है, उसमें आप ज़्यादा अपने organs patient को दे पाते हैं. And this I will skip. I don't want to waste time. I think hypothermia prevention is extremely important. 100% of the patients are hypothermic. 90% of the patients are hypotensive. And many of these patients have got endocrine changes. Actually, क्या होता है इनके सबके T3, T4, TSH अगर आप करेंगे सबके normal आते हैं. Okay, let me tell you that because of the different blood circulation supplied to the anterior and the posterior pituitary. But everybody will have diabetes insipidus. You know, the moment I reach my ICU, a person is pouring out urine. You know, that means the person is probably brain dead. So मैं हमेशा रेजिडेंट को बोलता हूँ, मेरे पास फोन आता है कि फला फला पेशेंट है, ही इज GCS 3/15 एंड सर मुझे वो पेशेंट जो है ब्रेन डेड लग रहा है. मेरा एक ही सवाल होता है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है. ओके, if the person is having a low blood pressure requiring NORAD, that means this person is very, very likely to be brain dead. Then my next question is उसका urine output कितना है. Okay, so these are the questions which lead you indirectly to understand that this person is probably brain dead. And similarly, lung has to be protected very well. You know, हम lung को इतना ज़्यादा insult देते हैं ICU के अंदर, I cannot tell you. First insult is by the trauma. Second insult is जो हम जो ventilator support देते हो, उसमें आपको lung की सबसे ज़्यादा injury होती है. And that needs to be really respected. That is why I think less than 10% of the lungs are suitable for transplantation in our country, to my understanding. So the goals change from this to that, from normal line to no normal line once a person is brain dead certified. The moment you certify somebody as brain dead, you have to stop all nonsense medications. Usually it so happens कि patient का mannitol, hypertonic saline, aptoin, levetiracetam सब चल रहा होता है. Brain dead certification हो गया, एक तरफ से उसको mannitol दे रहे हो और दूसरी तरफ से उसको आप NORAD दे रहे हो. You know, these are the two counter things. So you have to check your treatment because your goals change. आपको सिर्फ organs के ऊपर काम करना है, not on the brain. Once a person is brain dead. Yeah. जो ICU का केयर है, you know, regular change of the posture, low molecular weight heparin prophylaxis, Ryle's tube feeding, enteral feeding should be continued. If a person is brain dead, please do not stop feeding him because sometimes that person may require intestinal transplants. Okay, जो भी आपका ICU का standard of care चल रहा है वो उसका चलता रहेगा. Regular change of posture, suctioning, head and elevation, उसको stop नहीं करना. But the medicines which are not important, they need to be stopped immediately, and you should set up these kind of donor management goals. Temperature has to be prevented and not
treat it, I would say, with all these kind of things. Basics, fluid management I have already told you. And vasopressors, I mean, some of my anesthetic colleagues may not agree. For me, the vasopressor of choice is vasopressin and not the norepinephrine. If you read the Canadian guidelines also, in a brain dead person, it is the vasopressin I use as the first drug and not the NORAD. It's a better drug for and more protective to the kidney. The second thing, if I need, I always start with the NORAD to my patients. Similarly, you have to, then methylprednisolone is a wonderful, wonderful drug. Each and every ICU should have a methylprednisolone. The moment a patient comes to me, a potential donor, not even before the test, once I am very convinced that this person is a potential brain dead donor, the first thing I do is I give 1 gram of methylprednisolone. And all those hemodynamic instability because of kind of, catecholamine surge and parasympathetic paralysis is taken care of by this methylprednisolone. And this is what we started giving. IV thyroxine is not available. आपको देना नहीं होता. You don't have to give eltroxin to each and every patient. Only if the person is having a low ejection fraction, okay, on echo, and patient is having a refractory blood pressure or hypertension. Those cases, you can just give 3 tablets of eltroxin via the Ralph tube to the person. And क्योंकि in patients के अंदर they have got gastric stasis, so I always inject some metoclopramide at the same time with kind of eltroxin tablet to the patients. Very rarely I use it, not so frequently. Methylprednisolone in all patients I give it. So this is the SOPs that we have. We give vasopressin, MPAs. Insulin is required by, I think, most of the patient, and then you have to play around with the potassium management in this group of patients. And this is what I was telling you about this this patient. If you look there, the red figure 17 and 28, we could not do the apnea test, and this patient was on very high dose of NORAD. And 28, those with a knowledge about the ventilators and the monitors will say the PPV value of more than 12 signifies hypovolemia. हम लोग पहले अल्ट्रासाउंड करते थे, IVC का डायमीटर देखते थे, CVP देखते थे, but it's a very ultra sensitive marker. In fact, जब patient को fluid देते हो, immediately the blood pressure picks up. And so you have to learn how to use your monitors in a very easy way. Then you should have your SOPs about the respiratory care to protect the lungs. Then these are the SOPs that we have developed. We call it a VIP approach: ventilation and infusion and pumping principles. Coagulopathies need to be addressed, nutrition needs to be addressed, and infection is the biggest problem in our ICUs, we must understand. And those who say that we don't give any antibiotics, I think they're speaking nonsense. Most of these patients, they require some antibiotics because आपके पास time नहीं होता. Once a patient is kind of a brain dead, all you have is a window of 24 to 48 hours. So many patients I have managed by giving them a kind of shots of polymyxin B, okay, a kind of, and tied over the crisis for 24 hours to make the organ. Because nowadays people are very comfortable. Our transplant people are very comfortable treating the infection in the recipient. This is what I am told by my transplant. They say there are no problems. Even this hepatitis was a big taboo once upon a time, but they are more than happy to treat those infections in the recipient very easily. Then this is the monitoring you have to do tools, and this is a BioFire I've already talked about, point of care test which we are doing. And these are the few cases I will skip. And this is the donor optimization bundle we have. I believe in making some specific rules for people to understand. We are in an academic hospital, professors. तो जब हम academic institute में होते हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाते रहते हैं जिससे कि लोगों को इससे याद रहे. And so these are the rules, and the dictum is if you are able to meet 7 out of these 12, then I think you are able to give more than 4 organs, healthy organs, to the society. And this has been scientifically validated also. So I always say that for donor maintenance, have something like a 10 commandments. And what are these? One is a give or identify early, shift from the CPP guided to the extracranial circulation, stop after first apnea non-essential drugs like mannitol, anti-epileptic drugs, and have your SOPs, the rule of 100 for the donor maintenance in place, checklist, train your ICU team to have check beds. क्योंकि सारी बातें जो हम इस समय बोल रहे हैं, it's those who are doing it will not be physically present at the scene. So you should have those checklist bedside in the ICU 24 hours. And आपके residents भी rotate करते हैं every two monthly. तो residents की भी आपको training करना regularly बहुत important है. Then you should have your cards. कई बार मैंने देखा है कि आपका methylprednisolone available ही नहीं है, vasopressin available ही नहीं है.
फिर आप एंडोक्राइन में फोन करोगे, वो देने से मना कर देंगे आपको, उनकी प्रोप्राइटरी है। तो आपको एक ड्रग कार्ड आईसीयू में हमेशा रखना है। बेसिक ड्रग्स, कुछ इंजेक्शंस वेसोप्रेसिन के होने चाहिए, कुछ मिथाइल प्रेडनिसोलोन के होने चाहिए, एंड दैट्स इट। बट मिलती नहीं है, why I have narrated it here is because these are the problems I faced, and now we have addressed these problems. Then you should have be able to do the culture and buy this biofar, and you should care during transport and care during carefully IV administration of fluids, and consult whenever in doubt. I mean, this gentleman, I don't know how many times I used to call him in the early 2020. When I had any problem, I would call up Dr. Anil so many times regarding consent, medico-legal issues, and Dr. Shroff को कितनी बार मैं फोन करता था. Serum sodium में I always used to have a tiff with my anesthetist. They would say 155 के आगे नहीं करना. क्यों नहीं करना? Because it is very difficult to bring down the sodium level. Okay, it takes then you have a second test available, and now the literature says 160 is the cutoff. So with lot of persuasion, I brought up the level to 160. टेम्परेचर मैनेजमेंट में इश्यूज थे, लोग बोलते हैं 37 लाना है आप, अरे 37 लाने में आपको 12 घंटा लग जाएगा. First thing is do the first apnea ASAP as early as possible. So we started doing 35C. So you have to discuss, consult the senior people. There's so many people who are there, just one phone call away. And I think you should close the disease respectfully after retrieval, and don't forget to extubate, because so many times it so happens, the retrieval team aati hai, wo leke chali jati hai, and there is nobody to close the so-called the donor. It has happened in my hospital, wherein there is a tiff between who will close. Trust me, this is what I'm telling you. So these are 10 commandments for the donor maintenance. I think this is my last slide, and I'm done. Thank you so much. Thank you, Deepak, for excellent talk. Any questions? One question, sir. Sir. Okay, in NCD test, you say the choice of NCD test is carotid angiography. CT angiography. CT angiography. Sorry. If it is not possible, which is the next? TCD, transcranial Doppler. Bedside. But then you should be having an expertise. Problem is when we were residents, I don't know, Manish will, we used to do a lot of TCDs in our patients, subarachnoid hemorrhage patients. But nowadays it's falling out of repute. In my trauma center, the TCD machine is non-functional for last almost 4 to 5 years. People do not know how to operate a TCD machine. People do not know how to do a optic nerve sheath diameter in a brain dead patient or in a live patient. So I think you should do some test, kind of a test with which you are very comfortable. Having some TCD is operator dependent. What about the EEG? Sorry? EEG. The problem with the EEG is in ICU, there's so much of noise with those ventilators and everything. They're always, the chances of getting a perfect EEG are very, very far from remote. Yeah. So EEG is actually done in the countries wherein people are talking about whole brain death, not the brainstem death. In fact, ma'am, this is the girl I want to talk. She's Roli. She's the 6-year-old girl. I mean, she ignited the passion of organ donation, I would say, in me. And her story mimics the story of Nicholas Green from USA, the child who was shot dead in Italy. And both these children, they were shot dead in 2 different nations. And we have initiated a congress called Donate. Dr. Shroff is a regular visitor in Italy. And this year we'll do it in 29 September in Sicily. Anybody interested, just let me know. So EEG is not being done in our country because I don't think it gives you too much of information. Again, interpretation of the EEG, you need people out there. Thank you, Deepak. Now I invite Dr. Lalita Ranguram for stages of grief and film on family counseling. Yeah, go ahead. आपको अभी अपने साथ लंच के बाद माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय डॉक्टर और मैम एसीएस मैम सुब्रा सिंह जी अपने बीच होंगे. इस अभी जो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ललिता रघुराम मैम, कंट्री डायरेक्टर मोहन फाउंडेशन. प्लीज बिग क्लैपिंग फॉर मैम.
Thank you. Thank you, Dr. Shroff, and good afternoon, all of you. I think now we have come to the most important aspect of organ donation. You know, we are dealing with human beings. We are dealing with grieving families here. So when you're talking to the family, it requires a lot of sensibilities and sensitivities. So in a hospital, when a brain death is declared, the doctor talks to the family, talks to them about what brain death is. And then comes the next question of organ donation. So when you're talking about organ donation, the questions that arise is, who should we talk to? When should we talk to? Where should we talk to? Where should we talk? And how should we talk? Kaise baat kare? You know, these are the questions that commonly arise. A lot of training has happened. We have trained more than 3,500 transplant coordinators across the country, including, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, and Pakistan. Because this is the most important aspect. When we are all having coffee, happy times, we can talk a lot of things. But when one is in grief, the words that you choose, the words that you don't talk are very, very important. So hence this topic being important. So diseased multi-organ donation, Dr. Gupta and Dr. Agarwal spoke. We spoke about early identification and brain death certification. We also spoke about the importance of maintaining the potential brain organ donor, because it is not just removing an organ from a brain dead donor, but it is going to be used for yet another living person. So we have to ensure that the organs are kept viable. And the most important thing is counseling the families. Because they are in grief, we have to talk about grieving families. And then coordination. So what is coordination? In our country, more than 70% of the organ donations have happened from road traffic accident victims. 70% of them are trauma victims, and most of them are below the age of 40 or 45. So young people have lost their lives to trauma. So, and all of these trauma victims become medico-legal cases. So when you are talking about medico-legal cases, when you're talking to the family about organ donation, the first thing that they will ask you is, what about post-mortem? Because it requires a lot of coordination. You have to talk to the police, you have to talk to the forensic department people. We can't do all this running around. Will you take care of all these things? Is the question that comes from the family. And that is why it is important that we talk about coordination. That is why the grief counselors also double up as transplant coordinators, because they coordinate with so many agencies when one donation happens. I always say that there are at least about 150 to 200 people working behind the scenes when one organ donation happens. So when you talk about a deceased donor, the most important step, of course, is declaring the brain death. This is where the intensivist neurologists and neurosurgeons play a very, very vital role. But unfortunately, what happens? This program has not yet taken off like the way it has happened in the Western world, because this first step is itself not taken. What is that first step? Declaring the brain death itself. So it's very important that we declare brain death and also ensure that we talk to the family, and then move on to coordinating with various agencies once we get the consent. So why should we actually talk about organ donation? Why should we actually talk to the families about organ donation? Since morning, we have been having everyone, right from Dr. Anil Kumar, Dr. Shroff, everyone talk about how many patients are actually waiting for a transplant. It could be a kidney, it could be a liver, it could be a lung, or it could be a heart. So it's important that we make this ask, because it is the fundamental right of every citizen to know about organ donation. When I go and talk to Rotary or Lions, or my colleagues talk, there will be at least one or two members from the audience who will say,
You know, my father passed away recently. He was on ventilator, but nobody asked. We didn't even know about it. So it's important that we ask about organ donation. And this is the most important premise also to talk. And legally, there is something called required request law. What is required request law? According to the Transplantation of Human Organs Act, every family has to be requested. According to law, it is required to request the family for organ donation. So it is so important. And this one step, if you do, after all, you may get a no. It's okay. But please keep asking. You may be surprised you will get a yes one day. And that's the reason we need to have this required request made to every family. Is it easy? It's not easy. It's the most challenging job in all of the entire chain of organ donation. It is very difficult, complex, challenging. Even now, I have counseled more than 200 families, but even now, if I have to go and counsel a family, I have butterflies in my tummy. It's so challenging. Every family is different. Every circumstance is different. So we have to be constantly prepared for surprises. And we have to be very tactful, very diplomatic in the way we handle this. And remember, people are suffering grief. So we have to be very, very sensible and sensitive to their needs. And then we also have to ensure that when we are talking and you get a yes from for organ donation, the gratification is immense. When I do a donation and then I go back after 24 hours of being awake, I can't sleep. That is the experience that all the transplant coordinators go through. They can't sleep because they feel so gratified that, you know, you have been a catalyst in giving a new lease of life to at least 8 or 9 people. That is the gratification that all of you have to experience. You will really like it. And if, you know, God, I tell the families that God is nowhere, God is in you. Your loved one is no more. Your Kumar or Lakshmi is no more. But your Kumar can continue to live on in 8 or 9 people. When I say that, you know, people like it because they would like to have their loved one continue to live on. And when these donor families actually go on to donate, you know, they remember this for the rest of their lives. Even 10 years down the line, the donor families come back to us and say, this is the best thing we did. So we don't need to, you know, feel bad that, you know, we should ask, oh, how do I ask? You are actually asking something that, you know, they probably are expecting but have forgotten in that hour of grief. Is there a standard formula for this? There is no standard formula for this. Like I said, you know, how do I start this conversation? Every family is unique. Grief is unique. People don't understand brain death. So it's important that they understand what brain death is in simple languages. Their religious beliefs may be different and their background and the relationship with the patient may be different. So everything is different for every family. So we have to be constantly prepared. So there are no tailor-made solutions to this. So how do we approach the family? So when do we approach? Ideally after the first brain death declaration. And there is something called decoupling. A lot of the doctors also don't know about decoupling. I'd like to take an example of University of Iowa. They did a study of, you know, patients who were declared brain dead, and in the same breath, the doctor spoke about organ donation. There, the consent rate for organ donation was only 38%. Vis-a-vis, in another setting, the doctors declared brain death. They allowed the families to grieve, gave them some time, and afterwards, a transplant coordinator came and talked to the family. There, the success rate was 72%. So you are decoupling the act of declaring brain death and the act of asking the families. So this is very, very important. In the same breath as you declare death, and if you're asking for organs, the families are likely to get suspicious also. So it's very important that we understand what decoupling is. And then let's move on to where.
Most of the government hospitals do not have a designated place. You do not have, the doctors themselves perhaps don't have their own rooms. So where are you going to counsel these families? Our transplant coordinators, have counsel families in the corridors. But ideally, if there is a private place, a doctor's room, outside the ICU, some private place where you are able to sit, face to face with the families and talk to the family, that will be ideal. So that, in a government setting may be difficult, but if there is a private space, it will be really good. And who should be talking? Ideally, the treating team and the transplant coordinator. So the treating team, like Dr. Gupta and his team, will talk about, brain death, and then introduce the transplant coordinator who will take the conversation forward. And then remember, the family can say yes or no. Don't always expect a yes from them. I have had several no's. So you have to understand that people are not the same. All our 5 fingers are not the same. How are you expecting everyone to say yes to organ donation? You may be working very hard for organ donation. You understand that there is a very high need for, more and more patients to receive an organ. They don't understand. They are grieving. They probably have lost the breadwinner of the family. So their priorities are entirely different. For us, it is noble cause, but for them, it may not be. But let that go on. It's okay if you receive a no from them. It always, remember, a no can become a yes also. But don't be so obsessed with receiving a yes. Just keep trying. And the communication here is key. The language that we use with the family is very, very important. Don't use high-flown medical jargons. Simple, understandable language is what they are looking at. Avoid too many medical terms. Kept on life support. Kept alive for organ donation. On one hand, we are talking about the person being no more. He is dead. And on the other hand, if you say, a machine pe hai, he's been kept alive for organ donation, how does it work? It doesn't. So the language that we use has to be very, very simple. He is on this machine. This machine is breathing for him or her. If you take off this machine, the heart also will stop beating. All the organs will stop functioning. This is only a temporary thing. The brain is dead. The brain death is irreversible. These are the things that you will have to drive home. They will have to understand. When I normally talk to the families, I also tell them about brain death and I ask them to repeat it for me, so that they have internalized this. I understand that they have properly understood what brain death is. And like I said, make them repeat it. If you are not communicating properly, what happens is they will not trust you. That will lead to distrust. Also, people can go to other hospitals for second opinions. So these are all things that you will have to be very mindful of. So when do we approach the families? This is very, very important. Normally, patients, if you have already discussed with the families that, when, on admission itself, that the chances of survival is very low, they probably will have some understanding that, they're not going to survive. But in some cases, very young people meet with an accident, there is an 18-year-old boy taken to the hospital, put on ventilator following a road traffic accident. The families are in great hope. So when you say that their loved one is brain dead, the first thing that comes up is, no, this is not happening. They are in continuous denial. So at that time, you should not talk about organ donation. Sometimes they are angry. When you enter into the hospital ER and you are not received properly or you are not taken care of and the doctor does not attend on the patient immediately, the families are likely to be angry. At that time, if you talk about organ donation, it's not going to go down well. Depression. Some people are so depressed, that they have lost their loved one. At that time also, you cannot talk about organ donation. We have to understand from the signs that we receive from the families as to which stage they are in.
Some people will say, give me the medical record, I want to go to another hospital. My brother-in-law is a neurosurgeon in US, I want to send him the medical record. That means they are still bargaining, they have not accepted brain death. Finally comes the stage of acceptance. Now what? What next? Abhi kya karna hai? These are the questions that they will ask you. That means they have come to terms with death. They have understood that the inevitable has happened. They have understood that, they are at a point of no return. So it is at this time that we will have to talk about organ donation. What families want to know is there is relief. What is the plan of care? From now on, how long will you take? If I say yes to organ donation, when will you give me the body? Tomorrow morning, I have to take the body to Guntur, or you have to take the body to Nimrana. So how long will it take? They will ask you all these questions. So you will have to do your math properly. You have to ensure that you have done your math properly and give them realistic estimates. Don't lie. Please don't lie. There is no need. If you tell them exactly how much time you will take, they will understand. They will also understand that you know the subject well, right? And they also want, once you have taken the consent, please don't vanish from the scene. Give them information periodically कि क्या हो रहा है. If it's a RTA case, medico-legal case, पुलिस को बुला रहे हैं, फोरेंसिक वालों को बुला रहे हैं, इसीलिए टाइम हो रहा है. अभी 12 बजे जो है रात को हम थिएटर को ले जाएंगे. ये सब बताने से जो है उनको महसूस होगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, right? Don't give them false hopes. The conversation, जैसे हमने आपको बताया था, आपको हर एक दिन मैं बता रहा था, तो ऐसे हो रहा है. You could start the conversation like that and reiterate that their loved one has died. Don't keep on saying coma, brain dead. Keep it very simple so that they are able to understand the language well. Avoid saying, this is the way God has meant it to be. I understand. We don't understand. Honestly, we really don't understand what they are going through. This is all for the better. And, time is the best healer. All these things, we don't know. If you don't want to say anything, I have done this with several families. I just hold their hand and just be silent. Just be there for them. That itself is a big, big healer. They really like it. You don't need to say it in so many words. Continue the relationship, even if the family have said no. I have had, in Hyderabad, we have done 3 donations. I'm from Hyderabad, so I'm giving you my own experience. We've done 3 donations where from the same family, they have said no earlier. Okay? 5-6 years ago, that family, they have said no. But afterwards, there has been a brain death in their family, and they themselves have called and said, Lalita ji, last time हमने जो है आप आए थे हमसे बात किए थे हम ना बोले थे, we regretted it a lot. We felt really bad. हम करना था, उस समय नहीं कर पाए. We didn't have the courage. We didn't muster the courage to do it. But now we want to do it. So they themselves will call us. So gracefully we have to accept that the no is also okay. But continue the relationship. Maintain good relationship with the family, because remember, we are not selling Pepsi or Cola here. You are dealing with the human beings with flesh and blood, and it is about organ donation, a concept that is completely new to them. Patient care begins at the emergency room. Remember, if you have taken good care of your patient at the emergency room, your likelihood of saying yes, for the family to say yes to organ donation is very high. Everyone in the hospital has to know about organ donation. Bed number 8, वो bed number 12 में क्या हो रहा है करके lift में बात नहीं करना चाहिए. Bed number, they could be bed number 12 for you, but for the family, it is their loved one. It is Mr. or Mrs. So don't ever talk as bed numbers. Hospital management has to be completely supportive of this program. The reason I'm saying this, right from the dean, medical director, medical superintendent, the nodal officer, everyone has to be cued into this program. Families will have different needs.
They will ask you for a free ambulance to be taken, the body to be taken home. From somewhere you can find, or make all these arrangements. They may want a room, because they may have been tired, going helter-skelter. Give them a room, they will like it. So these small little things, if the hospital management is cued in, all these things becomes very easy and they become pro-organ donation. Take baby steps. In the initial period, in 2001, when we started in Hyderabad, for the first 1 year, we did most of the IC bleeds only because they are not non-MLC cases. IC bleeds are easy. And if it's an IC bleed of 50 or 60 years old, it becomes easy for us to talk to the families also. Low-hanging fruits is what we have to look at. And for those hospitals that are not doing eye donations, start with eye donations. At least you will start counseling the families for eye donations. So all of these baby steps, if you take, then you can, deal with medico-legal cases and do more number of organ donations. This is my favorite slide. I always say, organ donation has these two railway tracks. You have to do public education. You have to do grief counseling in hospitals. When you don't go to the public and talk to, create awareness about organ donation, they will not know about organ donation. And when they come to hospital, they won't say yes to organ donation. And in the hospital, if you just counsel and not do awareness, they are not likely to say yes to donation. So these two things go hand in hand. So any transplant coordinator, any transplant team in the hospital have to be actively engaged in in public awareness and grief counseling. Right from January, you have Republic Day, February, Valentine's Day, March, you have International Women's Day, April, you have World Health Day, May you have Nurses Day, June you have something, July you have Organ Donation Day, August you have Independence Day, September you have World, Teachers Day. So many things are there. During all these times, you have to do events so that you remain in public's eye, and that way you can create awareness about organ donation continuously. This is the logo of Nike. Just do it. So, कैसे करना है, कैसे शुरू करना है, कभी करना है, कौन करना है, just do it. It will happen. If you have a team that is, cued in and is willing to declare brain death, and you have a trained transplant coordinator to counsel, all other things will fall in line. So just do it without thinking too much about it. So these are some of our donors. You can see we have done donations from 4 days old baby. 4 days old baby, we did, heart valves and corneas. 18-month-old babies, we have done kidneys and corneas. So we've done until 80 years old also. These are the real heroes. So I'm sure we have made a good beginning in Rajasthan, and with all of your help, the single-digit organ donation, diseased organ donations that are happening in Rajasthan will become 3 digits, not even 2 digits. With all of your help, with more 25 medical college hospitals, I'm sure this is a task that is definitely achievable and a cause which is really noble, and all of you will love it once you are in it. Thank you all so much. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Lalita Raghuram. I think what a wonderful deliberation of such a sensitive topic. Truly speaking, it is so important, the taking or care of and handling the family at the time of peak of grief. You probably consult so well. I'm sure it is going to make the journey of transplant much easier if you're handled very nicely. Thank you for your nice presentation. I'm sure it's a big learning for all of us sitting here. And thank you very much. Thank you. Thank you all so much. थैंक यू मैम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर सुधीर भंडारी सर, डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित सर और डॉक्टर आरसी गुप्ता सर
आप जो हमारे स्पीकर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करके हम सभी को लाभान्वित किया है, उनको एक एक मोमेंट आपके द्वारा दिया जाएगा। प्लीज सर। तो सबसे पहले आएंगे डॉक्टर दीपक गुप्ता सर, एम्स से न्यू दिल्ली से। तालियां। डॉक्टर मनीष अग्रवाल सर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, न्यूरोसर्जन। जया जयराम, मोहन फाउंडेशन से। ललिता रघुराम, कंट्री डायरेक्टर, मोहन फाउंडेशन। थैंक यू सर। अभी इसके बाद 20 मिनट का लंच रहेगा। एसीएस मैम और सभी नीचे हैं, आप सभी लोग लंच के लिए आमंत्रित हैं। अभी समय का ध्यान रखें। 20 मिनट का एसीएस मैडम से दिलाएंगे, एसीएस मैडम से दिलाएंगे। अभी आप लोग ध्यान रखें, मैम आपके साथ लंच करने के लिए आगे हैं पूरी टीम के साथ। लंच करने के बाद मैम कंटिन्यू यहीं पे अपने साथ रहेंगे। आप लोग 20 मिनट के अंदर लंच करके आ जाएं। यस वो रह गया दिला रह गया सर, रह गया।
तो ये दो है चीजें हैं। लॉ में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को भी मैंडेटरी किया है, रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट किया है। तो ये लॉ का जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल लॉ है, बहुत अच्छा लॉ है, जनरल पब्लिक को प्रोटेक्ट करने वाला लॉ है। तो लॉ के बारे में मैं इतना ही कहूंगा। विल मूव ऑन। मैं चाहता हूं कि जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू पीपल, यस गो ऑन, डोंट आस्क अबाउट लिविंग डोनेशन, दिस इज अबाउट कैडावर। जी जी, कौन से डिपार्टमेंट में? सर आगे आइए ना, आप पीछे क्यों बैठे हैं? आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, प्लीज आगे आइए। Nodal officer has been appointed for every medical college for the same purpose. Only he is going to deal with the organ transplant and related activities. So we will share the name and number of the nodal officer. वहीं पे काम कर रहे हैं आप? तो प्रिंसिपल कोई नहीं मिला तो प्रिंसिपल तो है, नोडल ऑफिसर का भी डिटेल शेयर करो। Yeah, very important stakeholder in this program. जी अर्जुन पूछते जाइए। अच्छा सर, मैं कह रहा था कि अगर वहाँ पे अगर टीम बन जाती है और अपन किसी को सर्टिफाई कर देते हैं तो अपने को ऑर्गन रिट्रीवल वहीं होगा कि यहाँ होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। उसी लिए आपको हम एनटीआरसी का स्टेटस देना चाहते हैं कि ऑर्गन रिट्रीवल वहीं हो, क्योंकि बॉडी जब शिफ्ट होती है तो जो फैमिलीज हैं, नहीं पैरामीटर्स ही नहीं, फैमिलीज को बहुत ट्रॉमा होता है। ऑर्गन डोनेशन के लिए हम जयपुर क्यों लेके आएंगे, फिर वापस ले जाएंगे बॉडी को बीकानेर? होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर का जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, इसीलिए बनाया है कि वहीं पर रिट्रीवल हो जाए। तो एक क्वेश्चन और सर, अगर अपन ने किसी को सर्टिफाई कर दिया कि ये ब्रेन डेड है, ठीक है, सर्टिफाई अपन ने अपनी तरफ से कर दिया कि और अपन पेशेंट के रिलेटिव को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये हमारी तरफ से फर्स्ट अपने टेस्ट के बाद में अपन उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि भी एक ब्रेन डेड लग रहा है हमें, और वो पेशेंट अपने रिलेटिव के साथ में डिस्कस करके ये कहे कि सर हमें अपने ऑर्गन डोनेशन नहीं करने हैं, तो अब हमें बॉडी हमें हैंड ओवर कर दें आप, तो इसमें क्या करना है सर? वेंटिलेटर से उसको हटा सकते हैं? एकदम हटा सकते हैं। ब्रेन डेथ इज डेथ। कोई माने कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप वेंटिलेटर को कंटिन्यू करिए, क्योंकि यू कांट वेंटिलेट अ डेड पर्सन। सो यू शुड विथड्रॉ द वेंटिलेशन। व्हाट यू शुड डू इज, जो सपोर्ट्स हैं, जो आइनोट्रोप्स हैं, उनको आप कम कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर विल कम डाउन एंड द पेशेंट विल क्रैश। विदाउट सपोर्ट कम किए हुए जी। पेशेंट दे सकते हैं बॉडी? देखिए बॉडी दीजिएगा तो सब तो कार्डियक अरेस्ट हो ही जाएगा। हाँ, ट्यूब निकाल के दीजिएगा। देखिए एक है ना ह्यूमन फैक्टर है इसमें, ये क्या है, कट एंड ड्राई नहीं है सब्जेक्ट। एक ह्यूमन फैक्टर ये होता है कि हम डिग्निटी के साथ करें जो भी काम करें। अगर मरीज के रिलेटिव्स बोलते हैं कि हम नहीं देना चाहते हैं अंगदान, ठीक है, 3, 4, 5 घंटे के बाद अगर आप उसको बॉडी देते हो, आफ्टर यू कट अवे ऑल योर सपोर्ट्स, you give him the body as you would give a dead person's body. I would do that as you. You can also do what you were saying. Ambo bag के साथ घर भेज दीजिए. That's very bad practice according to me. नहीं, वो रिलेटिव्स कहते हैं। मैं मानता हूँ बात, पर एक डिग्निटी के साथ काम करिएगा तो it is always better. If you have a good communication with the family, अगर आप फैमिली को समझा देते हैं, काउंसलिंग कर देते हैं, तो फैमिली विल एक्सेप्ट इट, दे विल अंडरस्टैंड। क्या ये सही है सर कि बीटिंग हार्ट के साथ में अपन उसका वैसोप्रेशर, लाइफ सपोर्ट अपन कम करें? बस यही बात आ जाती है ना डॉक्टर गुप्ता, यही बात आके अटक जाती है बार बार। बीटिंग हार्ट, ब्रेन डेड। No. As I told you, Professor A.K. Banerjee, Emeritus Professor of Neurosurgery, he always used to say cadaver with a beating heart. Okay? So basically, you have to, first of all, we means you, me, and these people sitting out here, the audience, they have to understand
Brain death is death of the person. That's it. Regarding what sir is telling is, see, health is a state subject. If you are in Kerala, if you are probably in Tamil Nadu, you can actually take off the ventilator, which is there in the law. But in Delhi and NCR, I cannot do it. It is not in the law. So what we do is, what Dr. Shroff is saying is, we decrease the FiO2 to 20%, keep the ventilator on, decrease the FiO2 to 20%, and all active resuscitation which you are doing, don't do that. And I would say it's more of a kind of a crime to the body to do a CPBR. I've seen it, it's being done till date 2024 of a brain dead person, circulatory arrest and CPBR. Please don't do that. Sorry. What we're going to do next is just to show you all, so you come from आप लोग अलग-अलग जगह से आए हैं, just to show you there are so many stakeholders involved in organ donation जो होता है एक organ donation. तो एक छोटी हम एक्टिविटी करेंगे. Again I need volunteers. जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं प्लीज. हमको 20-25 volunteers चाहिएंगे. प्लीज उठ खाना खा के आए हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगा. आगे आ जाइए. आपसे हम चालू करते हैं. प्लीज कम. मैडम 5 मिनट भी नहीं लगेगा. नोटो के डायरेक्टर साहब डॉक्टर अनिल जी से मैं आग्रह करूंगा वो आए, डॉक्टर सुनील श्रॉफ सर आए पैनल डिस्कस के लिए. साथ ही हमारे आप पैनल डिस्कस के लिए जो चीफ गेस्ट हमारे रहेंगे एसीएस में कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन सुधीर भंडारी जी, आप आए स्टेज पे सर पैनल डिस्कस के लिए. अब गेम कर लो इधर आइए. हाँ आइए. बुला लीजिए आप. आओ मैं बुलाता हूँ, बैठिए. आगे आगे वाले सर आगे इधर आ जाओ. हम खड़े रहेंगे. अब बोले डॉक्टर अनुराग धाकड़ एसएमएस मेडिकल कॉलेज आइए. नहीं और भी लोग आए पहले वो I think there is a small presentation from principal. आप कर रहे हैं ना? चालू करें? प्रेजेंटेशन था देखता हूँ good afternoon and our dignitaries on the dais, Honorable ACS Shubhra ma'am, our Commissioner sir and our VC sir. Why India needs organ donation? Lots of discussions have been taken place right from beginning of the conference. All the aspects has been highlighted regarding the how our donor has to be kept, what are the problems we are facing. But what is such huge campaign which started under the leadership of our ACS in Rajasthan. Earlier the scenario was there were many accidents, many road traffic accident deaths were there, but the organ donation program was not moving up. The reason, whenever
the problem is picked up by a leader, then a movement starts. And that is the reason why Rajasthan has got his place right now. So why the India needs organ donation? As we know, 3.17 lakh patients are waiting for kidney, liver, heart, lung, or pancreas and transplant in our country, and 55% out of those are kidneys. Organ shortage crisis in our country, like significant gap is existing. Whatever the deaths are occurring and whatever the organs from the deceased patients for organ donation. In the earlier lectures delivered by Dr. Deepak, it has been said and shown on the screen also that deceased donation after the deaths are much less in number as we consider with the living donations. So that is the area where we have to work a lot to fill the gap. As we see the data which is displayed on the screen regarding our SMS Medical College and our trauma center, you can see the decreasing trend in deceased patients regarding the organ donation. So what happened when in the 2015 the data was this, and later on we are seeing the decreasing trend. So very simple steps, very crucial steps we can say are necessary to identifying those patients. So identification is the most important thing, as well as the intention. When a person's intention is there, just I have to do this, definitely the different pathways are open up by the God and by the society also. So that is the reason, just like a mission, all the things are going. Whenever a patient, right from the accident site, everybody has to be teased or sensitized regarding this. Every victim of accident is basically, we have to serve him as a doctor, but we have to utilize his life after death for so many people. And for that, we have to awaken the people right from the accident site. Transportation has to be earliest. Whenever the institutional receiving of the trauma victim is there must be in the mind of the surgeons who are treating in the emergency room that this patient has to be dealt like this, no organ and the life has to be wasted. Whenever we see the CT scan and we see the tonsillar herniation is there, we know, oh, he's the brain dead. That doesn't mean the real duty starts when we see this. Now this is the time. The sacrifice of that patient. He is the emolument of our country that he can save 8 to 9 lives even after his death. That is the light thrown by our Prime Minister also. So brain death, now we come on the point, legal definition and criteria for brain death certification. Brain death is defined legally as the irreversible cessation of all function of entire brain, including the brain stem. But cardiopulmonary death is considered as the actual death in majority of the part of the society, as well as in the jurisdiction of law also. But the cause why this brain death is the organ donation highlighted by Dr. Shroff. That is the reason for criteria for the brain death certification. The most important thing, just like if we want to save a life of a patient, the God has given the simplest measure to you, like air, which is free of cost, your hands and your intention. You can give the basic life support to the patient and the life will be saved. The same is here for identification of the brain death patient. What is needed is most is your clinical examination, which can certify, which can determine that it is the potential donor, and I have to care right from when I'm receiving the patient in the ICU. And my every measure should be so sophisticated and handled with care that this person can give life for the 8 people. So confirmation, sometimes as highlighted by Dr. Deepak, when there is ambiguous state like child or facial trauma is there, you can't elicit those clinical reflexes with certainty. In that criteria, in that scenario, then you have to need this ancillary investigation. So why I am saying this, I will highlight it later on. Legal requirements and the documentation, compliance with the specific legal statutes or guidelines governing the brain death certification, documentation of clinical findings, including the examination result, diagnostic test, any relevant observation. Physician and healthcare providers' role is very much highlighted already, right from the
periphery the people are working, from the tertiary center in the SMS Medical College, everybody has to be able to diagnose the brainstem death and by very simple clinical reflexes and clinical examination. So we should take it in our practice so we are not missing anyone. As Dr. Shroff also already said, retrieval centers are given permission when there is not a huge setup for organ transplant. But those retrieval centers are basically very important to filling the gap between for the availability of the organs. Progress in the brain death certification overview of advancement in brain death diagnosis and certification process, increased awareness and understanding among the healthcare professional and public, obstacles to the brain death certification. It has been discussed in House, like Kerala and the Tamil Nadu and other states. The law is very clear regarding the brain death certification. But in certain states, still the uniformity in the law jurisdiction is not clear. That is the emotional contradiction occurs between the patient as well as the family members of the donors. In that scenario, the ICU stay is prolonged and the organs are not retrieved and the golden time is lost. That is the communication challenge because of the so many languages are in our country. In communication is that what A is saying to B and B is understanding exactly what the A is saying at the same vocabulary level as well as with the conscience or interpretation level. Comprehension must be at the same level, then the communication is completed. So that communication skill has to be developed and has to be learned for the various languages. Ethical dilemmas, it is very easy to say, sorry to say, but as we say, death, organ donation will give life to the other people. But the people who are grown up with certain ethical values, these are so incorporated up to the soul, so we can't convince them. So that communication challenge has to be done. So how we can conclude this talk? Obstacle has to be removed right from the identification, proper communication, and we have to integrate our trauma centers because 75% organ retrieval are from the road traffic accidents with the organ donation centers. Right from the periphery to the central, a communication and the line should be very straightforward without any obstacle. And our physician and the infrastructure as far as the nursing staff is concerned, because if we want to retrieve the organs, our nursing strength for the proper care and doctors' understanding regarding the subject has to be deepened. Thank you very much. पैनल डिस्कस के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित जी, डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर निमिष एन मेहता जी, लिवर ट्रांसप्लांट महात्मा गांधी, डॉक्टर आर.सी. गुप्ता जी, वी.डी. सिन्हा जी, स्वाति तोमर, डॉक्टर दिनेश भारती। मैं श्राफ साहब को आमंत्रित करूंगा आगे करने के लिए। सर, थैंक यू बुलपुरिया जी। बड़ा पैनल है, टाइम कम है। और सब्जेक्ट काफी बड़ा है एंड इट रिक्वायर्स, पर आई थिंक इट्स ए गुड स्टार्ट। सुबह से हम जो कर रहे हैं, एक उत्साह जरूर है लोगों में। और आई थिंक की है कि हम हमारे ऑर्गन डोनेशन रेट को जब बढ़ाना है तो हम किस तरह बढ़ाएं। जयपुर में 4-5 हॉस्पिटल्स हैं जहां पे अंगदान हो रहा है एंड उसकी मात्रा को हमको बढ़ाना है। जैसे एसएमएस है, तो आई थिंक एसएमएस से डॉक्टर पुरोहित हैं एंड मनीष जी हैं। एंड डॉक्टर पुरोहित, आई थिंक आपने कहा था कि आपने कितने आइडेंटिफाई किए थे ब्रेन डेथ, ये माइक और कितने माइक काम कर रहा है। एसएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम 2015 से स्टार्ट हुआ था। तब से अब तक 208 पेशेंट हमने आइडेंटिफाई करके ब्रेन डेड डिक्लेरेशन के लिए, उसमें से सक्सेसफुली 108 पेशेंट को हमने ब्रेन डेड डिक्लेयर किया। कंसेंट के अंदर से बात हो रही तो 29 कंसेंट हम कर पाए हैं और जिसमें से 28 पेशेंट के ऑर्गन रिट्राइव हुए। अराउंड 96 ऑर्गन हमने रिट्राइव किए हैं एसएमएस के अंदर।
और ट्रांसप्लांट 85 ट्रांसप्लांट एसएमएस में, बाकी ऑर्गन्स बाहर भेजे गए। तो इसमें हम अगर देखें तो अगर आप देखें एसएमएस में, क्या आप समझते हैं कि और भी ब्रेन डेथ्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं? सब उसमें है जो लेकिंग आ रही है कि डेफिनेटली एक तो अवेयरनेस पब्लिक की, और दूसरी अवेयरनेस अगर मैं बात करूं, इवन आवर फ्रेटर्निटीज जो है, बस सबसे बड़ी बात यही है, टेकिंग इंटरेस्ट और they are not bothered to explain the things to the relative. प्राइमरी फिजिशियन जो है, एक्चुअली हम बात करते हैं ग्रीन कॉरिडोर्स की, हमने काफी ग्रीन कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश किए रोड्स पे। अब टाइम आ गई है वो ग्रीन कॉरिडोर हमको अपने हॉस्पिटल में एस्टैब्लिश करने की। अगर हम वो प्रोसेस को स्मूदन कर देते हैं तो हम डेफिनेटली, और हम बार बार पब्लिक के बारे में बोलते हैं, आप देखते हैं कि 35 जो प्लेजेस में राजस्थान इज लीडिंग, कॉर्निया डोनेशन में राजस्थान इज लीडिंग, 7 लाख आई ब्लड डोनेशंस। You know, we are not, Rajasthan is not a big state, 70 million population है, राजस्थान में 7 या 8 करोड़ लोग हैं, तो your numbers are very good। and सुब्रा जी ने भी बताया कि आपके हेल्थ पैरामीटर्स कितने इंप्रूव हैं, ऑलमोस्ट ऑन द नेशनल लेवल। तो मैं सोचता हूं कि अब हमको ये सोचना चाहिए कि the problem is not in the public domain so much, the problem is in our own domain। unfortunately मैं भी खुद डॉक्टर हूं और मेरे को बोलने में ये बात शर्म आती है कि प्रॉब्लम कुछ हम में भी ज्यादा है। सबसे पहले प्रॉब्लम हमें अपने आप को समझना, और ये समझना बहुत जरूरी है। आप क्या इस बात से सहमत सर? 100%। हम ये बात 1997 से ये बात कर रहे हैं और उस समय हमारी कोई ये बात नहीं मानता था कि ये प्रॉब्लम हम में है कि हमको वो करना है, हमारे मरीज के लिए करना है। जैसे अभी सर बात उठ रही है और कपिल जो पूछ रहे थे जी, बिकॉज वी हैव टू से, डॉक्टर दीपक ने भी कहा कि ब्रेन डेथ इज अ डेथ। यस, वी डोंट से इट इज अ ब्रेन डेथ, वी हैव टू से दैट इट इज अ डेथ। सो इसी बात पे मैं अनिल जी को बोलूंगा, हमने अनिल जी को एक प्रपोजल दिया है, एक यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन ऑफ डेथ। जो मनीष जी ने जो यूडीडी का जो डेफिनेशन दिया है वो आपका अमेरिकन डेफिनेशन है ऑफ यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन ऑफ डेथ। हम अनिल जी से, हमने हमारे आर्टिकल्स में निकले हैं कि वी रिक्वायर इन इंडिया यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन ऑफ डेथ, क्योंकि वेंटिलेटर हम बंद नहीं करेंगे। यू नो, if you're not dead enough to, you can be dead enough to donate your organs, but not dead enough to switch off the ventilator. That's the situation in our country, and that is ethically very challenging. So Anil ji, I think it is time that we do this. मैम इसके लिए अटेम्प्ट किया गया था। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में तो कंसेंसस बन गया था कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है, बिकॉज दैट एक्ट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड उसमें आरजीआई जो ऑफिस है उसको चलाता है वो एक्ट, जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो उनका अमेंडमेंट हुआ था लास्ट, सो वी हैड गिवन ए प्रपोजल फ्रॉम द मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी साहब से अप्रूवल करा के, तो वो चला गया था। लेकिन somehow they when they consulted the law ministry did not agree. They said कि it nowhere mentions circulatory death also. Why do you want to just interpret it as that it is meaning only circulatory death? Because the definition, current definition which is there, that any time after the live birth has taken place, there is no sign of life after the any time after the live birth has taken place. So that is the way definition is there in the registration of birth and death act. So we wanted that it should include that whether by means of circulatory death or by means of neurological death as certified by brainstem death. So, but they said ki we cannot divide it like that. So perhaps it was dropped somewhere at the home ministry level or at the cabinet level, and it did not pass out. So either we have to move a separate law, but if we are clear in our mind as clinicians that somebody who is dead, brainstem dead, he is dead, and our clinician should be convinced, our neurologist should be convinced. So because when the heart stops, that time also you withdraw all the support. You will just remove all the support. You will not continue those support system after the heart stops. So once your 4 doctors have certified the person as dead, and again they have certified second time, and then you sign that certificate. So after that, there should be no problem in withdrawing the life support. So that should be withdrawn without hesitation. That hesitation should not be there, because already Supreme Court has given a judgment on 24 January that you can withdraw life support in a situation of futility of treatment.
when there is a 24 January 2023, this judgment has come that when there is a futility of care, a person, there is no point in giving the care to a person. The life support can be withdrawn. So even that situation is not even brain dead. So brain dead is dead. So yes. Relatives. Yes. So CDA, that's why I'm requesting Dr. Anil Kumar yeah, to just put a guideline in place. In fact, we will if I we will can try to issue a guideline from nodal level. Yeah, ma'am. That is in yeah, fact, that can be done. Actually. Meanwhile, while we are waiting for the government to understand and do this, Kerala government, we help them in making a good geo for withdrawal. And we can give you that geo and you can easily adopt it. And that should give some clarity to your doctors in Rajasthan for withdrawal. So that is, Kerala ka jo geo hai, it's a very well written geo. So we will send you the geo, please use that geo. Gujarat also has taken the geo. So एक तो जो uniform declaration of brain death है उसका you can resolve that situation. I want to ask Swati, Nimesh, एक second ना, Swati, eye donation has done well in Rajasthan. Your experience. What can we learn from eye donation for organ donation? बताइए. So when we started, as Bhavna would remember that in 2002, we had just collected 2 corneas in 1 year. And today, after 20 years, 22 years, we are collecting almost more than 2,500 corneas per year. And the transplant rate, we were actually focusing, I mean, it's different for the organ and eye, but we were focusing only on collection at that time. So that saw a steep rise in the corneal collection. But then we realized that in cornea, it depends, it's usually after death, and it depends that how much are transplanted. Yes. So that is when we realized that we have to target the hospitals and the ICUs, and especially the Chowki, which is there in the hospital, and create an awareness for all the MLC cases, because these are young deaths. Absolutely. And they are usable corneas, and the transplant rate has to go up. So we have a transplant conversion rate to about 70 to 75%, which is the national average is 54, and ours is about 75. One of the great beneficiaries of this program has been eye donation, because hospital corneal retrieval quality of corneas is much superior. And what we have done in Tamil Nadu, when we started the program, intensivists would ask, how do you ask for organs? We should ask for eyes first. If they say yes to eyes, graduate to organ donation. Very simple way of starting a conversation with a family. Nobody gets upset when you ask for eye donation. Eye donation is well accepted. Everybody knows Aishwarya Rai pledged her eyes. So to nudge the family a little bit, first ask for eye donation. Nothing unethical about it in that situation. And then you ask for organ donation. So these are simple methods of pushing the family forward. If there's a medical legal case, you can tell the family कि आपका postmortem होगा. When postmortem is there, if you wish to donate some organs, your wish. So there are simple techniques of speaking to the family about this difficult subject of organ donation. I just thought I'll just, use this to piggy ride, organ donation, using eye donation as an example. The other thing, which we want to do is medical colleges. जैसे हम discuss कर रहे हैं 35 medical colleges है. आपका one great thing in Rajasthan is your both the departments are together, so you can work together. So is it possible to do a SWOT study, just see what are the deficiencies and make some of these colleges NTRCs in Rajasthan, sir? Surely this is a welcoming suggestion, and already ma'am has directed to us to do the gap analysis, especially those colleges who have been started and all the 4 batches are there. So as of now, we are having 6 old medical colleges and 4 to 5 fully functional medical colleges, which are having all the batches. And they are now sufficiently old enough where we can start NTORC. So in a first phase, we will start already 3 जगह पे तो हो ही रहा है जी. 3 पुराने मेडिकल कॉलेजेस में तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी हो सकता है जी. और बाकी जो 5-6 मेडिकल कॉलेजेस है NTORC, हम इसको बहुत टाइम बाउंड मैनर में गैप एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है उसको भी ढूंढ के, और जो स्किल
इम्पार्ट करना है डॉक्टर्स को और फैकल्टीज को, वो करके कर देंगे एंटीआर। क्योंकि हम ऑर्गन रिट्रीवल के कोर्सेज भी चलाते हैं. We have courses just happening, in 2 weeks' time in Bombay, and then we have a national course also which happens in Ramaiah Medical College in Bangalore, where we have a wet cadaver lab. So there also people can get trained. So there are opportunities for training if you have, people who want to come into this program. There are many general surgeons also. Kidney transplant can be done by general surgeon according to the law. So there are many general surgeons also who would like to get into the program, and sometimes you may not have a specialist in that hospital, so you can even use general surgeons for retrieval. So आपकी विचार से रश्मि जी है, रश्मि has done lot of analysis. रश्मि, you are here. कितनी colleges आपकी you think कि NTRC हो सकती है? Medical colleges. वो तो है ही. उसके अलावा जो आप बोले ना 25 मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट में. जी. तो करीब 9-10 कॉलेजेस को आप एनटीआरसी बना सकते हैं. इसमें एक और सजेशन है कि जब भी डोनेशन होता है किसी भी कॉलेज, किसी भी जगह पे, तो वहां जो रिट्रीवल टीम आती है, कई बार रिट्रीवल टीम स्टेट के बाहर से भी आती है, लंग लेने के लिए, हार्ट लेने के लिए. तो उस हॉस्पिटल के जो सर्जन्स हैं, they should assist those surgeons, those who are coming to retrieve, and they should learn ki how they are doing on the spot. If they are doing practically at that time only, so learning on a cadaver, learning on an actual donor, and when you have the trained people coming for retrieval, so that time the hospital doctor should get involved as assistant surgeon and learn the technique. Thank you so much. I mean, it's very interesting. And so what I'm saying is, what will be that spark? अभी सब हमने अपनी तरफ से ना कमिटीज बना दिया, सब जगह नोडल ऑफिसर्स हो गए, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हो गए, उनकी ट्रेनिंग्स भी हो गई. But that spark which will sort of push the program forward. क्या होगा? What will be that? And what is it that we are missing in the panel that is here? That we are missing and how to get it? Very specific. First of all, we should in the state Rajasthan, the SMS Medical College, the biggest medical college in the our state. So first of all, we develop the coordination in the NGOs, private medical college, private hospitals, and medical college stakeholders. Second one, the strengthening to the medical college in the transplant department. It is not only for the donation, organ donation के लिए बहुत बोला जा रहा है, लेकिन ट्रांसप्लांट सेंटर्स राजस्थान में कितने हैं जो ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उनकी मेन पावर है, क्या उनको रिक्वायरमेंट्स है, तो उन डिपार्टमेंट्स की किसी जगह पे सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जब तक अपन आगे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ट्रांसप्लांट होता रहेगा तो डोनेशन भी होता रहेगा, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस आएगी. कोई पेशेंट आएगा कि झालावाड़ से आया है, वो अगर किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है या लिवर ट्रांसप्लांट करा के गया है, तो वहाँ की जो पब्लिक मतलब जो आसपास की पब्लिक है, विलेजेज है, जो भी टाउन्स है, उसको पता चलेगा कि ये पेशेंट वहाँ से मतलब ब्रेन डेड पेशेंट से ट्रांसप्लांट करा के आया है SMS से. ये मैसेज अपन पब्लिक में नहीं देंगे, क्योंकि ट्रांसप्लांट सेंटर्स है ही नहीं राजस्थान में पब्लिकली. अगर पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स है, अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे, तो ऑर्गन डोनेशन ये सब प्रोग्राम्स एकदम ठीक बोल रहे हैं आप, एकदम ठीक बोल रहे हैं. पर क्या है ना, हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं? मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि सर जो ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए. ये जो मेडिकल कॉलेज जैसे SMS है, उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह डेवलप किया जाए कि उसमें इंटेंसिविस्ट 100% ट्रांसप्लांट फिजिशियंस होना चाहिए, तो ग्रीफ काउंसलर्स होने चाहिए. दीज आर द लेकुना इन द यहाँ पे अनिल जी जो नोटो के डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप नया ट्रांसप्लांट सेंटर चालू करें तो 1.5 करोड़ रुपया आप सेंटर से दे सकते हैं. नहीं, 1.5 करोड़ का मैं प्रपोजल बना के अनिल सर को दे दूंगा. उस प्रपोजल में 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ की बात नहीं है सर. नहीं, मैं ऑन गोइंग ट्रांसप्लांट स्टार्ट करने के लिए कुछ
रिसोर्सेस अवेलेबल है। हाँ, रिसोर्सेज अवेलेबल है सर। ऑन गोइंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम होने के लिए ऑन गोइंग उसको मतलब मिलता रहना चाहिए ट्रांसप्लांट सेंटर्स को कि उसकी क्या क्या कमियां हैं उस ट्रांसप्लांट सेंटर्स के लिए। उसके अप टू मार्क आईसीयू है कि नहीं है, अप टू मार्क आईसीयू है कि नहीं है, पब्लिक सेक्टर में वो कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है डिपार्टमेंट्स के अंदर। मैं आपकी बात एकदम मानता हूं और इसमें एनटीआरसी का कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है कि आप 3-4 डोनेशन करने के बाद आप ट्रांसप्लांट करने लगेंगे, क्योंकि आपको एक ना जो पूछती है मैडम स्पार्क, where is the spark missing? Spark The kidney spark transplant is our motivation Sir, of doctors motivation- to start doing things. सर मैं बताता हूँ आपको, किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट लिविंग भी हो रहा है, ब्रेन डेड पेशेंट्स का भी हो रहा है, उस पर वो स्पार्क नहीं ला सकता। स्पार्क ला सकता है लिवर ट्रांसप्लांट जो लिविंग भी हो रहा है। हार्ट और भी ला सकता है हाँ नहीं, हार्ट स्पार्क ला सकता है पर वो अपने ब्रेन डेड पेशेंट पे डिपेंड्स है। लिवर ट्रांसप्लांट सर मैं एक बात बोलूं, हमको इस समय डोनर्स अगर हम बढ़ाते हैं तो आपका लिवर भी बढ़ जाएगा, सब चीज बढ़ जाएगा। आप लिविंग डोनेशन तो बढ़ा ही है हमारे देश में। आप अनिल जी के फिगर्स देखेंगे तो लिविंग डोनेशन में तो हम दुनिया भर सबसे आगे हैं। सर अभी पब्लिक सेक्टर में इन इंडिया कितने सेंटर्स है जो लिविंग डोनर और वो कर रहे हैं? सर देखिए ये डिस्कशन अलग डिस्कशन है। यस मैडम जो स्पार्क की बात कर रही हैं, फैसिलिटीज तो मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है, तभी तो लिविंग डोनेशन हो पा रहा है, लिविंग ट्रांसप्लांट हो पा रहा है। प्रॉब्लम है स्पार्क की अवेयरनेस इज द प्रॉब्लम, एंड अवेयरनेस शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल चिल्ड्रन to the college children, and then we should go to the public with mass media, and every time any opportunity we get for the organ donation, the program seminars, ये तो हम मान चुके हैं ये बात तो हम एकदम मान चुके हैं 100%। अवेयरनेस, अगर आपने ललिता जी का भी भाषण सुना होगा तो वो भी यही बोल रही है, अवेयरनेस तो चलेगा ही, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? So I would suggest one thing. Being a corneal surgeon, it's very simple actually to do a corneal transplant. But I have been very passionately driven right from day one when in Rajasthan only SMS was doing transplants and I was the only one in the private sector to start. True. But I was passionately driven. I had jumped all the odds. So I think it's basically surgeon dependent. Absolutely. It is totally surgeon dependent. Initially. If I am a renal transplant surgeon, I would do it. In spite of the odds, and if we have a team like this, if somebody to push the transplant program, which was not there 20 years back, this time so it's almost very Absolutely. And you have such, aligned, now at the moment you also have administration with you. That's more important because otherwise administration always looks at something else because transplant is not a priority. Infant mortality is a priority. Transplant is low priority, but today you have people aligned. So this is the best time for you to get started. So when you want to, thank you. When you want to educate, it is not only the awareness which is required in the common people or the public, but the awareness is required in our expert and the ICU specialist as well. Because there was a good question which he raised. And that is what I was trying to point out at some point, that initially the brain dead declaration was used for organ donation, but later on it was de-linked. So when you do a brain dead declaration, it is not linked for organ donation. Absolutely. Previously, it was for organ donation. So somebody had raised a very relevant question that once I declare brain dead, do I need to ask for organ? No, not required. Not required. Once you have declared brain dead, it is brain dead. Organ donation is a separate thing. And that is where I feel that if we educate our own colleagues, our own fraternity, that is more important than going into the public. So as Lalita ji has already pointed out, these are two parallel tracks. We need to work on both these tracks, educating the common man and educating our own fraternity as well. A second point is that when we always ask whether there is trained personnel available or not, there are significant number of trained personnel. You have shown in your slides that 90% of the transplant work is done in private, and there are umpteen number of specialists who are actually willing. They are not working for money. They are willing to help the government sector. So a public-private partnership or a hand-holding is what is going to push the transplant program eventually. That's what I think. Like we had Dr. Johari from Gangaram Hospital only. He is a kidney transplant surgeon and he has done around 5,000 kidney transplants. So in the country, I think one of the highest ones. So he supported Dr. RML Hospital, New Delhi, which is a central government hospital. And he mentored the surgeon over there for around 24 to 25 transplants initially.
and without any charge to the government, and after that the program has picked up. So that way also, like as Dr. Nimesh has already said, that such kind of surgeons, motivated people are available in the private sector also, who can help in supporting the government, but push also has to come from the government institution itself, because SMS, I think, already has the capability to do kidney, liver, was doing heart also earlier, I think. And so you already have Capacity. trained capacity to do the transplantation. Only you have to just re-energize it. Absolutely. And regarding the public awareness, already the pledge in data indicates that there is a lot of public awareness. So already your people of the Rajasthan, they are quite motivated to donate. So we should not just look that there is no public awareness. People are motivated. Shubhra ji, please, madam boliye. Ma'am, first of all, we Sir, सबको sir, time बहुत Spain, कम है. sir, just If you a don't minute, mind, just a I minute. don't want to cut you short. Just But a yes, minute. keep it very short. Sir, please. Spain model. Yeah. In the Spain is on is different model. हाँ. It's on presumed consent. Let's not talk about it, please. Yes, sir. But that's not the consent we follow here. नहीं, sir, in the periphery, our doctors, we trained the doctors, yeah, stakeholder. They identified the eligible, the potential donor. The potential donor can be transferred to the retrieval center, which become the eligible donor. Or eligible donor become the in the transplant retrieval center. Let's keep to the point. What is the spark? She asked, where is the spark? What is missing? Please try and look at that. Manish wants to say something one by one. One, don't take too long because we don't have time. Ek minute khali. Then I want Sudhir ji to please comment on this as well. We want to see where can we get this spark? How can we get this program going in Rajasthan? Where is the deficiency? Public mein deficiency nahi hai. We already established that. So what do we do with our doctors? What kind of incentives do we give them to get going in this program? Just like Lata showed that so many people raising hands. Okay, Manish, go on. Sir, the only spark which was missing is now sitting right here. I've been associated with the program since 2015, and there are stories about it, enumerated the whole program to n number of officers. But now we have Madam who is there at the helm of the affair, and she's the spark for the program. Sir, doctors ke andar kuch bhi nahi hai. There is a big inertia. Infrastructure की कमी नहीं है, एटलीस्ट राजस्थान में नहीं है सर, लेकिन उसकी ऑडिटिंग हो, उस डॉक्टर को डर लगे आईसीयू वाले को कि मैंने इस महीने के अंदर कितनी ब्रेन डेथ आइडेंटिफाई करी, कितने जीसीएस लेस देन 7 को मैंने आइडेंटिफाई करा। सुधीर जी से ये बात पूछूंगा, एक मिनट सुधीर जी, as an administrator can you do this? एक मिनट सुधीर जी, as an administrator can you do what Manish is asking you to do? मैम ने जो क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले सर दो चीजें हैं, एक आपको ट्रांसप्लांट के लिए करना है, दूसरा आपको रिट्राइवल के लिए करना है। मैम रिट्राइवल के लिए आप कंसेंट लीजिए, जैसे सर ने कहा जनरल सर्जन के लिए सबसे पहले हमें जहाँ रिट्राइव हो रहा है, जहाँ ट्रांसप्लांट हो रहा है, वहां पे जो भी डॉक्टर इंटरेस्टेड है, अपनी इच्छा से आना चाहते हैं, उनके नाम दिए जाएं, उनको पहले रिट्राइवल की ट्रेनिंग दी जाए, प्लस में ब्रेन डेड कैसे डिक्लेयर किया है वो ट्रेनिंग दी जाए, और जो ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, जैसे मान लो रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो वहां पे उनको 15 दिन की, महीने की, 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो खुले। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मेरे दिमाग में आ रही थी कि भाई जो जिन लोगों को अपन ने प्लेयर ले लिया है, जिन लोगों का, उनका डाटा आधार से जोड़ दिया जाए। 108 नंबर वालों को, 108 जो एम्बुलेंस है, वहां पे कुछ ऐसे स्टाफ हो जो प्री हॉस्पिटल केयर ढंग से दे पाए। सबसे ज्यादा जो है प्री हॉस्पिटल से लेके हॉस्पिटल तक पहुंचने के अंदर ब्रेन डेड में लेकुना है। मेरे से शायद नोटो सेक्रेटरी इस बात से वो सहमत होंगे। मैंने बताया था अपने प्रेजेंटेशन में। तो ये चीजें हैं, आप पूछिए, हम लोग तैयार हैं, ऐसा नहीं है सर, डर भय की आवश्यकता नहीं है। जो इंटरेस्टेड है वो जाएंगे, हम लोग करेंगे। और यहीं से मैम जब एक बार टीम तैयार हो जाएगी ना, रिट्राइवल टीम मान लो चूरू में तैयार हो गई, तो वो सीकर भी जा सकती है। घंटा 2 घंटा लगता है रिट्राइवल टीम को जाने के लिए। और जो ब्रेन डेड डिक्लेयर वाली टीम है, वो तो 25 के 25 कॉलेज में ट्रेन करा दो ना, 15-15 दिन का। हम लोग ट्रेंड हो गए, 1 को करेंगे, 2 को करेंगे, 1 में गलती होगी, 2 में गलती होगी, धीरे धीरे मैम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सब हो जाएगा। जो डॉक्टर्स का इनर्शिया है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सुधीर जी, थैंक यू मैम। हम ऑडिट कर सकते हैं क्या जो बोल रहे हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? आपका क्या विचार है? I'll say in that context, sir, that the proactive approach of doctors will be the very fruitful. I give an example indirectly. Suppose we have 30 to 35 deaths in SMS.
I would think a person, young person who died of acute cerebral hemorrhage is also a potential donor. Absolutely. So Not very what road I feel traffic. is, sir, that we need to educate ourselves. When I say ourselves, mean our own fraternity, our residents, senior residents, probably intense orientation program across the cadre of the medical professionals with the intention that we have to build up this number. Probably that would work, and indirectly, yes, it could be later fall in category of auditing. I think, Initially, it's the absolutely. orientation. I think, you cannot push any doctor. No, no, sir. It's not going to be initially possible. making them You realize. can only nudge them a little bit. So, making them realize yeah. the importance. Look at this: 30 to 35 deaths per day in Ji, SMS. I know it, ji. sir. I'm sure 1 or 2 deaths are acute cerebral hemorrhage, AV malformation patients. And they are easy to convert, sir. But you get more time. Sir, I've been working in the medicine department also. Yes, sir. That why to concentrate on trauma, but Yes. pick up Those- suppose you pick up absolutely. patients in like. I So I agree. think I agree. Spark could begin with the immense support at the top, as the ma'am is initiating, and probably we need to mobilize ourselves. When I say ourselves, my own fraternity, my resident, my juniors, so that we look for a aim to yield better. So, one thing is coming out very clearly. We have to look within, not outside, So as a doctors. One thing, Yes. Dr. Shroff. Yeah. I hope it's not taken adversely, but is there a lack of confidence among the doctors? They feel No, madam, we are very would like skillful. to be trained better. We would like to be mentored on this. Some Shall of we have them, an yes. SOP? Shall we have an SOP? Like you talked of the SWOT analysis, which is well taken. So we will go on that. The second could be probably an SOP. The third could be a mentoring mechanism. Fourth, as has been well said, we take a pool of officers who volunteer for this. Absolutely. And then we place them in a critical position. Would that be a good idea? Initially, madam, this is a very. How do you give the nudge? I'll tell you. How do you give the Initially, it has to come from within. In this room, I can tell you there are 10 champions there who are going to make it happen. It should come from within. That passion has to be in your belly. It cannot be, infused into you. And initially, it has to be person-driven, and then it becomes process-driven. And I'm sure, you'll find many youngsters who want to champion their cause. And, so many people have raised hands. They want to give ideas of how we can take this program forward. So the spark will come from individuals who are very passionate about this program. And when you empower these medical colleges with an NTRC status, not only all the departments become very efficient, radiology, laboratory, ICU, everybody will go up. And within that, you'll find, one young man or young woman or whoever will come up with very passionate driving this program forward. And we have seen this in multiple places. Vadodara has done about 30 donations in last 2 years. There's one ophthalmologist driving it. She's not even a transplant person. She alone is driving donations. All in NTRCs, by the way, in Gujarat. A plastic surgery resident driving the program in BJ Medical College. 60 donations in 6 months. Unbelievable. So there are these passionate individuals there everywhere who want to do something for the society. And this spark which you're talking about initially will come from us. Regarding brainstem death, because the doctors are not used to certifying brainstem death because they have not been doing it. So initially, training, if it imparted in a structured way, it can be supported by NOTO also, or it can be done by SOTO also here, with the support of the experts. So it will instill confidence in the doctors who are managing the patients in the ICU because they are not used to certifying. Even the neurologist will say, I have never certified. So how I'm going to do it? So that way, so that initial training in brainstem death certification may be more useful. And somewhere I found even in All India Institute Delhi that they don't, like somebody who is a HOD of the department, he is not trained in transplant. So he will not allow others to be recruited. So if we have a dedicated unit for a transplant, like suppose there are 6 surgeons, 6 units in a department, one of them can have the dedicated faculty who is trained in transplant. So by rotation, the residents are also trained in that unit by posting on rotation basis, and that unit is, dedicated for transplant. So that sometimes it happens the head of the department is not doing transplant, or he is not into transplant field in that particular department, and he has an ego issue that if this person comes,
so he will, outshine me. So that kind of some complexes we have observed. So those complexes, if we have dedicated transplant unit where the trained faculty is only recruited in those units for transplant, so that will also push it. So, thank you. Well, another 25-7 minutes. I know you're also running late, and many of them want. Vinay, you very quickly, क्या बोल रहे हैं आप? जी. अलग शो. एकदम. जी. छोटे कमेंट्स थोड़े छोटे रखिएगा so that we can move on. मैं एसएमएस में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हूँ और सर मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का एसएमएस में मैंने बहुत सारे मरीजों की काउंसलिंग की ब्रेन डेड की. सबसे बड़ा इश्यू जो आता है कम से कम 25 से 30 लोगों की मैं काउंसलिंग कर चुका हूँ जी. केसेज भी हुए. सबसे बड़ा इश्यू ये आता है सर कि जो फैमिली ऑर्गन डोनेशन करती है उसको कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी. वो हमसे पूछते हैं, वो अपने फील्ड में जाकर के कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या मदद कर सकती है. उन लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है सर. आउट ऑफ स्टेट वाले आते हैं, वो पूछते हैं कि हम बाहर से, जब हरियाणा से एक बार हम चंडीगढ़ तक काउंसलिंग कराने गए थे, उसमें कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है. तो इसमें एक ऐसी पॉलिसी हो, जब हम काउंसलिंग करते हैं मैम तो हमसे फैमिली पूछती है कि भाई हमें, हमारे परिवार को क्या फायदा मिलेगा, या कुछ मदद हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ट्रीटमेंट के मामले में या कुछ और, तो समाज कल्याण विभाग से या फूड कॉर्पोरेशन की तरफ से, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं. Government Israel, in Israel, if you are an organ donor, you'll get a priority as a family if you are on the waiting list. If you carry a donor card, you get a priority. I think government of India also, if there is a, हमारे इसमें रजिस्ट्री में भी है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाता है. सर एक रिक्वेस्ट है, हम लोग दिन रात काम करते हैं, सर्जन और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर. हम उदयपुर जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, बीकानेर जाते हैं. कभी 5 साल में गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी हम लोगों को कोई इंसेंटिव दिया हो? किस तरह लोग दूर भागते हैं सर. Sure. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है आपने कि there has to be a fixed monetary requirement if they are doing extra work. हम 3-3 दिन तक घर नहीं जाते हैं, वो लोग हमसे कहते हैं आप क्यों काम करते हो, आपको कोई बेनिफिट है इसमें? तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए इसमें सर. कुछ नहीं कर रहा है. अब करेंगे. अब जी. बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने. I mean, it's very important. Financial incentive and organ donation, certain places required. Why should a neurosurgeon come in the middle of night and declare brain death and spend his own money? So if Maharashtra gives some fees, Maharashtra gives 5,000 rupees to a person, coordinators and everybody. They've got a fixed rate. आप वो follow कर लीजिए, straightforward model. You're just duplicating. You're just copy pasting a template. It is already existing, so there is no controversy. Dr. Anil Kumar, what do you think? Actually, in Maharashtra, basically, that is they collect money from the recipient hospital and they distribute it to the staff of the donor hospital. So that model was approved by government of Maharashtra. As long as it's transparent, as long as everybody knows, you're fine. Basically not a government organization, but a sort of a NGO status organization. But they are doing it. And they are doing it in a transparent way. They collect the money because when they allocate the organ, they collect money from the recipient hospital for every organ which GOs are ready. So they are doing get it. the GOs. Sir, एक मिनट. एक बस another just 2 minutes. Sir, last में. Yes. कुलवंत जी. बस क्लोज कर रहा हूँ सर. हाँ बोलो. सर मैडम जैसे आप बात कर रहे हैं कि स्पार्क कैसे आएगा ना इस प्रोग्राम के, मैडम देखिए क्या, जब तक लोकल एनजीओस को सपोर्ट किया जाएगा ना तब तक ये संभव नहीं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और बाकी सब स्टाफ लोग जितने भी सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक फील्ड में आके जानकारी नहीं जाएगी ना तब तक ये संभव नहीं है. तो एक तो एनजीओस को थोड़ा सपोर्ट किया जाए. दूसरा क्या है, हमारे यहाँ मैं पिछले करीब 13 साल से आई डोनेशन की फील्ड में काम कर रहा हूँ और अब तक Kulwant is doing excellent work in eye donation in Kota and Shine India, right? जी हाँ. And every day I get a newsletter from him Hindi में. Amazing guy, single man team I think, but amazing guy. ऐसा पैशन चाहिए मैडम. आप स्पार्क बोल रहे हो ना, ऐसे स्पार्क चाहिए. And ऐसे स्पार्क है राजस्थान में. आपको खाली बढ़ावा देना है उन स्पार्क को. एक यहाँ पर भी खड़ी है मैडम. ये भी बहुत बड़ी स्पार्क है. Already all your GOs are ready. तो मैडम 2016 के अंदर ब्रेन डेड कमेटी बनी मैडम राजस्थान में. जयपुर के बाद सबसे पहले कमेटी कोटा में बनी थी. Everything is ready. Yes. And most of the stuff is available to you on public domain. 10 साल पहले नहीं था.
आज सब चीज अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, जो भी हेल्प चाहिए, एंड प्लीज यूज दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. बिलीव मी, मेनी डॉक्टर्स लाइक निमेश आर देयर. Excuse. Yes. I have been supporting NGO, but I don't know आपकी doctor fraternity. I don't know why insecurity थोड़ी हो जाती है. I think somewhere they get insecure, but remember, blood donation, eye donation, all these programs in this country have come so far because of the support from NGOs. Otherwise, these programs wouldn't come so far. So use them. You said Kulwant Bora, use those NGOs to your advantage. Awareness ho, counseling ho, training maybe. You know, we have such excellent counseling courses online available. People are not only taking from India, they're taking from all over the world. क्योंकि हमारी कॉस्ट ही इतनी कम है, 300-400 रुपये में हम, you know, 2 दिन का काउंसलिंग कोर्स देते हैं ऑनलाइन, just to get some kind of, you know, commitment. So use it. There's so much of resources available. देखो कुलवंत, ऐसा है, ये अभियान अभी चालू हुआ है, काफी जोश से चालू हुआ है. नेक्स्ट ईयर आओगे ना, ये सब बातें बंद हो जाएगी. देखिए स्टॉप हो गया. Point noted, Kulwant. You made a very strong point. मैम, Very short, sir. मैम, ये हमारे जो ना टेम्पलेट अच्छे जो है दूसरे स्टेट्स में, तो सबसे मेन जो अच्छा जो कर रहे हैं स्टेट्स, उनमें सबसे पहले तो ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है, समथिंग विच इज टोटली मॉनिटरिंग. जैसे अपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से नेशनल ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है विच इज डन. एंड हमारे जैसे ये अथॉरिटी है जो एक बनाई जाए यहाँ पे, which जो यहाँ पे इसको totally dedicated way में, since you are doing this, so many multiple actions will be required, so joint some authority that also should have a monitoring mechanism, because whatever it is the doctors are doing is basically individual basis, some SOPs has to be drafted, so monitoring, uniformity and monitoring, and that hand holding has to be done through that authority. Secondly, we have got Chiranjeevi Yojana, but many are basically on organ donation, which can be take out from that, and some gaps are required. So some dedicated transplant, same thing should be done in that way. Where one scheme should be done for taking all the from without any. I think you know, एक discussion किया जाए task force के साथ, and I think we can take it forward. With this, I think we should end our panel discussion. Madam is also getting late, but in the end, I request you, thank you for all for coming here. One more. एक मिनट, क्योंकि time निकल रही है, क्योंकि everybody has to run. I want all of you to say that आप लोग सब अंगदान को support करते हैं. Yes, and we can do it. Yes, louder. Good, thank you. And we had done almost similar session in 22nd October to December 22, and the Rajsiko, all doctors in Delhi, Jaipur were present there and who are doing transplantation. So doctors agreed that there are some, like, you know, Dr. Sudhir Bandari also there, their keynote speaker that time. So, and I had thereafter submitted a concept paper and big thing, how to incentivize that. To that, so that it's incentivize the transplant coordinator, how to incentivize cadaver donations, and how to incentivize hospitals, those who are doing cadavers. Thank you. मैं अभी इनसे भी आग्रह करूंगा, हमारे गेस्ट के रूप में पधारे डॉक्टर साहब को भी मोमेंटो देके सम्मान करें. सर साथ ही डॉक्टर गुप्ता जी को भी मोमेंटो देंगे. 2 मिनट सर, 2 मिनट जल्दी. सर मोमेंटो, हाँ देखिए लेके आपने मैं अभी हमारे नोटों के डायरेक्टर साहब को भी मोमेंटो देके हम सम्मान करेंगे.
मैम एड्रेस करेंगे 2 मिनट एड्रेस मैम हाँ मैं मैम से आग्रह करूंगा मार्गदर्शन पर It's very moving for me to see how the idea has now taken roots. I'm deeply, deeply grateful to Dr. Sunil Shroff and Dr. Anil Kumar for your guidance and mentoring and support. I'm very grateful to all the doctors, the faculty, the NGOs, everybody who has now joined hands. And I really feel that probably we are now going to make a serious attempt to make this program come alive. So all the best to the program. And hopefully we will see this blossom in a near future. And we will have more of these workshops. We will keep troubling you off and on. So thank you again. And 3 cheers for the program. Hip, hip, hooray. मैं धर्मवीर जी से आग्रह करूंगा आप भी आए आपको भी हमारे एसएसएम के माध्यम से मोमेंटो करते हैं धर्मवीर जी भैया बता दे कौन मैं निमिष एन मेहता जी से आग्रह करूंगा आप महात्मा गांधी से लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं आप भी आए एक लेवल दो रुको रुको अरे रुको मैं देवेंद्र पुरोहित जी से आग्रह करूंगा आप भी आए उनका नाम उनका क्या वाले का मैं भारती जी से आग्रह करूंगा आप ही पहुंचे उनका नाम आरसी गुप्ता मैडम का नाम फिर मैडम का नाम क्या उनसे पहले भारती जी से मैं आग्रह करूंगा आप एसएमएस में मोमेंट डॉक्टर दिनेश भारती चुप रहो यार दूसरा नेक्स्ट का क्या नाम है नेक्स्ट का क्या नाम मैडम का क्या नाम मैडम को बता दो स्वाति तोमर मैं डॉक्टर आरसी गुप्ता साहब महात्मा गांधी से यहाँ पर मैं आग्रह करूंगा मैम से इनको भी अपने सम्मानित डॉक्टर स्वाति तोमर से मैं आग्रह करूंगा आप मैं धाकर साहब से आग्रह करूंगा नजको ला देते हैं और दो मैं भंडारी साहब से भी आग्रह करूंगा आपको भी मोमेंटो मैम के माध्यम से मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर साहब से भी मैं आग्रह करूंगा आपको भी मोमेंटो मैम के माध्यम से यस अभी टी ब्रेक है टी ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेशन अपना प्लान रहेगा टी ब्रेक 10 मिनट का रखा है अपने टी ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे
तुम सबको कर दो ना। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विनय तोमर, सीनियर प्रोफेसर एंड डायरेक्टर ऑफ रीनल साइंस, निम्स जयपुर। ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में उन्हें को बताएंगे सर। किडनी ट्रांसप्लांटेशन 10 साल में क्या हुआ अपने यहाँ? जी सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी सिटिंग इन द ऑडियंस एंड डिग्निटरीज। कौन सा मुझे बता दो आपका क्या सर इसमें डला हुआ? मैंने दिया ये दिया था। हाँ लगी हुई है। खोलो हाँ ये नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट इसलिए ये जैसे प्रेस करेंगे। For 5 years in life, transplantation, and 10 years for cadaveric transplantation. So these are the landmarks in renal transplantation in the Rajasthan. First renal transplant, live donor in Rajasthan was done by Dr. Tolani in private sector in 1985. Since then, he continued to do transplantation regularly till his death. He's no more now. In SMS Medical College, live donor kidney transplant program was started in 1996 with slow speed. It was accelerated in 2013 onwards. Another crucial landmark, that is cadaveric renal transplant program, to increase the pool of organs, because many patients used to die without getting organs because they didn't have any live relative donors. So this program was started in 2015 in SMS Medical College and Mahatma Gandhi, and the key role was of mohanfoundation in this program. With his effort, this program, with their efforts, the program could start. They also developed Arno's website in 2015 to add sharing data of recipient developed by Mohan Foundation. The next landmark was SOTO. SOTO is a state organization under agency of NATO, under Ministry of Health and Welfare, Government of India. This was initially given to the AIMS Jodhpur, but because SMS was doing cadaveric transplant, so it was shifted to the SMS in 2019 and it started functioning in October 2019. This actually keeps waiting list of the recipient and also coordinate the procurement of the organ and transplant, and also helpful in making awareness regarding consent of the attendants. ये आगे मूव नहीं कर रहा। ये नहीं कर रहा। अच्छा अब आगे ठीक है। So this is a slide showing number of renal transplant year-wise in the Rajasthan. I could not collect the figure before 19, so I'm showing 2019 onwards. There is a increased trend in the renal transplantation, number of transplantation in Rajasthan, except in 2020, which could be because of the COVID. तो इसे कहा जाएगा वन क्लिक। अब पीछे जाना पड़ेगा। पीछे ये आप एक मिनट बंद कर रहे हैं।
सिंगल होना चाहिए ना आगे सिकली को काम नहीं कर रहा आप यहीं खड़े रहना तो बता दो मुझे हो गया हैंग हो गया शायद नेक्स्ट अब इसके बाद इससे पहले क्या प्रॉब्लम सॉरी ये रहना खड़े ये दबाना है so in 2019 total live was number of live was 3033 and cadaveric 10 in last year I mean 2023 it has gone to approximately 800. So this slide is showing number of cadaveric renal transplant year-wise in the Rajasthan. Initially, the program was started in 2015. There were 16 kidney transplant done in that year, and followed by again 16 in next year, 2016. Then it went up to 18 per year in 2017. But in 2018, 19, and 20, and even up to 21, there was a low number. In 22, again, it went to the 14. So this is a mixed trend during last 10 years. The reason has to be found out, except in 2020 where COVID was there. So next we come to the centers. As you know that to increase the number of renal transplantation, because the patients recipients pool increases every year. So to maintain the renal transplantation, to increase the renal transplantation, we also need centers, number of centers where transplant can be done, number of experts and other infrastructures. So in 2014, there were only 8 transplant centers there. As I already told you that initially the transplant was started in private sector in Moni Lake, then by SMS hospital and very few private hospitals. In 2014, the number was 8, which increased 9, 10 every year and reaches to the 16 last year, 2030. Then number of organ retrieval center in Rajasthan year-wise. After starting the cadaveric organ transplant program in 2015, to increase the organ pool and to get organs from different places, number of organ retrieval center were licensed, which where no transplant was being done. Say Bikaner, Ajmer, even Udaipur and Jodhpur, medicalcollege initially was done. And in 2014, as there was no transplant, cadaveric transplant, there was no retrieval center. Then in 15, it was 8 centers, retrieval centers in the Rajasthan, which reached up to the 19 in 2023. So number of brain death declaration in different centers of the Rajasthan. The figure is from 2019. Number of brain death actually initially was not noted initial 2-3 years because even not being done because doctors and staff are not acquainted with the brain death and all that. But gradually the number increased. In 2019 in government sector, 13 brain deaths were declared and private 18. So total 21 brain deaths were declared. Similarly, in 2020, it was less, 12, because of COVID. COVID could be a reason. Then in 21, it was 31 total, includes 13 in the government sector and private sector 18. Then in 2023, the figure was 13 only. So it is declining actually. In government sector, 7 brain death declaration, and in private sector, 6.
I don't know what is the reason behind it, but the trend is like this. This is very important slide because consent is a key point for cadaveric organ transplantation, because you can identify brain death patient, you can optimize that patient, but if you don't get consent, that go waste. So consent, there are so many. It is a multifactorial phenomena. It has got so many. The society has got so many taboos, which have been already illuminated by Dr. Neil. In 2019, five out of 21, five consent were obtained. It was around 23.8% strike rate. Similarly, in 2020, it was 41 strike rate, and then 21 it came down to 9.67%, and 22 it was 46, and approximately, and 23 it's 38%. I mean, the percent is total number of the brain death, out of which how many has given the consent. That is the basic percentage. So in the Rajasthan, as I have already enumerated different slides, and you have come you have come to know that this is the trend for renal transplantation and organ donation, transplantation as a whole, live as well as cadaveric, and more people from other all states are also coming to the Rajasthan. People from abroad also coming to the Rajasthan for the renal transplantation. This is a good gesture. And number of patients in 2020, it was 2, which increased up to 29 in 2023. So this is all about the progress which happened in last 10 years in cadaveric and live organ donation. Thank you. Thank you, sir. अब मैं निवेदन करूंगा हमारे गेस्ट से कि डॉक्टर तोमर जी का मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे. मोमेंट इसके पश्चात डॉक्टर राम डागा, हेड गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट SMS, लीवर ट्रांसप्लांटेशन पर अपना प्रेजेंटेशन पेश करें. डॉक्टर राम डागा जी. Good evening, dignitaries and dear friends. My task today is to present progress of liver transplantation in Rajasthan. However, I had to work on a very short notice, so I will be covering more of SMS part. I was not able to collect data from different hospitals, but I will try to present the data of SMS hospital. So, not moving. Back के लिए फिर back ये क्या शूज इसमें क्या only one click. It's a big challenge for our country. Liver diseases are very common here, and more than 10 lakh patients are suffering from chronic liver disease, and more than 2 lakh patients require liver transplantation every year. Over less than 3,000 liver transplantations are being done all around our country, and SMS is the first common medical hospital in northern India with successful liver transplant program. It's a long journey. Till last decade of 20th century, elective liver resections were confined to very few centers. And in most medical college hospitals, liver resections were usually avoided
and were done in very few trauma patients presented with liver laceration or auto-amputated liver segments. Presence of liver tumor, whether primary or secondary, were considered death sentence. And it was not wrong, because liver resections at that time were associated with very high morbidity as well as mortality. There was very poor understanding of surgical anatomy of liver, with non-availability of good quality imaging facilities. There were different gadgets like CUSA, radio frequency jet, ablation techniques, water jets, etc. were not available at that time. And there was no concept of hypotensive anesthesia or gallbladder anesthesia. So liver dissection itself was so difficult, so liver transplant was a very distant dream at that time. Further, liver transplant is a very complex process. It's a multidisciplinary process. It requires a lot of people, surgeons, anesthetists, donor management groups, hepatologists, NGOs, radiologists, blood banks. So it's a complex process. They all need to work in a tandem like a spoke of a wheel. If any one of them is missing, NGO is missing, then things cannot happen. If even a ward attendant in our OT or ICUs are not available, they are not taking proper care, then things can go in a haywire. With this, our starting point of liver surgery was started in 2012. We performed first major right hepatectomy in state of Rajasthan for a liver cancer patients. And this patient had a large tumor right of lobe of liver. We did right hepatectomy for her. This was a specimen, and she survived for 9 years after the surgery. We did other surgeries as well. A lot of liver sections were done for cancer patients. We did liver sections for pediatric liver cancers as well. And our effort was appreciated by media as well at that time. But liver transplant still was a very distant dream. However, with intensive effort were started by Honorable Health Minister of at that time, Rajan Singh Rathod sir, mohanfoundation, Government of Rajasthan, and Association for Liver Transplant Program in state of Rajasthan. In year 2015 and 2016, our team was sent to Apollo Hospital, New Delhi, and ILBS New Delhi for liver transplantation training. And in Feb 2017, we had our first cadaveric liver transplantation at SBS Hospital with the help of ILBS team. Our patient had an uneventful recovery. He was discharged after some time, and this patient is still doing well. In fact, recently in 2022, we did a hernia surgery for this patient. After that, in 2021, we performed our first liver transplantation without ILBS support. Since then, since almost 2012, almost 188 liver dissections being performed at SMS Hospital, and 7 cadaveric liver transplantation being done at SMS Hospital Surgical Gastroenterology Department. So far, 21 cadaveric liver donation have been performed at SMS hospitals. After that, successful liver transplant program started at other hospitals in Jaipur. Mahatma Gandhi Hospital started a last program at SMS. Now they have performed probably more than 90 transplant with 20 cadaveric liver transplantation at Mahatma Gandhi Hospital. Liver transplantation program have been started at Santokh Badlabji Hospital as well as Manipal Hospital in Jaipur, and reasonable number of patients are being operated there. This is the patient which we did in 2021. It was done without any external support at the time. However, still, as far as cadaveric organ donation in Rajasthan is concerned, it's very small number is there. We can see very few donations so far. Still, we have not even reached the double-digit numbers, even after almost 10 years of program. So still, lot of work need to be done in this aspect. So liver transplantation is still in a evolution stage in Rajasthan, state of Rajasthan. We still need to do a lot of work for that. Liver surgery, though not confined to few special centers now, and with better anatomy, imaging availability, with the techniques, surgery can be done with better morbidity and less blood loss. Liver transplantation, post-transplantation management is a complex process involving different disciplines. Surgery is performed in a compromised patient with hemodynamic instability, coagulopathy, and often pulmonary renal impairments. So massive blood loss can occur, coagulation derangement can occur during the surgery. So it's a complex surgery, needs a lot of manpower, a lot of efforts during the surgery. It's a long duration surgery with a lot of reconstructions and complex dissections. Intensive post-operative care with stringent protocols is required, and immunosuppression and antibiotics are administered therapy in post-operative periods. Complication can occur after transplant surgeries, but they can be managed by teamwork. 5-year survival after liver transplant is more than 85%. So it's far more than most of the cancer surgeries. So it's a very rewarding surgery in a patient who is very debilitated,
marasmic patient with protein malnutrition, ascitic belly, they can have good quality of life after transplant with a reasonable survival. अपने आप आगे बढ़ गया है. चलो. चलिए. चलो. So it's a teamwork. We all need to work together for this program actually. Thank you. Thank you everyone. थैंक यू सर. अब मैं सभी गेस्ट से सभी से निवेदन करूंगा, सर का मोमेंटो देकर अभिनंदन करेंगे. सर के लिए तालियां. सर बहुत शॉर्ट नोटिस पर अच्छी तैयारी करके आए और अपने को लाभान्वित किया. अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अजीत बाना, कार्डियक सर्जन, EHCC हॉस्पिटल, जो हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे. डॉक्टर अजीत बाना. सर इधर से इधर लगा, यहाँ नहीं लगा. इनको दे दो, लगा दे. Yes, ma'am. Good evening, all. Dr. Bana is in a surgery and he couldn't make today to come here and present this presentation. So I'm just on behalf of him, I'm going to read out his presentation. I'm Dr. Vrajesh Shah. I'm a medical superintendent in Eternal Hospital and unit head of Eternal Hospital Sanganer. So this hospital, Dr. Bana is a chairman cardiac science in our hospital, and okay. So he wanted to present about the current status of heart and lung transplant in Rajasthan. So these are the approved centers for heart transplant in Rajasthan, which are the Mahatma Gandhi Hospital, Jaipur, Narayana Multispeciality Hospital, Eternal Hospital, Fortis Escort Hospital, Savai Mansingh, SMS, Gitanjali Medical College, Udaipur, and Manipal Hospital, Jaipur. And approved center for lung transplant in Rajasthan are SMS, Mahatma Gandhi, and Eternal Hospital. And approved centers for heart and lung both transplant are same, Savai Mansingh, Mahatma Gandhi, and Eternal Hospital. So I just wanted to emphasize on this slide that there are very few number of centers who are running the heart failure clinic right now in Rajasthan. So there are only 3 centers in Rajasthan who are running the heart failure clinic. So heart failure clinic is actually very important for developing the recipient or to identify the patients who are actually eligible for the heart transplant. So in Eternal Hospital, what we have done is we have a dedicated heart failure clinic where the cardiologist sits and he performs the different tests. So you all must be aware that NYHA classification category 3 and 4 basically they are the decompensated hearts, and we identify them in this category, and then we conduct a few certain tests like RFT, LFT, ECG, echo, and cardiopulmonary exercise tests like VO2 max and all. So if VO2 max comes less than 14, which is a candidate for the heart transplant. So this is how we can identify the patients who actually require heart transplants through heart failure clinic.
And we also understand that ECMO is also very important to bridge the gap between the for patient to gain to get the organ. So till now that patient needs support for the heart, so ECMO performs this kind of support, and we optimize the recipient through ECMO. So ECMO centers are very limited in Rajasthan. So these are only 9 centers in Rajasthan. So here I just wanted to emphasize, the comparison between the Rajasthan and Gujarat and Maharashtra. So all the three states, they started this transplantation program, almost simultaneously. So in first heart transplant happened in Rajasthan in 2015 by Mahatma Gandhi Hospital, and the second heart transplant in 2016 by us, which is Eternal Hospital. And in Gujarat, it was first done in 2016 at CIMS Hospital, Ahmedabad, and in Maharashtra, first heart transplant done in 2015 in Fortis Hospital, Mulund. But you can see in the next slide that where we are right now and where these states are. So in Rajasthan, we have done around 14 only in heart transplant till date. And in Gujarat has reached 85 number, and in Maharashtra is approximately 175. So what actually makes us lagging behind this number? So these are few observations by Dr. Bana. He wanted to share on this dais that why heart transplant could not pick up in Rajasthan. So lack of coordination between the stakeholders. By stakeholders means what are the stakeholders for heart transplant in Rajasthan? So it kind of they are the institute where this transplantation program happens, or kind of a regulatory body who manages this transplantation program in Rajasthan, or NGO which is helping in getting donor for this heart transplantation program. So we also face that there are lack of coordination between all these stakeholders. Sometimes what happens that if a patient dies, then media also covers this as a information, and it kind of a negative publicity happens that heart transplant is a very not a successful kind of a program. So this is also what happens. Third thing is the lack of interest of doctor in the field of heart failure. So this is basically a pointing towards the cardiologist who actually give or identify or assess the patient who require heart transplant. So they should understand that if they do not feed the surgeons, then definitely this program is not going to be successful. And the fourth information is misinformation to recipient about the expenses. So sometimes behind that, we also understand that heart transplant is a very costly affair. But government also in the last government also, they have put this heart transplant in Chiranjeevi program, and recipients, they can afford this thing. And even in our hospital also, we have made this transplant program very, very justifiable cost, that patient should not feel that this is a very costly affair. So what he wants to make understand things, that donor is not a main problem. It is the few steps which we have to which we have to bridge before going to the donor, before going for the donor. So so this is heart transplant is all about the teamwork involving every stakeholders organization rather than a marketing strategy. So from this 14 number in Rajasthan, we have done it. So where we got this donor for heart transplant? So SMS has provided 10 donors for the heart transplant. Mahatma Gandhi has provided 2. Artemis 1, and Sir Gangaram Hospital, New Delhi, provided 1 donor. So I just wanted to present you 2 testimonial of our hospital's transplant program which we have conducted. So he is our first patient is Shiv Kumar.
नहीं नहीं चालू नहीं चला आगे वीडियो नहीं ऑन हो रहा। पीछे ले सॉरी ये वाला हाँ ये हाइपरलिंक है सर इसका नहीं नहीं इसमें है वीडियो ऑलरेडी इसलिए मैंने बनाया हाँ हाइपरलिंक है इसमें चलो ठीक है कोई नहीं गूगल पर वैसे लग रही है वैसे लग रही है ना 50 करेगा नहीं वो अगला अलग से वीडियो नहीं है इसमें ही है वीडियो में अलग से वीडियो नहीं है नहीं तो इसमें रखा आ जाती Okay, before concluding, I just wanted to give a very straightforward message about the lung transplantation, that till now, no lung transplant done, one in Mahatma Gandhi. Okay. And no registered recipient as of now. Definitely lack of information, coordination, and non-interested doctors practicing respiratory medicine, basically. And the donor, again, the donor is a secondary issue. So we have to focus on these points first, then we can make this program successful. Thank you so much. थैंक यू सर। सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि सर का मोमेंटो से स्वागत करें। आपके लिए मोमेंटो डिलीवर आपके लिए मोमेंटो डिलीवर समझ देंगे आपको। हमारा ये निवेदन है आफ्टर हियरिंग द होल कॉन्वर्जेशन फॉर द डे कि सभी हॉस्पिटल्स को कुछ ना कुछ ग्रीवेंसेस है या जो मिसकम्युनिकेशंस है या कुछ बोलना चाह रहे हैं पर आज का प्लेटफॉर्म बहुत टाइट था तो बोल नहीं पाए। सो you could surely put it in writing and give one letter to Dholpuria Sahab, and you can give us a copy also, so that since आप लोग बहुत busy doctors रहते हैं, आप follow up नहीं कर पाते हैं, तो maybe we can follow up on your behalf. And soon we should have a stakeholder meeting where all stakeholders, as Dr. Shah just said, that there is a lack of coordination. So let's have one next month. Let's all have a stakeholder meeting and pick up the threads from there again. Thank you so much. Thank you for your time. चलिए, I think time बहुत हो गया है, so I will not take much time. आप लोगों का पेशेंस लेवल खत्म होता जा रहा है। मुझे सिर्फ एक ही चीज बतानी है। मैं मॉर्निंग से आई एम अ न्यू कमर टू जयपुर। मैंने अभी ज्वाइन किया HMR यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था 30 साल। बहुत अच्छा काम हो रहा है, लहर अच्छी चल रही है, बट नंबर्स आर वेरी सरप्राइजिंग। माय वाइफ इज एन एनेस्थेटिस्ट। एक छोटा सा फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में था, मतलब अभी भी है, वो तो वहां नहीं है, 100 बेडेड। पिछले 7-8 साल में 800 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट्स उन्होंने करवाए। सो देर इज नो रीजन वाई वी शुड एग्री टू दीज नंबर। अभी आप लोग जैसे थोड़े मोटिवेटेड हो रहे हैं तो वो स्पार्क आने वाली बात है, ये नंबर्स ऑटोमेटिकली जंप करेंगे। सो यही मुझे कहना है। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। डॉक्टर धौलपुरिया के लिए जरूर एक ताली बजा दीजिए। ये वन मैन आर्मी लगते हैं मेरे को। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर तोमर सर से कि आप है जो संजय गुप्ता सर को मोमेंटो प्रदान करें। जो 10 साल पहले वो स्पार्क थी, अभी वापस रिवाइव करनी है, और ढोलपुरिया साहब के आने से शायद वापस बैटरी चार्ज हो जाएगी। डॉक्टर तोमर सर भावना मैडम का भी मोमेंटो देकर स्वागत करें। इसके पश्चात डॉक्टर SN ढोलपुरिया सर
थैंक्स के लिए आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आप लोगों ने जितनी शालीनता के साथ कार्यशाला के अंदर पार्टिसिपेट किया, डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर हूँ, आप भी डॉक्टर हो, इतनी देर डॉक्टरों का बैठना भी अपने आप में एक कार्यशाला ही है। आपको सुनो, टीएडीए बहुत छोटी चीज होती है। आप तो पुण्य के काम में आए हो, टीएडीए की कहां बात करके उस सुबह की वर्कशॉप का स्टैंडर्ड ही डाउन कर दिया आपने। आप तो वैसे कहते तो ही हो जाते। अब मैं आपसे निवेदन करूं, आप मेरी बात सुनो। आप ये सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप अपनी एसीएस मैम की प्रेरणा से आयोजित की गई है। आपको ऐसा भावना जी ने भी बताया, कई हमारे पास ऐसे इश्यूज थे कि हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आने वाले टाइम में अपन जोन वाइज वर्कशॉप भी करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट वाली स्टेज में भी लेके जाएंगे, जोन वाइज करेंगे। तोमर साहब ने बताया, अभी मैम से बात करके हम प्लानिंग के साइड में जाएंगे, कोई पॉलिसी बने और पॉलिसी का राजस्थान में आउटपुट आए। पूरे राजस्थान की टीम का सवाल है। मैं राजस्थान के आप लोगों, राजस्थान का मैं हूँ। संजय जी हमारे, मैं पब्लिक हेल्थ में था, गुरु हुआ करते थे एनआईएचएम में, निफू के अंदर। राजस्थान के संजय जी जब सोच लेते हैं तो पीछे नहीं हटते, चाहे किसी भी तरह की एक्टिविटी हो। तो हम तो लीडिंग पोजीशन में, हमारी पूरी टीम जो यहाँ राजस्थान की है लीडिंग में आएगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाके आप लोग निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाने के संबंध में काम करेंगे। और आपका जो लोग आए, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो आप रजिस्ट्रेशन करवा के साइन करके जाएं, क्योंकि हम इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका कल या परसों के अंदर एक लिस्ट निकालेंगे जिसमें वो अटेंडेंस के रूप में आपके काम आएगी। उसके अंदर आपका रहेगा इस तारीख को इतनी बजे उपस्थित हुए और इतने वर्कशॉप में शाम को दोपहर प्रसाद कार्य मुक्त हुए। ऐसा नहीं हो कि आप लोग आए भी और आपके साइन नहीं हो रजिस्ट्रेशन के अंदर, और फिर जब हमारे यहाँ से ऑर्डर निकले तो उस अटेंडेंस के अंदर फिर आपको साहब हमें अटेंडेंस नहीं मिली, हमारे प्रिंसिपल साहब करें या हमारे इंचार्ज करें। तो आप प्लीज जो लोग आए हैं जिन्होंने साइन नहीं किए, पीछे अपने जस्ट इसके स्टेज के पीछे वाले रूम में साइन करके रजिस्ट्रेशन करा के फिर जाएं। आप लोगों का